give us a huge round of applause for Saumitra Sir. Thank you, girls. It was really a wonderful and kind of, initially boosting welcome provided by both young beauties, and they were so onto their toes, and they brought, they have given me such a welcome, which I feel I don't really even deserve. But I could see students till the very back of the second story of this auditorium, and I'm personally glad to be received by such a huge, students in such huge numbers. And it's been my sheer pleasure to have the opportunity to brief you on some of the concepts that form the very quick and marrow of this particular segment of learning, that is critical reasoning. I hope आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, and I would be keeping Hindi and English. I would be interspersing my entire communication, my entire dissemination with you in both these languages in order to bring about the maximum impact achievable in terms of explanation and corroboration of the concepts that lie underneath, that lie at the substratum of this very structure of reasoning, that is critical reasoning. I hope मेरी बात सबको समझ आ रही है. मुझे बार-बार पूछना पड़ेगा because being a new audience, I don't even recognize you by faces. It's probably the first time that I'm getting to hear you before me, and I'm just trying to fit in the faces for the first time. Probably if post CLAT, in any of the felicitation ceremonies, I'm invited and I get the opportunity to be here and to occupy the stage, and I get to see the same faces. So at least I'm able to build some resemblance, or there has to be some level of tallying or some level of relativity that I could build, and I can build a sense of rapport with all those students who are presently here as aspirants, and tomorrow they may land as achievers. That's what I expect of you in the shortest and most earnest note of terms. Okay, so ये जो हमारा आज का इवेंट है जिसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, this is CR मैराथन, and I hope सबको पता होगा कि हमारा जो CR है, इसका जो सबस्ट्रेटम है, इसका जो bedrock foundation है, that is based on, or that is technically comprises certain conceptual entities which, if properly joined like a children's manual of dots, that can help you go a long way in putting together an entire recipe of success. I hope आप सबको ये बात पता होगी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ बेसिक टेक्निक्स है, कुछ बेसिक थ्योरीज है, कुछ बेसिक थ्योरम्स है, वो अगर प्रॉपर्ली हमें समझा दिए जाएं, हमें सिखा दिए जाएं, हमें बता दिए जाएं, then we are certainly within an ace of success, and there is no denying the fact. तो अभी जो हमारे जो स्क्रीन है मेरे पीछे, ये जो प्रोजेक्टेड स्क्रीन है, मैंने कुछ पैसेजेस निकलवाए हैं. वो पैसेजेस के फॉर्म में ही आपके सामने आएंगे, एंड पैसेजेस के फॉर्म में ही क्वेश्चंस आते हैं. सीआर का जो कंपोजिशन है, दैट इज टेक्निकली वोवन अराउंड अ नॉर्मल पैसेज प्रोटोटाइप. द प्रोटोटाइप ऑफ अ सीआर क्वेश्चन इज अ पैसेज. तो पैसेज को हम कैसे टैकल करें? बेसिकली पैसेज होता क्या है हम सबको पता होना चाहिए. पैसेज एक 3 से 4 पैराग्राफ्स का लॉजिकली कंसिस्टेंट कॉम्बिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. एंड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैसेज टैकल हो सकता है प्रोवाइडेड वी आर एबल टू हिट एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ इट्स थीम. उसकी थीम के फाउंडेशन पे अगर हम हिट कर ले तो हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, एब्स्ट्रूज से एब्स्ट्रूज, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पैसेज को टैकल करने में. That's what I feel, and that's what tends to inform the very theories upon which I have based my entire learning of critical reasoning in toto. So I hope मेरी बात सबको समझ में आ रही है. This introductory briefing of mine is going clear to each and every one of you. Now I have a few questions that I have to put to each and every one of you. अक्सर क्या होता है बच्चों कि हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है, हमारे मॉक में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड उन क्वेश्चंस में कुछ मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब है जहां पे मेन आइडिया आना चाहिए वहां सेंट्रल आइडिया आ जाता है, जहां सेंट्रल आइडिया आना चाहिए वहां मेन आइडिया आ जाता है, एंड हमारा पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अब हमारे सामने प्रॉब्लम होता है कि मेन आइडिया तो ये है ही नहीं, तो हम निकालेंगे.
मेन आइडिया तो कुछ और होता है, सेंट्रल आइडिया तो कुछ और होता है, हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर चुके हैं, हम जानते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा है तो हम कैसे निकालेंगे? अभी जैसे कि मैंने एक रीसेंट मॉक देखा था, अराउंड मॉक नंबर 56, मॉक नंबर 56 में क्वेश्चन मैंने देखा था जहां पे सेंट्रल आइडिया लिखा होना चाहिए, वहां मेन आइडिया लिखा था। तो दो आइडियाज है, कहने को ये दोनों एक ही है, बहुत बार लोग कह देते हैं एक ही है, इनको इंटरस्पर्स कर देते हैं, इनको इंटरमिंगल कर देते हैं, बट दोनों ही अलग है। आप लोग को ये बात पता है? आई हैड इवन वर्कड आउट अ वीडियो ऑन दिस that was around the very theme of how exactly to differentiate between central idea and main idea. Main idea I hope सब जानते होंगे, recurring theme होती है। मेन आइडिया का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकरिंग थीम। रिकरिंग थीम का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एन आइडिया और एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन दैट हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ ऑन एंड ऑफ throughout the length and breadth of the passage. पैसेज की लेंथ और ब्रेथ में जो कंपोनेंट, जो एलिमेंट, जो आइडिया, जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हमारे सामने आ रहा है, जिसकी प्रेजेंस ऑन एंड ऑफ हमें देखने को मिल रही है tangibly, that I would say tangibly, visibly, not invisibly, not implicitly, not in an implied fashion. I hope मेरी बात क्लियर है सबको? बार बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कोई पैसेज विराट कोहली के ऊपर, विराट कोहली की लाइफ से शुरू होता है, विराट कोहली के फादर्स डेथ को मेंशन करता है, विराट कोहली के इनिशियल स्ट्रगल्स को बताता है, विराट कोहली के रणजी पलेवर्स को बताता है, विराट कोहली के डेली फेलियर्स को बताता है, विराट कोहली का अंडर 19 कैप्टेंसी ट्रायम्फ बताता है, विराट कोहली की इंडियन क्रिकेट टीम एंट्री बताता है, अनुष्का शर्मा को बताता है, सबको बताता है, बट बार बार रिपीट कौन हो रहा है? विराट कोहली। तो ये एक थ्योरी मैंने वर्कआउट की थी काफी सालों पहले, जिसका नाम, आई होप आप में से यहाँ पे कितने लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर वेल वर्स्ड विद माय theoretical approaches and deductions that I often put to use? Let me just have a view. There are around 4 to 5. 4 to 5 students are here who are well versed with my theories and deductions on my various logical explanations that I put to use while I try to bear on the subject matter of critical reasoning. And how many of you, those who are part of this 4 to 5 coterie of students who have opted for the online mode of teaching, and how many of you are going well with the aid of those theories? How many of you are doing reasonably well in CR by this date? May I have a few hands? Are there hands? Okay, 1, 2, 3. There are around 4 to 5 hands. Again, you are not going well. Is there an issue with you? Huh? Acha, 50-50. Okay. Sometimes you go well. Sometimes, considering the difficulty of the overall mock test, there are ups and downs, mostly downs in your scores. Not an issue. So I tell you a few things. The first thing, there is a theory that I always associate with the main idea of the passage. I hope every single individual here must have heard that the backbone of a CR passage is always its main idea. एक CR passage की जो backbone होती है वो हमेशा क्या होती है? main idea. main idea का दूसरा नाम क्या है बच्चों? the recurring theme. The recurring theme का दूसरा नाम क्या है? The recurring theme का दूसरा नाम बड़ा ही सिंपल है। The recurring theme को हम लोग बोलते हैं the आइडिया और ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन दैट इज बीइंग रिपीटेड। तो मैं विराट कोहली की बात कर रहा था। विराट कोहली के ऊपर कोई पैसेज है, उसकी लाइफ के एक एक एलिमेंट को कंटेन करेगा, उसकी लाइफ के एक एक एलिमेंट को टच करेगा, उसकी लाइफ के एक एक एलिमेंट को एनफ्लेयर करेगा। बट द थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे पैसेज में एक नाम बार बार रिपीट होगा, दैट इज व्हाट? विराट कोहली। तो ये जो विराट कोहली है, इसको हम कॉन्सेप्चुअली किस नाम से जानते हैं? जो लिखना चाहते हैं वो लिख ले, कोई इशू नहीं है। दैट वी कॉल्ड एज मेन आइडिया एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं मेन आइडिया एलिमेंट। एक नाम होता है मेन आइडिया एलिमेंट और एक नाम होता है इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट क्या होता है, कुछ देर के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट आप किसी भी पैसेज में ढूंढ सकते हैं, किसी भी पैसेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवरी सिंगल पैसेज, अगर मैं प्रोबेबिलिटी फिगर इसका ड्रॉ करूं तो 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपको अगर पैसेज मिलेगा, चाहे कितना ही बेबी साइज क्यों ना हो लेंथ में, उसमें एक मेन आइडिया एलिमेंट होगा ही होगा।
वो किसी ना किसी एलिमेंट के अराउंड घूम रहा होगा, कोई ना कोई उसकी रिम होगी, कोई ना कोई उसका पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन होगा, कोई ना कोई उसका पॉइंट ऑफ, आप एक तरीके से कह सकते हैं उसका मेन आइडिया एलिमेंट होगा। मेन आइडिया एलिमेंट वो पॉइंट है, हमेशा सिंगल वर्डेड होता है बेटा, एक वर्ड होता है, एक आप एक तरीके से टर्म होता है, और नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन्स को कंसीडर करते हैं। हम किसको कंसीडर करते हैं? प्रॉपर नाउन्स को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर हमारा पैसेज है, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर पैसेज है, एंड वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन ऑप्ट श्रीलंका एज द मेन आइडिया एलिमेंट, और वी कैन ऑप्ट कंट्री एज द मेन आइडिया एलिमेंट। देन वी विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट? वी विल गो फॉर श्रीलंका। We will always go for Sri Lanka as the main idea element. Proper noun को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको किसी भी पैसेज को इजी बनाना है। You feel that comprehension wise you are lacking in any of the passages and your comprehension skills are not aiding you at this crunch moment. Then the best preferable course of action that is recommended is that you better link it up, the entire passage. You better look forward to identify the main idea element in the entire passage. आप पूरे पैसेज को सबसे पहले तो बोला जाएगा पैराग्राफिकली डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 टीचर्स आपको दिख रहे हैं, तीनों फ्लैंकिंग पोजीशन में है, ठीक है। अब एक जॉइंट इमेज आ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट तीनों को दूर कर दिया जाए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। वही काम हम पैराग्राफ्स के साथ करते हैं, हम पैराग्राफ्स को दूर कर देते हैं आपस में। कहीं पर भी अगर आपको लगता है that somewhere you are not able to absorb the central idea, not the central idea, the central theme of the passage, you are supposed to go paragraphically. आप क्या हो जाइए, होलिस्टिक रीडिंग की बजाय पैराग्राफिक रीडिंग करनी शुरू कर दीजिए। पैराग्राफिक रीडिंग का कमाल क्या होता है? पैराग्राफिक रीडिंग के कई बेनिफिट्स होते हैं। हमें इंटीग्रल्स में मेन आइडिया मिलता है, हमें मेन आइडिया कंपोनेंट्स में मिलता है, हम समझने लगते हैं। कभी भी अगर ऐसा लगे कि एक बार आपने रीड किया एंड आप पैसेज नहीं समझ पा रहे हैं, आई होप मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, नहीं आ रही? Am I audible now? Okay. Now listen. कई बार होता है, I would now walk down to the aisle in order to assure that I am reachable to the last sitting member of this auditorium. The first thing that I would like to learn through each and every one of you, कभी ऐसा होता है कि कोई पैसेज पढ़ा, कभी कुछ पैसेजेस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी पे आ गया, ठीक है। अभी एक लॉकनेस मॉन्स्टर वाला पैसेज हमने दे दिया था, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वो छोटा था लेकिन बहुत ही डेढ़शाना था, ठीक है, छुट्टू सा था, लेकिन उसने काम बैठा दिया था हमारी ऑडियंसेस पे। वो पैसेज निकल नहीं रहा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर गया था। और उस पैसेज में ऊपर से एक शब्द, हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत बोली जाती है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। वो नीम चढ़े करेले जैसा था कि उसमें क्वेश्चंस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी थी। एक तो पैसेज डिफिकल्ट था, साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहां पे थोड़े डिफिकल्ट पैसेजेस आते हैं। नंबर 2, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइकोलॉजी के बाद, फिलॉसफी। इज इट फाइन? ओके, फिलॉसफी हो गया। नंबर 3, और भी कई एरियाज होते हैं, साइंसेस के कुछ हायर एडवांस्ड लेवल्स होते हैं, उनसे पैसेजेस एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे कई मैगजीन्स आती है, साइंस रिपोर्टर आती है, उसी से कोई पैसेज उठा लिया। उन पैसेजेस को डील करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पैसेजेस के लिए आई हैव अ टाइम टेस्टेड methodology of approach which I always try to bring in absolute focus, especially when I am in the company of students. I always say go paragraphically. पहला पैराग्राफ पढ़िए, आपने एक बार पैसेज पढ़ के देख लिया, नहीं समझ आया, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, now what should we do? तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़िए एंड पैराग्राफ पे फोकस करिए। पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ के बीच में बाउंड्रीज लगा दीजिए, लाइंस खींच लीजिए, P1, P2, P3 कर दीजिए, P1 पे ज्यादा फोकस करिए। एक बार, 2 बार, एक पैराग्राफ को पढ़ना 2-3 बार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पूरे पैसेज को 2-3 बार पढ़ोगे, आपकी सीआर बैठ जाएगी, ठीक है। आप एक पैराग्राफ
पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ते हो, 2-3 बार का वर्थ द, ठीक है, वर्थ द वाइल एफर्ट देते हो, आपको 2 या 3 बार में पहला पैरा समझ आ जाएगा। एक बार पहला पैरा समझ आ गया, बेडरॉक समझ आ गया, बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गया, प्रोटीन स्ट्रक्चर समझ आ गया, अमीनो एसिड समझ आ गया, देन पूरा आप एक तरीके से कह सकते हैं बॉडी की बायोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो सबसे पहला काम करना है, जब भी पैसेज डिफिकल्ट हो जाए, गो पैराग्राफिक, पैराग्राफिक हो जाइए। एंड पैराग्राफिक होते टाइम पहले पैराग्राफ पे थोड़ा जोर लगाइए। पहले पैराग्राफ पे जोर लगाने का मतलब उसमें ताकत नहीं लगानी है, यू डोंट हैव टू पुश अगेंस्ट इट। द थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू इज ट्राई टू वर्क आउट द मेन आइडिया एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में मेन आइडिया एलिमेंट पकड़ लेना है, किसके अराउंड बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, हमारा ऑथर घूम रहा है, दैट इज द मेन आइडिया एलिमेंट। मेन आइडिया एलिमेंट को ही दूसरा नाम दिया गया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। अब पहला पैरा पढ़ने के बाद दूसरे पैरा में देखना है क्या जो एलिमेंट मैंने फर्स्ट पैरा में आइडेंटिफाई किया है वो सेकंड में भी रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो सही मिल गया। Then you have worked out, then the puzzle has been worked out in your favor and you have been able to pull a rabbit out of the hat. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपना जो एम था उसमें सक्सीड हो गए, आपने मेन आइडिया एलिमेंट ढूंढ लिया। मेन आइडिया एलिमेंट ढूंढने के बाद 90% ऑफ द टास्क वैसे ही हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको देखना है कितनी बार मेन आइडिया एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। अगर पैसेज बड़ा होगा तो 8-10 बार इस्तेमाल होगा, पैसेज छोटा होगा 4 या 5 बार इस्तेमाल होगा, इतनी बार में खत्म हो जाएगा। मेन आइडिया एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, देन जिन जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है उन सारे सेंटेंसेस को आपको पढ़ लेना है। इतना करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा लग जाएगा कि आपका मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया एलिमेंट से आप कहां पहुंच गए, मेन आइडिया स्टेटमेंट तक। मेन आइडिया स्टेटमेंट आप अपने माइंड में फ्रेम करेंगे और उसे फ्रेम करके अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मार्जिन, अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन ऑफ द पेज आप उसको रीराइट कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आई? मेरी बात कितने लोगों को समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल एबल टू इंटरसेप्ट? May I see a few hands upstairs too? Okay, you all have been able to understand what exactly I intended to convey. इसको एक बहुत सिंपल सा नाम मैंने दिया है इस थ्योरी को। इस थ्योरी का नाम है ग्रैन्युलर एक्सट्रैक्शन थ्योरी। ग्रैन्युलर का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड। हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं मेन आइडिया को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेन आइडिया को पकड़ने के लिए। और वर्ड, कौन से वर्ड को, किस टाइप के वर्ड पे हमारा फोकस रहता है? प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स पे हम फोकस करते हैं। एंड प्रॉपर नाउन्स पे भी किस टाइप के टर्म्स पे फोकस करते हैं? जिनमें रेपिटेटिव एलिमेंट होता है, जिनमें एक रेपिटेटिव कैरेक्टर होता है, रिकरिंग कैरेक्टर होता है, जो बार बार क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। तो दैट इज आवर मेन आइडिया। तो ये होता है हमारा क्या, मेन आइडिया। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मेन आइडिया के और कौन कौन से नाम हैं जो अगर यूज हो गए तो हम कंफ्यूज ना हो, हम उसको इंटरप्रेट करें, हम उसे कंस्ट्रू करें एज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज ऑल्टरनेटिवली एंड नथिंग एल्स। सो जो सबसे पहला नाम मेन आइडिया का इस्तेमाल होता है, आप लिख लीजिए, प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया का जो एक सबसे कॉमन नाम इस्तेमाल होता है, प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज। ये मैंने कई मॉक्स में लिखा आते देखा है, प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस के बाद एक नाम और इस्तेमाल होता है, द थीम ऑफ द पैसेज। थीम शब्द कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब है ये मेन आइडिया की ही बात कर रहा है। प्राइमरी फोकस, थीम, एक शब्द आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। मेन पॉइंट और मेन आइडिया एक ही है। थर्ड, इसके बाद एक टर्म और बहुत बार इस्तेमाल होता है, मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। मेन आर्ग्यूमेंट भी आपका मेन आइडिया ही है। कैसे है अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एक टर्म और इस्तेमाल होता है, क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज भी आपका मेन आइडिया ही है।
जितने आप एक तरीके से कह सकते हैं सारे जितने भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आपके पैसेज का जिस्ट निकालने के लिए, वो मेन आइडिया के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे. स्पारिंग व्हाट? स्पारिंग द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया अलग है बेटा. आप सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया में क्या डिफरेंस है ये जरा मैं आपको 1 मिनट के अंदर अभी बताए दे रहा हूं. ये जो हमारा Am I audible now? Okay. ये जो हमारा मेन आइडिया है, मेन आइडिया तो मैंने आपको समझा दिया, रिकरिंग थीम. ठीक है. सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया के बारे में लिख लीजिए. सेंट्रल आइडिया इज प्रिटी मच इन फॉर्मूला एंड कॉम्पोजिशन. सेंट्रल आइडिया इज प्रिटी मच इन फॉर्मूला एंड कॉम्पोजिशन like the conclusion of a passage. Central idea is pretty much like the formula and composition. In terms of formula and composition, central idea is pretty much in formula and composition like the conclusion of a passage. Central idea काफी हद तक कैसा होता है बच्चों? conclusion जैसा. क्यों सेंट्रल आइडिया कंक्लूजन जैसा होता है ये मैं अभी आपको बताए दे रहा हूं. सेंट्रल आइडिया की जो आप एक तरीके से कह सकते हैं थ्रस्ट है. एक शब्द फिर आ गया देखिए, थ्रस्ट. कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज द थ्रस्ट, व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज. थ्रस्ट का भी मतलब यही है, मेन आइडिया. मेन आइडिया एक ऐसा रावण है. कल ही हम लोगों ने रावण को, ठीक है, रावण को इग्नाइट किया है, रावण को पूरे तरीके से हमने बरी कर दिया है. तो एक रावण की तरह है, एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है हमारा कौन? मेन आइडिया, जिसके जितने नाम आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं. बट बेसिकली वो क्या है? पैसेज की थीम, पैसेज की जान है. पूरा पैसेज उसी के अराउंड बिल्ड हुआ है. उसके बिना पैसेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पैसेज की कोई आइडेंटिटी नहीं है. अब सेंट्रल आइडिया का फॉर्मूला क्या है? लिख लीजिए. सेंट्रल आइडिया deals with the coverage of the passage and nothing else. Central idea deals with the coverage of the passage. Central idea deals with the coverage of the passage and nothing else. Mainly उसका किस चीज के साथ लेना देना है? सेंट्रल आइडिया का कवरेज के साथ. सेंट्रल आइडिया आप जब भी देखेंगे आपको ये देखना है 2 से 3. मैं एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको बताए दे रहा हूं, सुनिएगा. मेन आइडिया का क्वेश्चन आएगा, जो 4 ऑप्शंस होंगे उनकी लेंथ नॉर्मल होगी. सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उनकी लेंथ चारों की अच्छी खासी होगी, 2-2, 3-3 लाइंस की होगी. क्यों ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी? सेंट्रल आइडिया में लेंथ हमेशा ज्यादा होती है. मेन आइडिया में छोटी लेंथ से भी काम चल जाता है. छोटी लेंथ से क्यों काम चल जाता है? मेन आइडिया में बस वो एलिमेंट चाहिए. कौन सा एलिमेंट चाहिए? मेन आइडिया एलिमेंट. वो एलिमेंट आ जाए जिसके अराउंड पूरा पैसेज घूम रहा है, हमारा काम हो जाएगा. बट सेंट्रल आइडिया में एलिमेंट नहीं चाहिए. एलिमेंट से ज्यादा क्या चाहिए? कवरेज. कवरेज किसका चाहिए? पूरे पैसेज का कवरेज चाहिए. पूरे पैसेज का कवरेज कैसे मिलेगा? 3 लाइनों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जो पैसेज के अंदर हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे. इज दैट फाइन? यही हमारे कंक्लूजन का भी फॉर्मूला होता है. कंक्लूजन का फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद द वेरी आइडिया अपार्ट फ्रॉम यू? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यू, यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट, यू आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड. व्हाट अबाउट द laity, the audience that is here for the first time, that is facing me primarily for the first time? For them I am an absolute novitiate, and I am making my first appearance with the normal Jodhpurite mass that I have before me. तो कितने लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन शब्द को लेकर बड़ी, एक हिंदी में अगर मैं बोलूं, मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती नहीं है वैसे तो, हिंदी में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कंक्लूजन शब्द को लेकर. बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, बहुत ज्यादा आप एक तरीके से कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के टेंडर माइंड्स में कंफ्यूजन है. हमारे प्यारे बच्चों के प्यारे से जो छोटे छोटे माइंड्स हैं, इनमें एक कंफ्यूजन रहता है कंक्लूजन को लेकर, कि हमारा जो कंक्लूजन है वो हमेशा एंड में पाया जाता है. कितने लोगों को ये गलत फहमी है कि कंक्लूजन हमें
कितने लोगों को ये गलत फहमी है कि कंक्लूजन हमेशा एंड में होता है पैसेज के? हाथ खड़े कर दीजिए ईमानदारी से, खड़े कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी खड़े कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी खड़ा कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूजन हमेशा एंड में होता है, लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी किसी तरीके आपके मन में, आपके मन मस्तिष्क में घर कर गई है, तो उसे हटा दीजिए, उसे निकाल फेंकिए। कंक्लूजन पैसेज के जरूरी नहीं है लास्ट में, होता ही नहीं। कंक्लूजन लास्ट में कभी नहीं आता, आता ही नहीं है। या तो कंक्लूजन देना होगा तो कहीं बीच में भी दे सकता है, वो लास्ट में भी दे सकता है, और कभी कभी शुरुआत में भी दे सकता है, वो कहीं पर भी दे सकता है। ऑथर के मूड की बात है, और नॉर्मली 99% केसेस में ऑथर कंक्लूजन देगा ही नहीं। आपके लिए इतना आसान नहीं कर देगा वो सारा काम कि कंक्लूजन उठा के रख दे। कंक्लूजन तब मिल सकता है जब कभी बोल्ड फेस के फॉर्म में उसने कवरेज दे दिया। कंक्लूजन का मतलब होता है, जैसे कि बहुत जगह बहुत सी बातें बोली जाती हैं, कंक्लूजन के लिए सी फॉर कंक्लूजन, कंक्लूजन का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, इसके बाद मुझे मेरे लिए आपको बताना काफी आसान होगा। कंक्लूजन का जो हमारे फॉर्मूला है, सी फॉर कंक्लूजन इज इक्वल टू, C for conclusion is equal to comprehensive coverage of content of the passage. Comprehensive coverage of content of the passage. इसको कृपया करके लिख लीजिए, comprehensive coverage of content of the passage. ये जो हमारे पैसेज का comprehensive coverage है, पूरे पैसेज को कैसे कवर करना है। जैसे 10 एलिमेंट्स है, मैंने विराट कोहली के बारे में भी बात की थी। विराट कोहली की इनिशियल लाइफ, फादर्स डेथ, सिंगल मदर, ठीक है, एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, हिज इनिशियल एंट्री इनटू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, हिज अंडर 19 करियर, हिज लैक ऑफ a tangible concrete performance, and then his appraisal to the level of captaincy in under 19, then his triumph of under 19 World Cup, then his selection in Royal Challengers Bengaluru, then later on his selection in Indian cricket team, his donning of blue uniform, then his rise to fame, एंड देन फाइनली अनुष्का शर्मा, ठीक है। ये जो इतनी सारी चीजें हैं, ये एक एक करके आएंगी, और जो ऑप्शन जितने ज्यादा एलिमेंट्स को कवर कर पा रहा है, वही आपका क्या बनेगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन इज ऑल अबाउट योर व्हाट? कवरेज। कंक्लूजन केवल और केवल बात करता है आपके कवरेज की, एंड कंक्लूजन कभी भी आपको सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा इन द पैसेज, ना लास्ट में मिलेगा, बीच में कभी कभी डाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं डाला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कंक्लूजन और सेंट्रल आइडिया काफी हद तक मेल खाते हैं। मेल क्यों खाते हैं? क्योंकि दोनों किस चीज की बात करते हैं? कवरेज। वेरी गुड। सो दिस वाज conclusion for you. So I have discussed with you main idea, I have discussed with you conclusion, I have discussed with you central idea. Now I will discuss with you what exactly is an argument and how to accommodate an argument within the basic structure of a passage. हम argument को कैसे accommodate करें passage के structure के अंदर, ठीक है। बच्चों, मैं एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, बट आपकी लर्निंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल सब्जेक्टिव डेवलपमेंट के लिए, आपकी लॉजिकल कोशेंट के बढ़ने के लिए कुछ चीजें बहुत एसेंशियल है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, बेटा मुझे फैक्ट और ओपिनियन के बीच का डिफरेंस बता सकते हो? Anybody, any of the, आप बता सकते हो? I know. What about others? फैक्ट और ओपिनियन के बीच का कोई मुझे डिफरेंस बता सकता हो? Anybody who can raise his hand voluntarily, his or her hand. The basic difference between fact and judgment. Sorry, not judgment, opinion. फैक्ट एंड ओपिनियन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, कभी आपको किसी ने ये बताया आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है,
आर्ग्यूमेंट बस एक कॉम्प्लिकेटेड, एक एडवांस्ड वर्जन है किसका? ओपिनियन का। एक एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है आपके ओपिनियन का। ठीक है, फैक्ट और ओपिनियन में क्या अंतर है? अभी यहाँ पे कई लोगों ने हाथ रेस किया है, बताओ। Okay, anybody else? Let me just reach it out to you. Fact is a bridge to opinion. Okay, तो आप लोगों का स्टेटस को मुझे काफी पता चल गया, बताना चाहेंगी कुछ? ना बच्चों, आपने तीनों लोगों ने जो मुझे रिस्पॉन्सेस दिए तीनों ही गलत हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, very good. You are around 33% correct. Okay, 33% correct. Now listen to me. आप रुक जाइए, ठीक है? You better keep your opinion safe. Okay, in safety mode. Now just listen. Actually मैं ये बता रहा था कि जो हमारा फैक्ट होता है उसको बोलते हैं वेरीफाइबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वेरीफाइबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमारा जो ओपिनियन होता है वो होता है आवर व्यू पॉइंट ऑन वेरिंग और डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स। Our personal viewpoint on varying or diverse subject matters। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है कि हमारा विचार किसी चीज पर क्या है। बहुत छोटी सी चीज है। कोई अगर बोलता है नरेंद्र मोदी इज द करंट पीएम ऑफ इंडिया, या राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी के पास तो क्या इस समय कोई पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, राहुल गांधी के पास इस समय कोई पोस्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? खड़गे साहब। ठीक है, खड़गे साहब है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज द करंट पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? ये वेरीफाइबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो वेरीफाई हो सकती है, जिसका हम गूगल चेक कर सकते हैं। आप 1 मिनट के अंदर उसकी गूगल टेस्टिंग कर सकते हैं कि मोदी जी सच में एग्जिस्ट करते हैं, कोई है या नहीं है। मोदी जी का पूरा बायो निकल के आ जाएगा और मोदी जी के में लिख के आ जाएगा ही इज द 14th पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर कट लिख के आ जाएगा 17th लोकसभा को असेंड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, एंड और भी पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाएगा उनके बारे में, बाहुबली से लगाकर बहुत कुछ। ठीक है, कि वो क्या क्या है। बट इससे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मोदी जी हमारे क्या है? इंडिया के पीएम, और ये वेरीफाई हो गया। अब कोई मान लीजिए ये जोधपुर है, जोधपुर में नॉर्मली लोगों का ओपिनियन किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? बीजेपी। ओके, मान लीजिए मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा हो जाता हूं जाके, और मुझे ये मिल जाती है। ठीक है, इनसे मैं पूछता हूं बेटा व्हाट्स योर, अब यहाँ पे फैक्ट नहीं पूछूंगा, बच्चा फैक्ट जानता है क्या है? वेरीफाइबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई कहे अगर जैसे कि शहबाज शरीफ इज द करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये क्या है? वेरीफाइबल। जो वेरीफाइबल है वो फैक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्यों इतना डीपली फैक्ट बता रहा हूं? क्वेश्चन आ जाता है, बोल्ड फेस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये क्या है? फैक्ट, ओपिनियन, assumption, conclusion, क्या बन रहा है? Recommendation. That is why I want every single one of you to be properly informed of the very conceptions, the basic conceptions behind these technical terms. तो मैं एक स्टोन से 3 शिकार कर रहा हूं, फैक्ट, ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट। सबसे बड़ा शिकार आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैं एक बड़ा ऑनेस्टली क्वेश्चन आप लोगों से जानना चाहूंगा, कितने लोग बेसिकली जानते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आप नीचे रखिएगा। ठीक है, कितने लोग बेसिकली जानते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरली जानते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है? लेट मी जस्ट लुक थ्रू द एंटायर क्राउड। बहुत कम जनसंख्या है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा, अभी जान जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट वुड टेक मी जस्ट 10 मिनट्स। ठीक है,
10 मिनट्स के अंदर भी आप सब जान जाएंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो फैक्ट क्या हुआ? फैक्ट एक बड़ा सिंपल सा वेरीफाइबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा हुआ जाके, तो मैं कभी गलती से ये नहीं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी पीएम है या नहीं। सबको मालूम है, लोग मुझे पागल बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा इडियट आदमी है, मिस इन्फॉर्म्ड आदमी है, इसको पता ही नहीं है। मैं सिंपली अगर माइक लेके जाऊंगा तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट्स योर मिस्टर मोदी, आपका मिस्टर मोदी को लेकर क्या ओपिनियन है। नॉर्मली पहले सपोर्टर्स हुआ करते थे, आज हमारे देश में एक अलग ही कम्युनिटी इवॉल्व हुई है, जिस कम्युनिटी का नाम है भक्तास। क्या नाम है उसका? भक्तास। अंधभक्ता मत बोलिएगा, ठीक है। भक्तास इज फाइन। तो मान लीजिए ये एक भक्ता है और इनसे मैं मिल लिया यहाँ पे आके, इनसे मैंने पूछा व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन मोदी जी। से मोदी जी इज भगवान, मोदी जी भगवान है। अब एक बात बताइए, ये जो इन्होंने बोला, ये भक्ता है, ये एक लेडी भक्ता है, ठीक है। नाम क्या है बेटा आपका? इशिका, ओके। तो इन्होंने बोला मोदी जी भगवान है, तो ये जो चीज है ये ओपिनियन है इनका या फैक्ट है? ओपिनियन। वेरीफाइबल नहीं है। देखिए, ओपिनियन इज नेवर वेरीफाइबल। ओपिनियन इज नेवर वेरीफाइबल। ओपिनियन इज नेवर वेरीफाइबल। कभी भी नेचर में ओपिनियन वेरीफाइबल नहीं होता। ओपिनियन आपका विचार है, आपके मन में क्या ख्याल आता है, दैट इज ओपिनियन, ठीक है। अब दो लोग हैं, ठीक है, दो सिचुएशंस मैं दे रहा हूं, फैक्ट मैंने बता दिया। अब बात हो रही है ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट की। ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं क्या कहूंगा, लिखिए। आर्ग्यूमेंट के आगे डैश लगा के लिखिए, अ फोर्सफुली एंड मोर अथॉरिटेटिवली स्टेटेड, a forcefully and more authoritatively stated version of an opinion, a forcefully and more authoritatively stated version of an opinion, a forcefully and more authoritatively stated version of an opinion, a forcefully and more authoritatively stated version of an opinion is known as an argument, which is further which is further backed up by multiple supports, which is further backed up by multiple supports. Actually बहुत सारे टीचर्स ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड बहुत लेवल तक, बहुत डीपर लेवल तक जाकर समझाते हैं, और एक शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं, खासकर आर्ग्यूमेंट, तो एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, दैट इज प्रेमाइस। इज दैट सो? और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बार पूछ लिया जाता है, चार में से ये क्या है? Premise in the argument, assumption in the argument, conclusion in the argument, assertion in the argument. तो assertion का मतलब सबसे पहले जान लीजिए, assertion कंफ्यूज नहीं होना है। assertion का मतलब है strongly stated या strongly made opinion of the author. assertion का मतलब क्या होता है? a strongly made opinion of the author. assertion का मतलब यहाँ पे कुछ जो चीफ ओपिनियन ऑफ द ऑथर। असर्शन कुछ नहीं है। असर्शन या तो आप मजबूती से कोई ओपिनियन रखते हैं या कि कोई चीज क्लेम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? असर्शन, ठीक है। अब अभी जो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक शब्द अभी बोला था, प्रेमाइस, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे प्रेमाइस जानते हैं? आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रेमाइस जानते हैं, ओके। Just see the hands. How many of you are well versed with the definition of premise? Would you just help me better understand? So it is basically the multiple support provided in passage. Okay, provided in passage. Not exactly passage. Provided in support. The main idea of the passage, or if we are talking about an argument, the claim of an argument. Okay, that idea. Okay, she has given us 75% accurate definition of premise. What about others? How do others opine on the definition of
बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हाँ नहीं बेटा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, तो मैंने आपको फैक्ट बताया, मैंने आपको ओपिनियन बताया। जैसे ओपिनियन इन्होंने रखा, इशिका जी ने अपना, कि मोदी जी भगवान है, ये इनका नॉर्मल ओपिनियन हो गया, ठीक है। ओपिनियन के और भी कई नाम होते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिए, व्यू पॉइंट, जजमेंट, ये सारे नाम है किसके? ओपिनियन के। ओपिनियन इन्होंने सीधा सीधा दे दिया कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है सर कि मोदी जी भगवान है, दैट्स इट। ओपिनियन कभी वेरीफाइबल नहीं होता, ठीक है। फैक्ट आपका वेरीफाइबल है। ओपिनियन में जब हम ताकत लगा देते हैं, ओपिनियन में जब हम क्या लगा देते हैं? ताकत लगा देते हैं। ओपिनियन में ताकत लग जाती है। किसकी ताकत लग जाती है? हमारे किसकी? हमारे फोर्स ऑफ असर्शन, हमारे क्लेम की ताकत लगती है। हमें जब ओपिनियन में, अपने ओपिनियन में यकीन हो चलता है, हमें यकीन हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, और उसको प्रूफ करने के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। अब एक बहुत छोटी सी चीज है, मैं बीजेपी के कार्यालय के बाहर खड़ा होकर अगर मोदी जी के बारे में डिबेट करने लगूं, तो एक बात बताइए, तो डिबेट होगी या मेरी पिटाई होगी? हाँ, पिटाई होगी, डिबेट नहीं होगी। डिबेट नहीं होगी बेटा, डिबेट तो कॉमन जगह होगी, कॉमन एक नॉर्मल स्क्वायर पे, जैसे हम लोग यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं, तो डिबेट होगी। अगर मैंने हेडक्वार्टर के बाहर ऐसी बात कर दी, ठीक है, तो डिबेट नहीं होगी, ठुकाई होगी, और बहुत अच्छे से ठुकाई होगी। हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तो वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब आप अपने ओपिनियन को बहुत फोर्सफुली बोलते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला ये मोदी जी भगवान है, मैं एक पॉइंट और लिखाऊंगा, लिखिए, द पॉइंट एट विच एन ओपिनियन एंड्स द आर्ग्यूमेंट बिगिंस। द पॉइंट एट विच एन ओपिनियन एंड्स द आर्ग्यूमेंट बिगिंस। द पॉइंट एट विच an opinion ends, the argument begins. The point at which an opinion ends, the argument begins. Argument वहीं से शुरू। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Let me just have a proper view of the situation. Okay, पूरे तरीके से समझ आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Okay, not an issue. अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए, जब आप फोर्सफुली बोलने लगते हैं अपने ओपिनियन को, अपने ओपिनियन के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पिटाई करने को तैयार हो जाते हैं, किसी की मारने को तैयार हो जाते हैं, देन वो ओपिनियन नहीं रह जाता, देन वो क्या हो जाता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले वो ओपिनियन से आर्ग्यूमेंट होता है। ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट के बीच का सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन क्या है? ओपिनियन आप बहुत माइल्डली देते हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बड़ा पावर के साथ देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर ये ओपिनियन देंगी तो ये बोलेंगी मोदी जी भगवान है, ठीक है, घर चली गई। आर्ग्यूमेंट देंगी, आर्ग्यूमेंट का भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट देंगी तो ये नहीं बोलेंगी मोदी जी भगवान है, कहेंगी पता नहीं है क्या मोदी जी भगवान है, इतना भी नहीं जानते हो, भाड़ में जाओ अगर इतना नहीं जानते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, अगर इतना बेसिक नहीं पता है तो हिंदुस्तान में रह रहे हो, ठीक है। सो शुरुआत जो होती है आर्ग्यूमेंट की, वो पावरफुल वर्जन ऑफ एन ओपिनियन के साथ होती है, एक फियर्स वर्जन ऑफ एन ओपिनियन के साथ होती है, और इसके बाद जो सपोर्ट दिए जाते हैं। अब इनसे मैंने पूछ दिया, बेटा एक बात बताओ, क्यों आपको लगता है कि मोदी जी भगवान है? तो ये सबसे पहले बोलेंगी, क्या कभी कोई ऐसा पीएम देखा है जिसने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया हो? इकलौती माँ हो, उनको भी छोड़ दिया हो, बेचारी मर गई हो और खुद पहुंच ना पाए हो, देश की सेवा में लगे रहे हो। नंबर 2, ऐसा पीएम देखा है जो पिछले 10 साल से पीएम है और 20 साल सीएम रहा और उसके पास आज भी बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं है? नंबर 3, कभी ऐसा पीएम देखा है जो 20-20 घंटे काम करता हो, रात के 3 बजे पाकिस्तान पे जिसने क्या करवा दी हो? सर्जिकल स्ट्राइक। आ रही बात समझ में? तो ये जो 3 इन्होंने दिए लाइन से, ये क्या है? मल्टीपल सपोर्ट्स, और इन्हीं को बोला जाता है प्रेमाइस। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड, वंडरफुल, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेमाइस। सबसे पहले जो इन्होंने बोला मोदी जी भगवान है, जब इन्होंने ताकत से आप अपना ओपिनियन देते हैं तो ओपिनियन नहीं रह जाता, वो कहलाता क्लेम। लिख लीजिए, क्लेम। Whenever an opinion is made with force and authority, whenever
an opinion is made with force and authority, whenever an opinion is made with force and authority, it transforms into a claim. Whenever an opinion is made with force and authority, it transforms into a claim. Claim में तब्दील हो जाता है, एंड उसके बाद जो आप सपोर्ट देते हो मजबूत करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? प्रेमाइस. अब ये मल्टीपल सपोर्ट्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? They can be in the form of reasons. They can be in the form of explanations. They can be in the form of evidences. They can be in the form of examples. They can be in the form of justifications. इतने सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं आपके क्या? आपके प्रेमाइस. मल्टीपल सपोर्ट्स. मल्टीपल सपोर्ट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या? प्रेमाइस. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट क्या है? नंबर 1 क्लेम, नंबर 2 मल्टीपल सपोर्ट्स, और जिनको क्या बोला जाता है? प्रेमाइस. कभी भी प्रेमाइस आए, अभी तो मैं आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, हाउ टू अकोमोडेट एन आर्ग्यूमेंट विद इन अ पैसेज. आर्ग्यूमेंट को पैसेज के अंदर हम अकोमोडेट कैसे करें, फिट कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कहां हमें आर्ग्यूमेंट मिलेगा, और यहीं पे मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बता दूंगा एक सीआर और आरसी के पैसेज के बीच में. ठीक है? तो मैंने अभी आपको जो बताया, जितना बताया, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बताया. सबसे पहला एक फियर्सली और पावरफुली मेड A fiercely or powerfully made statement of opinion, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेम. ठीक है? जैसे बहुत छोटी सी चीज है, मैं 2 तरीके से बोल के दिखाऊंगा. एक तरीके से मैंने बोला, इस बार लगता है शायद मोदी जी फिर जीत जाएं. ठीक है? नंबर 1. नंबर 2, मोदी जी ही आएंगे, कोई दूसरा आके दिखाए, कोई दूसरा हरा के दिखाए, मोदी जी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हो. अब दोनों में बताइए क्लेम किधर दिखता है बेटा? हाँ, सेकंड वाले में. सेकंड वाला क्या है? क्लेम जैसा वो होगा, ओपिनियन होगा, फोर्स के साथ होगा, प्लस उसके फिर क्या होंगे? सपोर्ट्स. जो सपोर्ट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके प्रेमाइसेस. और मात्र इन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स के दम पे, इन्हीं 2 एलिमेंट्स, इन्हीं 2 कंपोनेंट्स के दम पे हमारा पूरा तैयार हो जाता है क्या? आर्ग्यूमेंट. अब एक चीज और लिख लीजिए, इन एवरी सिंगल passage it has been practically observed. In every single passage it has been practically observed that there are at least 3 to 4 arguments. In every single passage it has been practically observed. In every single passage it has been practically observed that there are around 3 to 4 arguments across the paragraphs. 3 to 4 arguments across the paragraphs. 3 से 4 आर्ग्यूमेंट होंगे ही होंगे across the paragraphs. अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था कि सीआर और आरसी के पैसेज में अंतर क्या होता है. कितने लोगों ने ये डिफरेंस ऑब्जर्व कर लिया है इतने दिनों में कि जो आरसी का पैसेज होता है वो थोड़ा इजी लगता है, हाँ? और सीआर का पैसेज जान ले लेता है. क्यों, ऐसा है या नहीं है? आरसी का पैसेज इजी लगता है, सीआर का पैसेज हमारा गला दबा देता है फॉर नो रीजन. एक हमारा स्ट्रैंगलिंग मॉन्स्टर के तौर पे आता है, और आधे से ज्यादा टाइम हमें उसका मैकेनिज्म, हमें उसका पूरा, आप एक तरीके से कह सकते हैं अरेंजमेंट, उसका पूरा सेटअप, उसकी मेकिंग, उसका फ्रेम समझ ही नहीं आता. अंतर बता दे रहा हूं बेटा, आरसी के पैसेज में 99% केसेस में आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं. आरसी के पैसेज में क्या नहीं होता? आरसी के पैसेज में ये जहरीला सांप बैठा ही नहीं है. नाम क्या है उसका? आर्ग्यूमेंट. और सीआर के हर पैसेज में पैरा बाय पैरा बैठा है. पैरा बाय पैरा बैठा है, आपको परेशान करेगा, आपको रुला देगा, इतना डेंजरस है. तो उसको डील करने का तरीका क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हर पैसेज में. तो ये मिलते कैसे, कहां होते हैं? एवरी पैरा लिखिए, एवरी पैरा इन अ सीआर पैसेज, every para in a CR passage
contains at least a single argument. Every para in a CR passage contains at least a single argument. एक आर्ग्यूमेंट होगा ही होगा हर सीआर के पैरा के अंदर. ठीक है, बात समझ आ रही है? हर पैरा में एक आर्ग्यूमेंट होगा. अब एक प्रॉब्लम और हमारे सामने हो जाती है. उसके लिए मैंने एक थ्योरी खुद ही डिवाइस की है, मैंने एक थ्योरी इवॉल्व की है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सेंटर थ्योरी. सेंटर ऑफ द सेंटर हम किसे बोलते हैं? पैसेज का सेंटर तो आर्ग्यूमेंट को बोला जाता है. अब आर्ग्यूमेंट का भी एक सेंटर होता है. ठीक है, सेंटर तो आर्ग्यूमेंट को बोला जाता है पैसेज का. बहुत बार मेन आइडिया को मेन आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है. जैसे मैंने बताया, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज? आर्ग्यूमेंट्स तो कई सारे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेन आर्ग्यूमेंट कौन सा है? मेन आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम पूरे पैसेज में, हमें पता है हर पैरा में क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, पूरे पैसेज का हम मेन आइडिया पकड़ लेते हैं. जो मेन आइडिया है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स का भी क्या है? सेंटर. सारे आर्ग्यूमेंट्स भी उस कन्वर्जिंग पॉइंट पे मिलेंगे ही मिलेंगे. हर पैरा में एक आर्ग्यूमेंट है और जो मेन आइडिया है वो उन सारे आर्ग्यूमेंट्स का क्या है? सेंटर. मेन आर्ग्यूमेंट, मेन आइडिया को अगर हमने पकड़ लिया तो हमें आर्ग्यूमेंट्स का भी सेंटर मिल जाएगा. तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ द सेंटर थ्योरी. Is that fine? जब भी कभी आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following options best strengthens the argument in the passage? ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का टाइप देखिए, अभी बताता हूं उसको डील कैसे करना है. ठीक है, which of the following options best बच्चों, कितने लोगों को मेरी बात अच्छे समझ आ रही है बिना किसी प्रॉब्लम के? हाँ, मैं पहली बार आया हूं, कोई अकोमोडेबिलिटी फैक्टर तो नहीं हो रहा ना कि समझ ना आ रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ एक एडेप्टेबिलिटी तो एक इश्यू नहीं है? हाँ, ठीक है, अच्छी बात है. अब मेरी बात को सुनिएगा. जो मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं भी आपको बता रहा था कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट एक सांप की तरह है जो हर सीआर पैसेज में 3 से 4 जगह आएगा ही आएगा और हर पैरा में बैठा है. अब आर्ग्यूमेंट को पकड़ने का तरीका क्या है? मेन आइडिया. आर्ग्यूमेंट को भी हम कैसे गले से पकड़ सकते हैं? मेन आइडिया पकड़ लीजिए बच्चों. मेन आइडिया अगर आपने पकड़ लिया तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, which of the following options best strengthens the argument in the passage या best weakens the argument in the passage. तो इतनी लाइन जहां पर भी इस्तेमाल हो, the argument in the passage, इसका मतलब क्या है? ये रेफर कर रहा है to the main idea of the passage. argument in the passage, 3 से 4 आर्ग्यूमेंट से कौन से वाले आर्ग्यूमेंट को आप पकड़ोगे? एक बात बताइए, आपके हर पैरा में एक आर्ग्यूमेंट है. जैसे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 होता है, उसी तरह आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, आर्ग्यूमेंट 4 होता है. आप कौन से वाले आर्ग्यूमेंट को पकड़ोगे और कौन से वाले आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करोगे? क्या करोगे इस केस में? ये चीज बताई गई है कभी आपको? हाँ, क्या तरीका होना चाहिए? क्या आपके पास जैक है बॉक्स में? क्या आपके पास एस है अपने स्लीव में? कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका है, आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज जहां पर भी बोल दिया जाए, इसका मतलब है ये सारे आर्ग्यूमेंट्स के सम टोटल की बात कर रहा है, पूरे पैसेज की बात कर रहा है. इसमें हमें क्या देखना है? द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मैं आपको पहले ही बता दूं, बिना मेन आइडिया निकाले अटेम्प्ट मत करिएगा. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? इन्फरेंस, असम्पशन एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग. लिख लीजिए. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना मेन आइडिया के अटेम्प्ट मत करिएगा कभी. इन्फरेंस, असम्पशन एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग. इन्फरेंस, असम्पशन एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग तो किया ही नहीं जा सकता. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग 2 टाइप की होती है. अभी खासकर जो हमारे मॉक्स आ रहे हैं, इन मॉक्स में 2 टाइप की स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हमें देखने को मिली है.
एक स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग होती है होलिस्टिक और एक होती है क्या, लोकलाइज्ड। ये कहां पता कर लिया, ये कहां जानने को मिला, स्ट्रेंथनिंग है, सॉरी, होलिस्टिक एंड लोकलाइज्ड। अच्छा, have you been taught this in class? अच्छा, एनालिसिस वीडियो, ओके, देयर यू सॉ इट, ओके। मैं और डिटेल में क्लियरली बताए दे रहा हूं, वरी नॉट। बहुत छोटी सी चीज है बेटा, हमारे पास मान लीजिए स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक टाइप का क्वेश्चन बताया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट स्ट्रेंथेन्स द आर्गुमेंट इन द पैसेज। तो जो आर्गुमेंट इन द पैसेज है वो किसको रेफर कर रहा है, द मेन आइडिया। अब जितनी बार आर्गुमेंट इन द पैसेज आए, या एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, लिख लीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट strengthens the passage, best strengthens the passage, the passage बोल दिया जाए, the argument in the passage बोल दिया जाए, the theme of the passage बोल दिया जाए। ये घूम के कहां जा रहा है, मेन आइडिया के पास। मेन आइडिया अगर हमें देखना पड़े स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग के लिए, और हम ये देखते हैं मेन आइडिया को देखने के बाद एक थ्योरी लगती है, 2 पैरामीटर थ्योरी। Do you all know this? 2 पैरामीटर थ्योरी, I'll tell you, ठीक है, I'll tell you। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के लिए हम एक थ्योरी लगाते हैं, that is known as 2 पैरामीटर थ्योरी। 2 पैरामीटर थ्योरी लगाई जाती है, टाइम है मेरे पास, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि जब भी पूरे पैसेज की बात की जाए, क्वेश्चन में आर्गुमेंट इन द पैसेज की बात की जाए, थीम ऑफ द पैसेज की बात की जाए, इसको वीकन करिए, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे वीकन या स्ट्रेंथन के केस में, मेन आइडिया। और 4 ऑप्शंस में आप देखेंगे, और मैं एक चीज जरा आपको और बता दूं कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिससे कोई कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है सपोर्ट करो। आप किसका सपोर्ट करो, या तो मेन आइडिया का सपोर्ट करो, या आपके क्वेश्चन में जो कंटेंट दिया गया है उसका सपोर्ट करो। कोई भी कंटेंट अगर आपको दिया गया है, उसका जब आप सपोर्ट करते हैं तो आप उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसी जगह जब आप उसका विरोध करते हैं, तब आप उसे क्या कर रहे हैं, वीकन कर रहे हैं। स्ट्रेंथन और वीकन का मतलब समझ लीजिए, स्ट्रेंथन का मतलब होता है सपोर्ट करना, और वीकन का मतलब होता है विरोध करना, उल्टा बोलना। मेरा विरोध करना है, मुझे वीकन करना है, तो मुझे पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे वीकन करना है तो मुझे पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा विरोध करने की जरूरत है। मैं आम बोलूं तो आप बोलिए इमली, ठीक है। मैं बोलूं नरेंद्र मोदी तो आप बोलिए राहुल गांधी, ठीक है। मैं बोलूं विराट कोहली तो आप बोलिए रोहित शर्मा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल उल्टा बोलना है। और किस पे टारगेट करना है, मेनली किस पे टारगेट करना है, मेन आइडिया पे। अगर 2 टाइप की स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग होती है, मैंने क्या बताया, लिख लीजिए, होलिस्टिक एंड लोकलाइज्ड। अब ये होलिस्टिक और लोकलाइज्ड, अगेन क्लास, तो मैं क्या बता रहा था, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग हमेशा 2 टाइप्स की होती है। एक होती है होलिस्टिक, एक होती है लोकलाइज्ड। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जरा मैं आपको बता दूं। होलिस्टिक का मतलब होता है जब हम पूरे पैसेज को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम पूरे पैसेज को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है होलिस्टिक। और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है जब हमें एक कंटेंट दे दिया गया है, किसमें, क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, एक चीज और जान लीजिए, लोकलाइज्ड क्वेश्चंस में आपको पैसेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है लोकलाइज्ड क्वेश्चंस में भी 2-2, 3-3 बार पैसेज पढ़ते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
जहां आपको फोकस करना है आप उससे फोकस हटाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको लोकलाइज्ड क्वेश्चंस में कभी भी क्या नहीं करना है, लोकलाइज्ड क्वेश्चंस में पैसेज को रेफर नहीं करना है। आपको पैसेज को रेफर किसमें करना है, होलिस्टिक में करना है। होलिस्टिक में पैसेज का क्या निकालना है, मेन आइडिया निकालना है और उसके बेसिस पे 2 पैरामीटर थ्योरी लगानी है। 2 पैरामीटर थ्योरी अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको होलिस्टिक के बारे में बताया। होलिस्टिक का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। और उसी के बाद जो आगे बात आती है, लोकलाइज्ड की बात आती है। जैसे मान लीजिए लोकलाइज्ड का क्वेश्चन कौन सा आएगा, कैसा आ सकता है, which of the following best, लिख लीजिए, which of the following best weakens the idea, which of the following best weakens the idea that Narendra Modi is a competent candidate, which of the following best weakens the idea that Narendra Modi is a competent candidate for 2024 Lok Sabha polls? Which of the following weakens the idea that Narendra Modi is a competent candidate for 2024 Lok Sabha polls? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब इसमें आपको लगता है पैसेज देखने की जरूरत है। हाँ, इसमें सीधा सीधा आपको वो ऑप्शन देखना है जो ये बताए कि मोदी जी अच्छे कैंडिडेट है या खराब कैंडिडेट है, बताइए। वीकेंड करना है बच्चों। वीकनिंग में हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट बोलना है। अच्छा बोला जा रहा है स्टेटमेंट में तो आपको उल्टा बोलना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जरा मैं आपको 2 पैरामीटर थ्योरी बता दूं। 2 पैरामीटर थ्योरी जो होती है स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग होती है और वीकनिंग के लिए अलग होती है। 2 क्लॉजेस हम लोग अप्लाई करते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिए। 2 पैरामीटर थ्योरी के अंदर 2 क्लॉजेस आते हैं। 2 पैरामीटर थ्योरी के अंदर 2 क्लॉजेस आते हैं। नंबर 1 लिखिए, पहला क्लॉज जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेलेवेंस क्लॉज। पहला क्लॉज लिखिए रेलेवेंस क्लॉज, रेलेवेंस क्लॉज। एंड दूसरा क्लॉज लिखिए, ये वीकनिंग के लिए है, दूसरा क्लॉज लिखिए ऑपोजिशन क्लॉज। रेलेवेंस क्लॉज एंड दूसरा क्लॉज लिखिए ऑपोजिशन क्लॉज। रेलेवेंस क्लॉज जो होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। 4 ऑप्शंस अगर मान लीजिए आपको दिए गए, 2 पैरामीटर थ्योरी में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपको चारों ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा कौन सा वाला ऑप्शन हमारे मेन आइडिया से कनेक्ट होगा। वही ऑप्शन आप लेंगे जो आपके मेन आइडिया से कनेक्ट हो रहा हो एंड साइमल्टेनियसली मेन आइडिया का क्या कर रहा हो, विरोध। मेन आइडिया को क्या कर रहा हो, ऑपोज। 2 साइमल्टेनियस कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। नंबर 1, कौन सा वाला हमारे मेन आइडिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। नंबर 2, कौन सा वाला हमारे मेन आइडिया को ऑपोज कर रहा है। ठीक है, these are known as the 2 parameters of weakening of an argument in the passage। इसको लिख लीजिए। बच्चों ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले, मतलब या पहली बार का इंट्रोडक्शन हो रहा है इनसे? फर्स्ट टाइम। अभी समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, लिखते जाइए। आई होप जो मैंने बताया सबको समझ में आया। ठीक है, लिखते रहिए, अभी मैं आपको बताता हूं आगे। तो मैंने वीकनिंग के लिए क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करना होता है, चेक किया जाता है। होलिस्टिक है, तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन करने का, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग। अब जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का क्वेश्चन जब भी आए, चेक करो सबसे पहले होलिस्टिक है या लोकलाइज्ड। अब तो जान रहे हो ना कि होलिस्टिक क्या है, लोकलाइज्ड क्या है। होलिस्टिक पूरे पैसेज की बात करेगा, आर्ग्यूमेंट की बात करेगा, ठीक है, थीम की बात करेगा। ये सारी चीजें किसको रेफर कर रही है, मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया पे जाएंगे और चेक करेंगे मेन आइडिया पे क्या लगा देंगे, 2 पैरामीटर थ्योरी। साइमल्टेनियस 2 क्लॉजेस लगेंगे। पहला क्लॉज क्या कहलाता है, रेलेवेंस क्लॉज।
रेलेवेंस क्लॉज मतलब चार में से वो ऑप्शन जो कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, हमारे मेन आइडिया के साथ। नंबर 2, रेलेवेंस क्लॉज के बाद जो दूसरा क्लॉज है वो क्या कहलाता है, ऑपोजिशन क्लॉज। ऑपोजिशन क्लॉज जो विरोध कर रहा है हमारे किसका, मेन आइडिया का। अब 2 पैरामीटर थ्योरी जो स्ट्रेंथनिंग के लिए वो बदल जाती है। यहां पे पहला क्लॉज रहेगा रेलेवेंस क्लॉज और दूसरा रहेगा सपोर्ट क्लॉज। ठीक है, दूसरा क्लॉज लिख लीजिए, दूसरा क्लॉज रहेगा सपोर्ट क्लॉज। हमें यहां पे साइमल्टेनियसली 2 एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, 2 फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रेलेवेंट है, किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, मेन आइडिया के साथ। नंबर 2, मेन आइडिया का समर्थन करना, मेन आइडिया के फेवर में बोल रहा है। ठीक है, समर्थन करने का मतलब क्या है, स्पीकिंग पॉजिटिवली और इन फेवर ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। स्पीकिंग positively or in favor of the main idea of the passage. Is that fine? लिख लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सुनिएगा, ये अप्रोच क्लैट तक लेके चलिएगा। ठीक है, अब कोई भी मॉक आ जाए यही अप्रोच रहेगी आपकी। क्वेश्चन आए स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग का, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देख के बगल में लिख लेना है होलिस्टिक है या लोकलाइज्ड। ठीक है, होलिस्टिक है तो पैसेज खोलना है। ठीक है, उसका मेन आइडिया निकालना है और 2 पैरामीटर थ्योरी लगा देनी है। लोकलाइज्ड है, पैसेज नहीं पढ़ना है। लोकलाइज्ड है, जितना दिया गया है, जैसा मैंने भी क्वेश्चन बताया नरेंद्र मोदी वाला, बस उतना ही पढ़ना है। उतने को पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस चेक करने हैं। 4 ऑप्शंस में अब लगा देनी है क्या, 2 पैरामीटर थ्योरी। उतने में ही 2 पैरामीटर थ्योरी लगा देनी है जितना क्वेश्चन का कंटेंट है। क्लियर है, समझ आया बच्चों? तो ये है हमारी स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। 2 कैटेगरीज की होती है, होलिस्टिक एंड लोकलाइज्ड। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब मैंने आर्ग्यूमेंट आपको बता ही दिया है। आर्ग्यूमेंट को अकोमोडेट कैसे करते हैं मैंने आपको क्या बताया, आपको आर्ग्यूमेंट बाय आर्ग्यूमेंट नहीं ढूंढना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते थे, बट क्या है, टाइम इतना कम है, आप लोग काफी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, काफी कुछ समझ रहे हो, एंड kudos to you for that। एंड आप ही मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक चीज जो आप लोग पूछना भूल गए, मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी भी प्रेमाइस आ जाए, प्रेमाइस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आप उससे पूछ सकते हैं सर किस वाले का प्रेमाइस ढूंढेंगे, 3-3 4-4 आर्ग्यूमेंट है, कौन से वाले का प्रेमाइस। सुनिए, मेन आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका क्या होगा, मेन आइडिया। मेन आइडिया मेन आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और जो मेन आइडिया के सपोर्ट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेमाइस ऑफ द पैसेज। समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैं एक चीज और आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप लोगों को, कितने लोग आप में से इन्फरेंस की, इन्फरेंशियल थ्योरी आप लोगों ने कहीं से भी मेरी सुनी है या पढ़ी है? इन्फरेंशियल थ्योरी, इन्फरेंस के साथ इंटर रिलेशनशिप। इन्फरेंस भी काफी हद तक इंटर रिलेटेड होता है। इन्फरेंस का कमाल क्या होता है, इन्फरेंस का एक फॉर्मूला होता है। डू यू ऑल नो दिस? इन्फरेंस का एक फॉर्मूला होता है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एन इन्फरेंस। Just write it down. हाँ। The known element plus unknown element. Very good. Known element plus unknown element. Very good. अब ये known element और unknown element होता क्या है, जरा मैं आपको बता दूं। कृपया करके सबसे पहले इन्फरेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला ऑफ एन इन्फरेंस, मैंने स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बता दिया, अब जरा मैं इन्फरेंस बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एन इन्फरेंस लिख लीजिए। इन्फरेंस इज इक्वल टू known element plus unknown element. Inference is equal to known element plus unknown element. अब known element और unknown element के बीच का अंतर क्या है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। known element को हम लोग visible element बोलते हैं। ठीक है, known element को हम लोग visible element बोलते हैं, एंड अननोन एलिमेंट को हम लोग इनविजिबल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, नोन एलिमेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट एलिमेंट बोलते हैं, एंड अननोन एलिमेंट को हम लोग डिपेंडेंट एलिमेंट बोलते हैं। अब इसकी मैं पूरी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं 1 मिनट के अंदर। ठीक है,
सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए पैसेज है हमारा सामने कोई, ठीक है, मैं पैसेजेस का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं उतने टाइम में कुछ और ज्यादा जरूरी बातें आपके साथ कर सकता हूं, कुछ टिप्स शेयर कर सकता हूं, कुछ गाइडलाइंस शेयर कर सकता हूं जो आपके ज्यादा काम आएगी और पेपर में आपकी जान बचाएगी, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कि नोन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सामने एक पैसेज है, ठीक है, सामने जो पैसेज है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है एंड 2024 इलेक्शंस में उनके प्रोस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। उसमें आपको बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल पीएम रह चुके हैं, अब तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। एंड अब यहां पर क्या है, नोन एलिमेंट प्लस अननोन एलिमेंट में, जब मैं नोन एलिमेंट की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, नोन एलिमेंट लिख लीजिए बच्चों। नोन एलिमेंट का मतलब होता है the piece of information or content, the piece of information or content that is directly available in the passage, the piece of information or content that is directly available in the passage, जो सीधा सीधा पैसेज में जितना हिस्सा दे रखा हो, जो हिस्सा दे रखा हो, जैसे मान लीजिए यहां पे पैसेज में दे रखा है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के 4 बार सीएम रह चुके हैं और 2 बार पीएम रह चुके हैं, इतना हिस्सा दे रखा है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे, ठीक है, नोन एलिमेंट का मतलब है द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द पैसेज, ठीक है। अब अननोन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। अननोन एलिमेंट का मतलब होता है द एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, the estimation or approximation made on the basis of the known element, the estimation or approximation made on the basis of known element, मतलब नोन एलिमेंट जो आपका दे रखा है, नोन एलिमेंट इतना ही दे रखा है कि 2 बार 5-5 साल के लिए पीएम रह चुके हैं। अब इसके बेसिस पे कोई एक इन्फ्लुएंस का एग्जांपल बनाए कि मिस्टर मोदी ऑलरेडी 10 साल ऑफिस में कंप्लीट कर चुके हैं 2014 से 2024 तक, एंड अब लगता है कि शायद वो इलेक्शन ना लड़े। तो इसमें कितना आपको नोन दिख रहा है, कितना अननोन दिख रहा है, बताइए। एंड द अदर वन इज अब शायद इलेक्शन ना लड़े। अननोन का मतलब होता है नोन के बेसिस पे आपने क्या लगा लिया, अंदाजा। अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन का मतलब क्या है, अंदाजा। आधा नोन होगा, आधी इंफॉर्मेशन आपके पैसेज से उठाई जाएगी और आधी इंफॉर्मेशन क्या होगी, अंदाजा। आधी इंफॉर्मेशन एस्टिमेशन होगी जो किसके बेसिस पे लगाई गई है, on the basis of the known element. Is that fine? This is your inference. इन्फ्लुएंस ऐसे निकलता है। अब इन्फ्लुएंस में भी मैं एक इंटर रिलेशनशिप बता दे रहा हूं, ठीक है। वैसे इन्फ्लुएंस लोकलाइज्ड बहुत कम होता है, इन्फ्लुएंस में लोकलाइज्ड के चांसेस 10% है, इन्फ्लुएंस आपका होलिस्टिक ही आएगा, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस द लाइक्लीहुड इज टुवर्ड्स होलिस्टिक इन्फ्लुएंस। होलिस्टिक इन्फ्लुएंस में क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। इन्फ्लुएंस अगर सीधा सीधा पूछ दिया जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्वेश्चन आ जाए which of the following can be directly inferred from the passage, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, सीधा सीधा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज जो नोन एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यहां पे मेन आइडिया क्या बन जाएगा बेटा, नोन एलिमेंट। जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग में बताया, मेन आइडिया क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक या ऑब्जेक्ट ऑफ टारगेट, ऑब्जेक्ट ऑफ सपोर्ट। आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो मेन आइडिया को सपोर्ट करेंगे, आप वीकनिंग कर रहे हैं तो मेन आइडिया का विरोध करेंगे। उसी तरह इन्फरेंस की फॉर्मूला के हिसाब से आपका नोन एलिमेंट क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी मेन आइडिया क्या बन जाएगा, नोन एलिमेंट। एंड उसके बेसिस पे आप क्या निकाल लेंगे, अननोन एलिमेंट। उसके बेसिस पे आप एस्टिमेशन ले लेंगे, लिख लीजिए। Abhi, whatever we have discussed by far, how many of you feel comfortable with respect to its overall ingestion
in your mind? कितने लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट लेवल फील हो रहा है with the concepts that are being taught by far? Okay, are you all comfortable? समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने आते टाइम भी बोला था कि हमारा जो मेन आइडिया है वो क्या है? बैकबोन कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से निकालना है, सही निकालना है, तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? मेन आइडिया की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा मैंने स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पढ़ाया, मेन आइडिया। आर्ग्यूमेंट एक अलग से इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसेज के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसने मेन आइडिया के साथ क्या नहीं किया? इंटरलिंक नहीं किया। ठीक है, अब दो टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आता है द ऑथर लीस्ट लाइकली टू अग्री, और दूसरा आता है द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री। ठीक है, इनको इन टाइप के क्वेश्चंस को एक नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए विजिबल कैटेगरी क्वेश्चंस। मोस्ट लाइकली टू अग्री एंड लीस्ट लाइकली टू अग्री, इन क्वेश्चंस को एक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए बच्चों, विजिबल कैटेगरी क्वेश्चंस। विजिबल कैटेगरी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको बता दूं। लीस्ट लाइकली टू अग्री पे अगर जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, लीस्ट लाइकली टू अग्री पे क्वेश्चन आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें ये देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पैसेज में दिया ही नहीं गया है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑप्शन इररिलेवेंट हो जाएगा या ऑप्शन कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। या ऑप्शन क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा या कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। इनके साथ ऑथर कभी अग्री नहीं करेगा। लीस्ट लाइकली टू अग्री के केस में दो चीजें देखनी होती है, जैसा मैंने बताया, या तो इररिलेवेंट हो जाए ऑप्शन या कॉन्ट्रास्टिंग हो जाए। इररिलेवेंट का मतलब है चार में से कोई एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, ऑथर कभी अग्री नहीं करेगा। नंबर 2, चार में से कोई एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए जो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन का बिल्कुल उल्टा है, पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के बिल्कुल विपरीत बोल रहा है। पैसेज में दिया हुआ बोल रहा है कि, ठीक है, संत आसाराम जी भगवान है, और वो बोल रहा है ऑप्शन संत आसाराम जी शैतान है। आ रही है बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पूरी बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट लाइकली टू अग्री। लीस्ट लाइकली टू अग्री का मतलब होता है दो कैटेगरीज इसमें इस्तेमाल होती है, या तो इररिलेवेंट या दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग। अब दूसरी तरफ देखिएगा, मोस्ट लाइकली टू अग्री। मोस्ट लाइकली टू अग्री इजी होता है। पहली कैटेगरी होती है रिलेवेंट कैटेगरी, मतलब जो हमारे पैसेज में दिया गया है वही ऑप्शंस में दे दिया गया है। ठीक है, जो पैसेज में दिया गया है वही ऑप्शंस में दे दिया गया है, तो वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एंड नंबर 2, या ऑप्शन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है, तो भी ऑथर क्या कर देगा? अग्री। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे दो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? विजिबल कैटेगरी। लिख लीजिए इसको। आई होप यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, विजिबल कैटेगरी मैंने आपको इन्फरेंस का मैंने इंटर रिलेशनशिप बता दिया किसके साथ बच्चों? मेन आइडिया के साथ। मेन आइडिया का जो नॉन एलिमेंट है, मैंने आपको क्या बताया? इन्फरेंस का जो नॉन एलिमेंट है, वो नॉन एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? मेन आइडिया के साथ। इज दैट क्लियर? बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इन्फरेंस बताया, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बताया, अभी मैंने आपको विजिबल कैटेगरी बताया। अब मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कुछ लास्ट मिनट्स में, दैट इज असम्पशन। ये सबसे बड़ा शैतान है और ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। असम्पशन का क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तो होलिस्टिक असम्पशन सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, असम्पशन नाम के शैतान को टेम करना, बेल करना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अगर होलिस्टिक असम्पशन है तो सबसे पहले मेन आइडिया ऑफ द पैसेज निकाल लीजिए। असम्पशन का क्वेश्चन कभी भी बिना मेन आइडिया निकाले अटेम्प्ट मत करिए। ये बात सुनिए पहले कभी। असम्पशन का क्वेश्चन
बिना मेन आइडिया निकाले अटेम्प्ट मत करिए, वरना धमाका होगा और धमाके में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे धमाकों से बचना है, मेन आइडिया पहले निकाल लेना है। अब अजम्पशन की डेफिनेशन क्या होती है? अजम्पशन की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। कोई मुझे अजम्पशन की डेफिनेशन बता सकता है भाई? कोई बता सकता है मुझे अजम्पशन की डेफिनेशन? Just reach out to her. What is author thinking before writing the passage? Very grossly incorrect. ठीक है, I'll tell you. अभी ध्यान से सुनिएगा, उसने सही बोला, लिटरली उसने सही बोला, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बोला। बट द थिंग इज टेक्निकल गड़बड़ी है। टेक्निकल गड़बड़ी क्या है आप बताएंगे? अंडरलाइन स्टेटमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, नहीं बेटा ये भी नहीं है, वो तो इम्प्लिसिट हो जाएगा। ठीक है, वो इम्प्लिसिट हो जाएगा। और जो आपने बोला इसको आप अगर इंप्लीमेंट करना चाहो तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं इन्फरेंस का बेसिकली आप बताएंगे। ठीक है, फिर फंस जाओगे। आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन कहां ढूंढोगे? कंक्लूजन मैंने आपको बताया था, दिया नहीं होता है पैसेज में। कंक्लूजन ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कंक्लूजन का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ कंटेंट ऑफ द पैसेज। कंक्लूजन आपको कहीं पर भी पढ़ा नहीं मिल जाएगा। ये ऐसी कहानियां नहीं, किस्से कहानियां नहीं है कि मैं जा रहा था रोड पे, मुझे किसी का 1000-2000 के नोटों से भरा खचाखच भरा पर्स मिल गया, ऐसा कुछ नहीं मिलता है बेटा। ठीक है, कंक्लूजन भी आपको ऐसे मिलने नहीं वाला है कहीं पर भी। कंक्लूजन आपको बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढोगे कैसे, वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब assumption का मतलब क्या होता है लिख लीजिए। assumption technically refers to the missing piece of information or support. Assumption technically refers to the missing piece of support, to the missing piece of information or support. Assumption technically refers to the missing piece of information or support in respect of the main idea of the passage. Assumption technically refers to the missing piece of information or support in respect of the main idea of the passage. तभी बोला जाता है assumption से पहले क्या निकाल लीजिए? main idea. main idea आपने निकाल लिया ना, assumption क्या है? missing piece of information है, मिसिंग पीस ऑफ सपोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे प्रेमाइस पूछा जाए, प्रेमाइस क्या होता है? प्रेमाइस मल्टीपल सपोर्ट्स का 3 या 4 सपोर्ट्स दिए तो चारों को मिलाकर एक बन जाता है पूरा प्रेमाइस। तो एक मिसिंग है, जैसे मान लीजिए एक हमारा मेन आइडिया है, मेन आइडिया को 4 सपोर्ट मिले हैं, तो आप असम्पशन को 5वां सपोर्ट मान सकते हैं जो मिसिंग है। असम्पशन बड़ा फेमिलियर लगता है। असम्पशन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें पहचानेंगे कैसे कौन सा वाला असम्पशन है जो मेन आइडिया के साथ सबसे अच्छे से कनेक्ट हो रहा हो, जो मेन आइडिया के साथ एज अ सपोर्ट कनेक्ट हो रहा हो सबसे अच्छे से, वो आपका आंसर होगा असम्पशन का। इज दैट फाइन? असम्पशन को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मेन आइडिया निकालिए, फिर चेक करिए चारों ऑप्शंस में। पहले तो 2 इररिलेवेंट चले जाएंगे, जो मेन आइडिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे उनको हटा दीजिए। जो मेन आइडिया से सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? assumption, क्योंकि वो किस चीज का काम कर रहा है? मिसिंग पीस ऑफ सपोर्ट टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है। वो किस चीज का मिसिंग पीस ऑफ सपोर्ट? मेन आइडिया का। तो कनेक्ट किसके साथ सबसे अच्छे तरीके से होगा? मेन आइडिया के साथ। आई बात समझ में? बहुत बेसिक सी चीज है। assumption में बस इतना ही करना है कि आपको चेक करना, और assumption का ऑप्शन हमेशा आपको बड़ा फेमिलियर लगेगा। फेमिलियर कैसे लगेगा? क्योंकि मिलियू वही है, एनवायरनमेंट वही है, वहां से गायब किया गया है वो। ठीक है, एक ऑप्शन मान लीजिए 5 सपोर्ट्स है, 4 दिए, 1 हटा दिया गया है, तो जो हटाया गया, हटाया भी तो वहीं से गया है, तो वो हमेशा क्या लगेगा? फेमिलियर लगेगा। एंड हाँ, assumption और inference के बारे में मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, they are never explicitly stated in the passage. assumption and inference के बारे में लिख लीजिए, they are never explicitly stated in the passage. कभी भी आपको 4 ऑप्शंस, कभी भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्फरेंस के, assumption के, और 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सीधा सीधा उठा के रख दिया गया पैसेज से। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी सही भी मिल जाते हैं मॉक में, तो बेटा वो गलत है।
ठीक है, उनको मान के चलिए गलत है, क्योंकि ना असम्पशन उठाया जा सकता है पैसेज से सीधा सीधा, ना ही इन्फरेंस उठाया जा सकता है। इज दैट फाइन? उठाना गलत है, बट हां कभी कभी क्या होता है, एक बदमाशी हो जाती है, पिछले साल भी क्लैट में हो गई थी। ठीक है, पिछले साल क्या बदमाशी हो गई थी, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था जिसमें 3 गलत थे और एक लिफ्टेड था। तो हमारी मजबूरी है, 3 पूरे अंधे हैं, एक आधा अंधा है, एक काना है, काने वाले को ले लो, एटलीस्ट उसका नॉन एलिमेंट तो सही है, लिफ्टेड है तो क्या हुआ, सही तो है, बट बाकी 3 तो गलत है। और एक क्वेश्चन अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, इनकरेक्ट इन्फरेंस। इनकरेक्ट इन्फरेंस का भी क्वेश्चन आता है। इनकरेक्ट इन्फरेंस कैसे पकड़ा जाता है, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया इन्फरेंस का, इन्फरेंस इज इक्वल टू नोन एलिमेंट प्लस अननोन एलिमेंट। ठीक है, अब आपका जो इनकरेक्ट इन्फरेंस है, इसमें आपका नोन एलिमेंट गलत हो जाएगा। इसमें आपका क्या गलत हो जाएगा? नोन एलिमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही नोन एलिमेंट गलत हुआ, नहीं, इन्फरेंस आपका गलत हो गया। पैसेज से उठाई हुई इंफॉर्मेशन, समझ आ रहा है, पैसेज से उठाई हुई इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। अब इसके बाद 2 टॉपिक्स में और आपको बताऊंगा जो पूरे तरीके से मेन आइडिया पे डिपेंडेंट है। एक है आपका प्राइमरी पर्पस, जिसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और एक है आपका टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल ऑफ द पैसेज और प्राइमरी पर्पस कभी भी ऐसे मत निकालिएगा कि आपने सोचा जो ज्यादा बोला जा रहा है वो निकाल ले, नहीं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आपको मेन आइडिया से चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रहा है मेन आइडिया से, वो ऑप्शन आपका प्राइमरी पर्पस बनेगा, और वही ऑप्शन आपका उसी से रिलेटेड आपका क्या बनेगा? टाइटल। इज दैट फाइन? लिख लीजिए, मैंने काफी ज्यादा बोल दिया है। I'll allow you at least 2 minutes to take it down properly so that a coherent fashion of, a coherent pattern of note taking can be established. Ask anything? Assertion and conclusion. Okay. Assertion is a simple statement. Simple statement made with authority. Okay? It's like a claim. And conclusion is your coverage of the passage. Example, I tell you, I have told you that Virat Kohli example. Virat Kohli example, beginning from his early days in the under-19 segment to his days of glory as the World Cup captain and as the current leading light of Indian cricketing world today, उसमें ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स उसकी लाइफ के इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो सारे आप फिट करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे 3 लाइनों के अंदर। 3 लाइन से बड़ा नहीं होगा आपका क्या? कंक्लूजन। दैट इज नोन एज कंक्लूजन। Conclusion is your coverage. Conclusion is pretty much similar to what? Central idea. Is that fine? Anybody else who wants to ask any question? दोनों को कंबाइन कर दो और मेन आइडिया सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ले दो। ठीक है? हाँ बेटा। अच्छा, प्राइमरी पर्पस। ओके, राइट डाउन। प्राइमरी पर्पस इज द डेरिवेटिव एंड मेन आइडिया इज द सोर्स। प्राइमरी पर्पस इज द डेरिवेटिव एंड मेन आइडिया इज द सोर्स। कहने का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूं।
सोर्स है मेन आइडिया आपका सेंट्रल बैकबोन है, ठीक है, और प्राइमरी पर्पस उससे निकलने वाला डेरिवेटिव है। आप मेन आइडिया के थ्रू प्राइमरी पर्पस निकाल सकते हो, ठीक है। अब बहुत छोटी सी चीज है, ऑथर बार बार सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहा है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहा है। अब पूछ दिया गया प्राइमरी पर्पस, सबको पता है कि जो ऑथर का मेन आइडिया है वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और प्राइमरी पर्पस पूछ दिया गया तो उसमें चार में से एक ऑप्शन है टू क्रॉनिकल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ सचिन तेंदुलकर्स लाइफ। तो क्या हो जाएगा प्राइमरी पर्पस, समझ आ गया? नाउ इज इट क्लियर? एनीबॉडी एल्स? No, not in the passage, as the main idea of the passage. Negation, I would have said negation, but in many of the cases, it is like negation. Either you speak negatively about it or you speak opposite. I never say negation, I say opposition. ठीक है, निगेशन का मतलब क्या? निगेशन में 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, एंड आप निगेशन शब्द पकड़ के चलोगे, 4 में से 3 निगेट करना है, कहां से पकड़ोगे? ऑपोजिशन। मतलब मैं इस पे पहले थ्योरी देता था, अगर इफ आई हैड टॉट यू दिस सब्जेक्ट, ठीक है, इफ दिस ईयर हैज बीन टेकन ओवर बाय मी एज the specialist for this subject, I would have taught you a theory that is murder theory, ठीक है। एक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई होती जिसको बोलते हैं मर्डर थ्योरी। मर्डर थ्योरी का मतलब है मेरी हत्या करनी है, कोई इडियट होगा, ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं उसके पास, मेरी हत्या करनी है तो छाती में गोली मारोगे या इधर उधर गोली मारोगे? इधर उधर में तो मैं निकल जाऊंगा, इधर उधर में तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इडियट हो और मेरे पास मौका है एंड आई कैन रन अ मॉक, ठीक है। छाती में मारोगे, कोई मौका नहीं, तो दैट इज द थिंग। ऑपोजिशन का मतलब होता है मेन आइडिया छाती है, गोली मार दो, that is the thing, that is the murder theory. And negation का मतलब आप इधर उधर जा रहे हो, so you have to identify the target. Anybody else? हाँ, बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। व्हाट्स योर नेम? भाविका। भाविका बहुत सारी है, जयपुर में भी है कई सारी, ठीक है। So बच्ची has asked a very nice question and इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है, कन्वर्जन थ्योरी, राइट इट डाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बिल्कुल लास्ट के टाइम पे इतना अच्छा क्वेश्चन, एंड अभी मैं बताता हूँ बेटा, 1 मिनट के अंदर बताता हूँ, रुकिए। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सुन लीजिए इसको। Which of the following if true, लिखिए, which of the following if true would weaken the argument in the passage, question mark। पहला लिखिए, which of the following, comma, if true, comma, would weaken the argument in the passage, question mark। Which of the following, if true, would weaken the argument in the passage, question mark। दूसरा लिखिए, which of the following, if false, would weaken the argument in the passage। ये वाले क्वेश्चंस बहुत डेंजरस है, ठीक है। इसी के लिए थ्योरी लगती है कन्वर्जन थ्योरी। कन्वर्जन थ्योरी समझाने में मैं दूसरे टीचर के 5 मिनट ले लूंगा, ठीक है। दूसरे टीचर को 5 मिनट देर से आना पड़ेगा मेरे कारण, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, कन्वर्जन थ्योरी क्या कहती है? कन्वर्जन थ्योरी का कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। कन्वर्जन थ्योरी, अब सुनिए, इफ ट्रू वाला जो वीकनिंग है और एक इफ फॉल्स वाली वीकनिंग है, मैंने 2 वीकनिंग लिखा थी, सबने लिख ली? हाँ, एक है ट्रू वाली वीकनिंग और एक है फॉल्स। 2 मिनट लाइक्स करने में चालू हो जाता। इफ ट्रू वाली वीकनिंग के आगे लिखिए सिंप्लीफाइड कैटेगरी। इफ ट्रू वाली वीकनिंग के आगे लिखिए सिंप्लीफाइड कैटेगरी, और इफ फॉल्स वाली वीकनिंग के आगे लिखिए कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी। इफ फॉल्स वाली वीकनिंग के आगे लिखिए कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी। ओके, अब कन्वर्जन थ्योरी क्या है? मान लीजिए इसमें एक हम लोग एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं। नाम क्या बेटा आपका? इशिका, ठीक है। इशिका इलेक्शन लड़ रही है, मान लीजिए, ठीक है। ये इलेक्शन लड़ रही है एंड इनके ऑपोजिट ये इलेक्शन लड़ रही है। आपका नाम क्या है? हाँ, महिमा, ठीक है। मैं इनके इलेक्शन का कैंपेन मैनेजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, प्रोपागेंडा सबमिट्स कर रहा हूं, मीटिंग्स कर रहा हूं, कॉन्क्लेव्स कर रहा हूं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं दैट इशिका इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, यू शुड वोट फॉर हर, शी विल लुक आफ्टर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा काम करेगी इशिका, आप इसको वोट दो। और मैं
एक मेन की फंक्शनरी हूं इसके इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने में, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं इशिका के क्लेम को स्ट्रेंथन कर रहा हूं, वीकन कर रहा हूं? स्ट्रेंथन, ठीक है। अब महिमा ने देख लिया कि इशिका खुद कुछ नहीं कर रही है, ये आदमी सब कुछ कर रहा है, सारा इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट ये कर रहा है, तो इसने टारगेट इसको करने की बजाय मुझे कर दिया। इसने ये प्रूफ कर दिया, इसने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि ये जो आदमी है ये नंबर 1 का फेक है, फ्रॉड है, बदमाश है, चोर है, चीटर है, नंबर 1 का, ठीक है, क्रुक है, सारी चीजें फैला दी और सब फैल गई। अब जो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ठीक है, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं इसके क्लेम को स्ट्रेंथन कर रहा था, मैं खुद ही फॉल्स प्रूफ हो गया। तो इसका क्लेम स्ट्रेंथन हुआ या वीकन हो गया? वेरी गुड, यही काम करना है, ठीक है। जब भी इफ फॉल्स लगा दिया जाए और वीकन बोला जाए तो आपको वीकन वाला ऑप्शन नहीं देखना है, आपको कौन सा ऑप्शन देखना है? स्ट्रेंथन। और इफ फॉल्स लगा के स्ट्रेंथन बोला जाए, स्ट्रेंथन वाला ऑप्शन नहीं देखना है, कौन सा ऑप्शन देखना है? वीकन। आई बात समझ में? दिस इज द वे टू गो। नेसेसरीली बी ट्रू। इसमें क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए पूरा पैसेज आपके सामने है, उसमें 4 ऑप्शंस में आपको ये देखना सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन कौन सी है जो अगर सही नहीं होगी तो हमारा पैसेज गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये असम्पशन नहीं होता बेटा, दिस इज नॉट एन असम्पशन। This is a very simple question. You just have to check the most basic of the pieces of information that forms part of the passage and which should be true. Check it. Okay. That was going generic. It should be contextualized. It should include Pakistan. If coverage is there, if that element of coverage is there, then it would be central idea, not main idea. ठीक है, अगर कवरेज कहीं पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो वो आपका सेंट्रल आइडिया ही होगा, मेन आइडिया नहीं होगा। मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रिकरिंग थीम, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? कंक्लूजन और इन्फरेंस में बेटा अभी मैंने क्या बताया, कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन पूरे पैसेज का कवरेज है, इन्फरेंस कहीं से भी बन सकता है, कहीं की भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठा दी जाएगी। इन्फरेंस में केवल आपका नॉर्मली आपका मेन आइडिया ही क्या है, नोन एलिमेंट है, मेन आइडिया के ऊपर हमें क्या ले लेना है, एस्टिमेशन, बस खत्म। इन्फरेंस का फॉर्मूला मात्र बड़ा लिमिटेड है, नोन एलिमेंट प्लस अननोन एलिमेंट, काम खत्म। कंक्लूजन में पूरा का पूरा पैसेज हमें क्या करना पड़ेगा, कवर। इज दैट फाइन? हाँ। असम्पशन और इन्फरेंस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बहुत अंतर है बेटा। असम्पशन में सबसे पहली चीज है, असम्पशन को मतलब क्या कहते हैं, असम्पशन सीधा सीधा तो दिया नहीं होगा, ठीक। असम्पशन सीधा सीधा तो दिया नहीं होगा बेटा, ठीक है, ना ही इन्फरेंस दिया होगा। इन्फरेंस में क्या होगा, आधा पैसेज में दिया होगा और आधे में आपका क्या होगा बेटा, एस्टिमेशन, ठीक है। और असम्पशन क्या होगा, असम्पशन आपका बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। असम्पशन आपको चेक करना पड़ेगा किसके साथ, मेन आइडिया के साथ, ठीक है। इन्फरेंस में मेन आइडिया आपका क्या हो जाएगा, नोन एलिमेंट। क्लियर है? ओके, हाँ। Can we find inference from the conclusion? It's never needed. It's never needed. कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Resolve the paradox. वहां पे पैराडॉक्स में पैराडॉक्स का मतलब नहीं समझना आपको। जो पैराडॉक्स का मतलब होता है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है, वो वाला नहीं समझना है पैराडॉक्स का मतलब। वहां पे रिजॉल्व द पैराडॉक्स का मतलब था रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट, प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर द डिसएग्रीमेंट। वहां पे पैराडॉक्स का मतलब क्या निकल रहा था, डिसएग्रीमेंट। वो क्वेश्चन की भाषा को डिफिकल्ट बना दिया जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। Implicit and explicit assumption, I feel this is simply language.
This is just language. This is complexity of the language and nothing else. It is just assumption is always implicit. Assumption is never explicit. Is that fine? Right. Assumption is never explicit. It's always implicit. With that, try to find the common element of that passage. जिसके बारे में डेटा दिया गया है उस चीज को पकड़ो. ठीक है? That's how. और ऐसा पैसेज की टोन हमेशा क्या होती है? फैक्चुअल. ठीक है? टोन्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए. हाँ. Undermines means weakens. Okay, write it down. Undermine का मतलब होता है weaken. Undermine या शब्द आ जाए countermand. Countermand का मतलब भी होता है weaken. Counter आ जाए तो मतलब weaken. ठीक है? समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए, अभी कोई और कुछ पूछना चाहेगा? Anybody who wants to raise? हाँ बेटा. Evaluate the argument, basic nature of the argument. Evaluate the argument means argument बोला जा रहा है, तो it doesn't mean argument. It means the whole passage. ठीक है? पूरे passage की बात कर रहा है, and पूरे passage की जब वो बात कर रहा है, evaluation means quality. The very basic nature कैसे passage construct किया गया है, किस theme पे passage construct किया गया, वो theme आपको पकड़नी है 4 options. Is that fine? Anybody else? हाँ. अच्छा से. Very good. अगले सेशन में ऊपर ही गए अगली लिखा गया है वो तो हिला के पूरा हिल जाएगा वो ड्रामा थोड़ी बच्चे जैसे होगा इसलिए वीडियो कुछ फिर जाए तो that depends on the options. You will have to judge the type of options. नहीं, both would never be given. Both would never be given. I had seen the questions that were framed on that line. In that, 3 were in one of the questions. 3 were of solution type, positive type, and 1 was of the evaluation, examination type. So examination type was the answer. That was how we went. Okay? And इस type के questions we don't expect much to feature in your CLAT. And the normal type of questions upon which I have tried to throw maximum light are the ones that I have given you theoretical didactions around. For instance, मैंने आप लोगों को जो assumption बताया, ठीक है? Assumption पे थोड़ा focus करिएगा. Assumption कभी भी बिना main idea के मत निकालिए. पहले main idea निकाल लीजिए, फिर assumption पे जाइए. Otherwise assumption को touch करेंगे तो assumption problem करेगा. अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, tones के बारे में थोड़ा सा बच गया था. टोन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. टोन्स का तो आइडिया होगा आप लोगों को. You all must be having some bare minimum idea of tones. टोन्स को पकड़ने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है. वैसे क्वेश्चंस कम ही होते हैं सीआर में टोन्स के. Minimal questions that we minimally if we get a question throughout the sample space of across the sample space of 24 or 25 questions we get 1, not more than that. तो टोन में जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं. We look for the nature of combination of terms that have been preferred for constructing the passage. जिस टाइप के टर्म्स इस्तेमाल हुए, टोन्स 3 ही टाइप की होती है, आप सबको पता होगा. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल 3 टाइप की टोन्स होती है. एंड उसमें भी जिस टाइप के टर्म्स इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले एक पैसेज देखा होगा. एक आदमी पे था रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल दहल. ठीक है? उसकी टोन क्रिटिकल निकली थी. क्रिटिकल क्यों निकली थी? क्योंकि पूरे पैसेज में वो दहल के लिए अच्छा नहीं बोल रहा था. जब आप नेगेटिव टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपका नेचर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस नेगेटिव होगा, तब ऑटोमेटिकली आपका जो पैसेज की टोन है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. और नेगेटिव में 4 टर्म्स में आप कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोई भी क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 4 में से एक ही नेगेटिव होगा. नेगेटिव क्या था? क्रिटिकल. सिनिकल तो आप जानते हैं क्या होता है. सिनिकल तो बेकार था, सिनिकल तो हो ही नहीं सकता. इट वाज क्रिटिकल. क्रिटिकल ऑफ हु? क्रिटिकल ऑफ पुष्पकमल दहल. ठीक है? So before I take your leave, I feel now it's time that I better seek your leave, and whatever we had discussed today, whatever was part of our discussion for this
2 to 2 hours, 5 minutes, whatever we spent together. I think it was fruitful for each and every one of you, and you must have been able to extract something relevantly utility prone with respect to your personal interest centered around CLAT 2024. आप में से अभी हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, आई होप ज्यादातर लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा. Was that clear to each and every one of you? Okay, बच्चों, thank you. So now I take your leave and I turn over the mic to somebody else, whoever will be taking over the stage. Thank you, बच्चों. Thanks a lot. Okay, बच्चों. Right, ready for the next session. So we have learned so far that what you should do while you Yes, are sir. appearing CLAT and you are doing your CR अभी कहाँ से exam. अभी तो 4 बार Now करेंगे. we are calling Megha Ma'am because it is also Saumitra important Sir to का end get हुआ an है, idea Megha of Ma'am का what चालू should हुआ. not be done. Right? So she will teach you about the thing, like what mistake you should ignore. And आज की she क्लास हो will जाएगी give ना, तब you तक some आ जाएंगे. tips 5 to and 6 वाली है tricks for वो the solution स्टूडियोस हो of जाएगी CR उस part in वाले the से. CLAT exam. और May I have Megha साढ़े Ma'am 5 on तक the तो हम आ ही stage, जाएंगे. please? अगर लेट होता है And I तो would like साढ़े to 6 request शिफ्ट you कर all to देंगे. give her a huge round of applause. And definitely, I'm advising you to ask more and more questions. And it will आधा definitely एडजस्ट कर लो. help you out in accuracy and आज के लिए improvement. एडजस्ट कर लो. Thank you so much, ma'am. Okay, students, good afternoon. हाँ Come on, हाँ. loud. Good afternoon. Okay, now show me some wonderful smiles, smiling faces. Come on, show me. I can see everyone. Come on. Not everybody is smiling. Okay, now give a huge round of applause to yourselves. Come on. Now, everybody will look at the left side of the auditorium. Come on. That was not needed. The question was, look at the left side of the auditorium. Come on, turn your faces to the left. Where am I pointing? Look at the left side of the auditorium. Look at the left side of the auditorium. Sir, can you please excuse us? Please. Thank you. Now, look at the left side of the auditorium. Not everybody is looking. What's happening? I am the author of the passage. I tell you to look at the left side of the auditorium. You do that. This is CR. Right? Now, you don't have to see if it's your right or left. Author said, look at the left side of the auditorium. You look in the left direction. Right? This is what happens when you make mistakes while solving the question. You are applying your thinking. What you have to do is apply your understanding of the question. When I say left, you look at the left. Now see at the left side of the auditorium. Come on, you're not looking. Right? This is how you have to solve CR and not make mistakes. Author says left, you look at the left. Author says right, you look in the right direction. Right? Now again, give yourself a huge round of applause for keeping your patience up till now. And now we'll start with the mistakes. Come on. Right? I am sure everybody knows this. Right? What's written on the board in front of you, that all reasoning and all logics should lead you to your dream NLE. That's it. It does not matter if it's right or wrong. The reasoning has to be valid. That's it. Valid according to what? Passage. Right? You are given passages, then you are given questions. Everything has to be valid according to the passage. Because no mistake can be done. I don't think so anybody wants to repeat a year. Right? So no mistakes. Like, why is everybody looking so dull? What's happening? Thank you. Let's start with the first mistake. And this is your favorite, not mine. Your favorite. Overthinking. I just now gave you an example to look at the left
and you were confused, should we look at our left or man's left? But what was the question? Left side of the auditorium. And I'm pointing my hand. That means your thinking has to stop there itself. There is no questioning what the question is asking you. Are we clear? Yes, no, yes, ma'am. Like something, कुछ समझ में आ रहा है? Or are you tired? There is no option of getting tired. It's a marathon. You have to run it, right? First mistake that you're doing is you're overthinking. Those at the back are sleeping. Come on, there is no point of sleeping in a marathon if you can't take benefit from it, right? So first mistake that you're doing is you're overthinking. Like we'll take an example from the mock week. The passage was about Manipur situation, violence. Do we all remember? Yes. And there was a question on course of action, right? And you were very adamant in asking the question why the CM will step down, right? Passage said if CM is accountable for the situation and the question asked course of action, CM should step down. That's it. Now there is no need of that thinking कि ऐसा कैसे हो सकता है. Like होना है तो author कह रहा है होगा. That's it. आप ये जब सोचते हो कि ये होगा या नहीं होगा या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहां पे चला जाता है एक mark. You will obviously mark wrong your course of action, right? So overthinking is something that gets multiplied into another answer which is not even in the option sometimes. फिर वो question छोड़ देते हो, right? So this is your favorite mistake of overthinking. What I have come across while solving your doubts is this problem. Over and indirect logic, like unrelated things. I tell you कि बाहर देखने हैं बादल. You are telling me बादल से बरसात होने वाली है. Unrelated to the passage. There was a passage in your mock, last mock, about revolution, green revolution, which was needed in India, right? And he was trying to tell you how prices are affecting the agriculture and how yields are affecting everything. And the question was assumption for new green India, green revolution in India, right? And the option was the price situation and everything is unique to India. Passage says it is unique to India. It is unique to India. You don't have to use anything unrelated to that passage कि ऐसा कैसे हो सकता है. अगर passage में author कह रहा है कि you will have to look into a new green revolution situation, you look into it, right? The mistakes आपको पहले भी बताएं. We're just taking a summary of all the mistakes so that you know कि ये mistake हम में से कोई ना कोई तो करता है. And there is no one, I think, जिसको ऐसा लगता है कि वो mistake नहीं करते. Is there anyone who has a full-proof strategy of solving CR? Like कभी गलत होती ही नहीं है strategy. Is there anyone? Raise your hands. If there is anyone who can short say that this is my way of solving CR questions and it never goes wrong. Anyone? Anyone? No? Then we'll briefly take your mistakes, right? This was your second mistake, right? Your next mistake, changing options. How does this sound? A, B, B नहीं C, फिर वापस A. You do that. Don't make those faces कि हमने तो कभी किया नहीं ऐसा. Someone told me they have lost 10 marks because they changed the options. And 10 marks is what? You're out of the list. Right? What's the goal? What's the end goal? In the final list, you want to see your name in front of that NLU of which you have dreamt. Right? This is your favorite mistake, another favorite mistake, changing options. And then you give the right logics as well. This is the beauty of this mistake. You have all the right logics, but that answer is wrong. Can anyone tell me how this happens? Anyone? Like your logic is right, but your answer is wrong. Why? Like what goes wrong? Anyone? Okay. Next. Lack of confidence in what? In your reasoning? In your option? Okay, anyone else?
Correct. Okay. Fine. Your option is wrong, your answer is wrong, but your reasoning is right. The only missing link over here is your reasoning is not valid for the passage. You're thinking everything right. Your proper use of concept, of examples, of everything that we have read so far. Problem is that logic is not valid for that particular passage. Right? Your validity of logic is important for marking an option. Right? Next mistake. This one. You can all read. And some of you may know this problem. कि ये मुझे आता है. It's about I love French history, and if the topic is about French history, I know it. This is my favorite example of solving this problem of preconceived notions. That you think that meditation is the best thing that can be done for improving your concentration. And maybe you come across a passage which gives an account that meditation for that particular day was the worst thing that the author has done. Can it happen? Can someone write an account like this? Anyone can write. If it's your first day of meditation and you're a very angry person and you're sitting for meditation, you will be more angry that day. You will be sitting like, आज meditation करेंगे 10 minutes and will be a peaceful person the next minute. ऐसा नहीं होता. Like, author कह रहा है. I'm not saying. It's the author. It's someone's account which is saying that they did meditation on the first day and it was the worst day of their life. And now your preconceived notion is that meditation is only and only beneficial for you. Plus the passage is saying that the first day was worst, second day was better, third day was much better, and fourth day they got the hang of the meditation thing and now they're feeling better. Right? But the passage is talking only about the first day. But now in your mind you have this fixed idea that meditation is only beneficial and you skip the passage. Right? Do you know how to skip the passage? You take an overview of the words and you're like, ठीक है, passage यही कह रहा है. And you solve the questions. And now the person who has prepared the question will always put that one option जो आपकी भी thinking से match करता होगा कि meditation is beneficial. You mark all the 5 questions as it is beneficial. So you cannot skip reading the passage. You will have to read it word for word and then understand it as what it says and not what you think it should say. So if you love French history, still you will have to read it like a naive person and not a person who is very proficient in the subject. Right? Next mistake. Assuming that you don't know the passage. It has happened with many of you that you did the mock week where the first passage was related to economics. Right? I think you all remember all the mocks, right? You remember the mocks, right? Yes? Okay. So there were some mocks where CR started with the passage of economics. Right? And you were like, economics तो आती ही नहीं है. Economics आती नहीं है, and then questions हम कैसे ही कर सकते हैं? That's fine. वो एक passage नहीं आता. It's okay, you don't know economics, you don't remember the basics of economics, it's fine. But why have a spillover effect on the remaining paper? Right? एक passage नहीं आता, snap out of it. आगे चलो. You know, not every passage is unread, unfamiliar to you. Maybe you know that passage, right? पर आपको करना है कि वो स्पिल करना है उस पे. दूध यहाँ गिरा तो आगे तक खराब करना ही है सब कुछ. Why? See, what I am trying to tell you about your mistakes is your programming of your mind. आपने ऐसा सोच के रखा हुआ है कि अगर मैं ये गलती करती हूँ या करता हूँ, I can't change. It's not like that. It's simple programming कि अगर ज़्यादा सोचते हो तो CR में ज़्यादा नहीं सोचना. ऑप्शंस चेंज करते हो तो दिमाग में इस चीज को बैन कर दो कि ऑप्शन चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेंज करने से नेगेटिव मार्किंग तो पक्का है क्योंकि वो सही होगा ही नहीं आंसर. लाइक अगेन, अगर एक पैसेज नहीं आता, मूव ऑन. व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? 5 क्वेश्चंस ही तो नहीं होंगे. CR is for 24 questions. You can still
take a hang of those 19 questions. So if you stop doing this mistake, and how you will do is, abhi 30 days hai, to train yourself again, to not make these mistakes, right? This particular mistake ki आता है, नहीं आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, option समझ नहीं आता है, right? You can still train your mind. 30 days are more than enough to acknowledge कि हम गलती करते हैं और अब गलती नहीं करनी है, right? Next mistake. Poor time management. Have you ever heard yourself saying कि time कम पड़ गया, पॉइंट छूट गया, या फिर CR का एक पैसेज स्किप हो गया, या लास्ट में किया था and we could able to do only 2 and 3 questions, right? If the question paper is of 120 questions, don't you think you deserve the 120 at least attempt to read? At least you can read. आपका अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो CR तो नुकसान लेता ही लेता है, राइट? ऑफ कोर्स एक पैसेज तो मिस हो ही जाता है. Remaining paper also suffers. Why? Spillover effect. If one thing goes wrong, वो आगे तो कैरी फॉरवर्ड हम करते ही हैं कि अगर ये नहीं सही किया तो ये भी गलत किया. These are common mistakes. सबको पता है, सब करते हैं, टाइम एंड अगेन इसको रिपीट भी करते हैं. Problem is, if you take note of these mistakes and train yourself not to do this, CR is very easy. CR is very easy because you have to only understand what is written in those 350 or 400 words. That's it. You know the concepts, you have revised them time and again. Still अगर लगता है कि concepts में problem होती है, put a weekly revision for it, right? हर Sunday give a revision for 1 hour of basic concepts of CR, right? What the word means, right? That which you can do. NLU के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. It's like the end goal is NLU and not to pass the day. कि चलो आज का दिन तो खत्म हुआ, आज की आधी मैराथन तो खत्म हुई. Like that's not the goal. Goal is to learn something, apply that, and to get into the dream NLU, right? I can't emphasize this enough कि last में result आना चाहिए. As सागर सर भी कह के गए थे, कुछ भी कर लो. Point is 2 घंटे में जो पढ़ोगे ना वहाँ पे question, passage, options, that will matter. मॉक में बहुत अच्छी स्कोर है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वहां पर जाकर अगर 2 घंटे में उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर दिया, that is what is needed. That is what is needed and luck comes with hard work. इतना तो मतलब अज्यूम कर ही लो, जब assumptions इतना करते हैं तो इतना तो अज्यूम कर ही लो कि your hard work will fetch you that luck that is needed to score that last mark जिस पे NLU मिलेगा, right? This was all the yarn part, right? ये knowledge आपको चाहिए थी. I compiled a list of mistakes. This is fine, but we need to apply this. मेहनत में करूँगी. I'll do the needful. I'll give you a passage right here, right now. Only the passage. You will only have to read it. Read it in 4 minutes maximum. I'll give you the time. कोई timer, कोई घड़ी कुछ नहीं लगाएंगे. I'll tell you when to stop reading. Like 4 minutes is more than enough, according to me. ठीक है? वो passage पढ़ेंगे, and then we solve some questions, right? I'll ask the question, I'll give the answer. It's a party about you, me, and your mind, not your hands today. No A option, B सही है, C गलत है, D सही है, इसका ये, इसका वो, no. Today we'll only read the passage. You will read the passage, so you'll know what am I talking about, right? And then we'll solve the questions, right? Now I'll ask someone to distribute the passage to you, and then we'll solve that passage, okay? Is there any mistake that you think that you make and you want an answer for that? I think this is the most repeated mistakes that you do. Time and again. 4 दिन ठीक रहते, then you again go back to the same mistakes. Is there anything else do you think that this is your mistake? Anyone?
Anyone? No? हम तो गलती करते ही हैं, मैम निकालती रहती थी, मेरी गलती है, मुझसे हुई गलती, आपकी गलती निकाल दी, बट ये तो गलती करती हूँ, ये तो मानना पड़ेगा कि सीआर में ये मेजर मिस्टेक्स हैं, राइट? There is nothing else written on the paper except those 425 words. Exact 425 words are there that you have to read, and I've given a source as well. Right? कि अगर वापस पढ़ना हो the whole passage, you can read it. You read the passage in 4 minutes, and then we'll solve some questions. No need of pen or anything. Simply this paper and you. And we'll solve the questions. Everyone has the passage? No. Right? The last bench. The last. Everyone? No. Okay. Start reading it. Take your time. You've not done. Sir, मिला नहीं passage. जिसको नहीं मिला paper, raise your hands. Everybody wants to read that passage. Yeah, सबको मिल गया passage? Everyone? Start reading it. Let's say read the passage, which is good for CR, right? Next point is, did you get it? समझ में आया? How many of you have understood the main idea or something about the passage? Like something. Wow. Right, Vijay. किस को समझ में आया है कि what the passage is trying to tell you? Just one or two people can tell me what the passage is trying to tell you. If someone can answer what the passage is trying to tell you. Anyone? It's not an exam. It's not an exam of who is best or who has better understanding. It's simply find the passage. Let me understand your reasoning, and then I'll tell you what you have to understand in it. Right? Just one person. Just one. Yes. Very good. This is the gist of the passage, and I hope you have not read this before. Right? Good. See, you have read it within 4 minutes. If even one of you have understood the gist of the passage, it's more than enough to tell कि ये आपके level का तो है, right? आप voice out नहीं कर रहे कि आपको क्या समझ में आया, that's a different thing, right? But what we'll do is
You have read the passage. Now I'll tell you what the passage is telling you. So you simply focus on what I'm telling you and what are the questions and how you have to approach those questions, right? Now this passage in gist is trying to tell you that science and philosophy both are needed to understand consciousness, right? We'll take it paragraph by paragraph if you want that, or we can simply take the gist. What is it? See, the first paragraph is trying to build up the case for two theories. IIT, it's not the institution, it's integrated information theory, right? And second part is of global workspace theory, right? Comparison between two. Some are favoring one theory, some are favoring other. And now why these two theories are discussed is to understand consciousness. Then comes the points of the proponents. Like what? That we have our own consciousness, right? Consciousness is what? Experience. You can see this podium, like everybody can see it in the same size and shape, right? That is consciousness. You can express your experience, like you've seen somewhere what a podium looks like, right? And now you can give the word to this thing that it is called podium, right? Next, it is trying to tell you that the theory IIT, right, integrated information theory, has some axioms. They are converted into postulates to explain this consciousness, right? Where it says that you need a physical system to understand the consciousness. Are we getting it or? आ रहा है समझ में? It's the build up. अभी आ जाएगा, इसका gist भी आ जाएगा. I'm taking paragraph wise, right? कि इसमें क्या समझना था, right? Next, it is trying to tell you what the opponents of IIT are trying to tell you, right? हर चीज का कोई against तो होता ही है. तो इस IIT theory की जो against है, what are they trying to tell? They are saying that we need to separate science from philosophy to understand consciousness, right? It's in the fourth paragraph, okay? And why they are saying this? कि इनको अलग करना है. They've given this line because funding comes from science. अगर आप किसी चीज को फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर उसका फंड कैसे आएगा? लेकिन नीड मनी ना to do performance of the experiments. And if consciousness cannot be explained, तो उसको समझने के लिए who will fund it, right? So opponents are saying don't include philosophy in it because उसको समझने के लिए there is no funding. Are we getting it? Right? Yes, no, okay, what? It's a tough paragraph. It's a tough passage. This is your worst nightmare. कि ऐसा भी passage आ सकता है पेपर में. इससे आगे तो समझ में आए हुए हैं, लाइक मॉक्स में कर चुके, या फिर यू नो द आइडिया ऑफ द पैसेज कि भाई कोई इकोनॉमिक्स के बारे में, कोई एनवायरनमेंट के बारे में. दिस इज अ मिक्स, दिस इज एन ओपिनियन अबाउट अ फैक्ट, राइट? एंड देयर इज नो कंक्लूजन टू इट. Only author suggestion in the last paragraph that we need to mix both, right? And in between it is trying to explain you how consciousness is not a scientific issue, because science explains you observable phenomenon, right? Also giving an example of one thing which cannot be observed, such as fundamental particles, right? You can observe them in experiments, but you can't see them with your naked eye, right? So it is making a case where consciousness is not only about science. Okay, and last it is trying to tell you that consciousness is not something which is explained in public. It's a private thing. Like if I give you a situation, everybody will have different experience. When you give a mock, no two persons' feelings are the same. You look at the mock, you feel different. Someone is anxious, someone is very confident, someone does not care, someone was halfway gone through the paper and ab nahi ho sakta. You know, mixed feelings. So consciousness is what? Private, and it is not something which is discussed publicly. You cannot have an experiment where you mix A plus B and you have C. That is science. And what is consciousness? Something which is done privately. In the last, the author is trying to tell you that both things should be discussed together. Right? There is no conclusion, just a suggestion. Right? Now, explain this passage so that when the next time question comes in the slide, you can at least have an idea of what the passage is trying to tell you. Instead of guessing, now you know what the passage is. And so our purpose will be more served. Right? So we'll start with questions, give your answers, and it's not a competition. Right?
We want to win on 3rd December and not today. So simply give the answer, it will boost your confidence that you know the answer, and then we'll discuss every option, right? Why the wrong answer is wrong. It may be right, but not valid. And CR is about validity of reasoning. There is no right or wrong. You can have your own reasonings, but the reasonings should match with the passage, which is validity, right? First question. It is about assumption. Can you read the question? Try solving the question, right? How many are for A? A option. किसको लगता है सही आंसर है? Assumption है. A. Okay. B. C. Okay. D. No one for D? No, you are for D. It's okay. Is there anyone else for D? No? What is an assumption? We'll take it briefly. You know, we have understood the concepts in the morning itself. We'll take it briefly what Sir has explained. Assumption is what? While starting the writing of the passage, जो author ने सोचा, right? That is assumption. He assumed something, he or she assumed something. I wrote this complete article. That is assumption, right? We look at the options. Right answer is B. Okay. That IIT proponents are motivated by their philosophical reflections on consciousness. Right? Those who do not agree, because you have marked A, C and D as well, we'll take options one by one. Right? First option. Contrary to the passage. This is what the author does not like. C. Option is the primary purpose of science is to explain publicly observable phenomena. Right? It's in the passage. It's in the passage. But his intention is not to tell you this. He has assumed something. Now this is a fact. This is a fact. This is not a something opinionated. This is a fact. This is not his assumption. Plus also it is stated in the passage. Right? We'll follow the concepts to solve these questions that this assumption is a fact plus it is stated in the passage. Right? Next is consciousness can be fully understood through scientific experimentation alone. Don't look at A, B, C, D. They're deliberately written wrong. Today it's not about A, B, C, D. It's about this statement. Read this line. I explained that author is suggesting you need both. It is mentioning alone. Right? Can you see alone? It defeats the purpose of saying that you need both. It is an assumption. Right? तो लिखने से पहले he decided कि you need both science and philosophy to understand the consciousness. Are we clear? So alone here is an extreme word. When you understand the concept of extreme words, here it is alone is the extreme word. That means extremely it is trying to remove the other part of the passage. That is why this is not the answer. Right? Next. Again, publicly observable phenomena are the only valid subjects of scientific inquiry. It's again a fact in the passage. True as well. But not an assumption. This is not what the author is trying to convey through the passage. I thought something that this consciousness can be explained through science and philosophy. And I have not mentioned this, right? This is saying only about one part of the passage. Hence, if I am assuming this, I am defeating the purpose of writing the passage, right? And then we have the option this. IIT proponents are motivated by the philosophical reflections on consciousness. C.
This assumption is not for the whole passage. Are you getting the question? This is where you go wrong. This line comes from the first 3 paragraphs of the passage. Can you identify this much at least? You have your passages with you. You can see that the first 3 paragraphs are discussing about IIT, right? And there it comes, some favor IIT, right? And now those who are favoring IIT, they discuss the philosophical part of consciousness, right? So while writing those 3 paragraphs, this was the assumption, right? So now can you, are you convinced that assumption is not stated and it is something which the author has in its mind before writing the article, passage, paragraph, anything? Are you getting my point? A loud yes would be better. See, this is monotonous exercise, I know. It does not excite you, I know. But CR is not for excitement. CR is for marks, right? You have to fetch marks with your reasoning. Do we all agree? A loud yes? Yes, ma'am. You have to make your reasoning valid. That's it. And those who have plugged in the earphones in their ears, can you please remove? It's disrespectful. I can still see someone wearing earphones. Come on, that's your choice. Fine. Let's move on. Are we clear with assumption? Can you solve the question now? This is the answer. And this is the clear point to the next question. Are we clear with the assumption part? Or do you still have any doubt? You can still ask. Next question. Best supports means strengthening question. It is asking you to give a strengthening argument for IIT's reliance on philosophical reflection is justified. A strengthening argument for this proposition. Can you find the answer? Yes. What's the answer? A. Right. All those who are for A, raise your hands. Good. For B. For B, anyone? Anyone? You can have your own reasons, right? There is no right or wrong. It's about validity. B, okay. For C. C, anyone for C option? Thank God. For D? For D, okay. So we have successfully eliminated at least option C, right? That's good. Now let's look at the options. Answer is A, okay? Strengthening means supporting whatever the author is saying, right? Whatever author has claimed, your answer should support that same claim, right? You do not change the idea of the author. It has to back up the original proposition made by the author. We look at the options. Option B says IIT's axioms can be only validated through scientific experimentation. If you want, you can look into the passage where it says especially about axioms that they cannot be explained by science alone. Keep the paper in hand so you can look into the passage again, right? Where it says it is not only about science. And here you can use the concept of alone. It is an extreme word and passage is advocating for 2 subjects. So alone here can be your means of eliminating this option. Next option. Most scientists believe that philosophy has no place in the study of consciousness. It is unrelated. When author is saying about both the subjects and you pick someone's option saying that most scientists believe that philosophy has no place. Now this is not related to what the author is saying, right? This is an indirect logic. If there are 100 scientists and 50 are saying about science and philosophy should be together, you will say they should be together. You don't have to discuss those 50 scientists
who say something different from the author, right? Because it's not in the passage. Okay? If the passage is talking about someone's rights, then you don't take those people whose rights are not mentioned. Like we did that in mock, that mullahs, Iran and protesters. Do you remember that question? The one option was most Iranian women are satisfied with the situation, right? And one option was Iran mullahs are open to dialogue. Do we remember that question? Yes, ma'am. That passage was talking about those people who are making protest and not about those who are satisfied with the question in hand, right? जिनके हक मिले हुए हैं नहीं मिले हुए उनकी तो बात हो ही नहीं रही, जो धरने पे बैठे ना उनकी बात पैसेज कर रहा है, right? So your option cannot be those people who are satisfied. Look into the situation, what the author is trying to show you. Same as look at the left side of the auditorium, not your right or your left side of the auditorium, right? So this option, this is which? Last option. Philosophical reflection has historically hindered scientific progress. Now this is a weakening argument. Can you see the words historically hindered? That means आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि philosophy has helped science, right? So this is a weakening argument. We have to support the argument that science and philosophy can work for each other. Are you getting my point? Can you solve this better now? Yes, ma'am. I'm hoping the answer is yes, because this is the easiest way I can tell you. Where you can use the concepts, where you can understand the passage and eliminate the options. Using concepts and your valid reasoning. Right? So the correct answer is, many scientific theories have also incorporated philosophical foundations. This is what the author is also trying to tell you. That if you take your science question and begin it with philosophy, it has been happening before also, it can happen now also. So it is supporting the claim that IIT's reliance on philosophical reflection is justified. It is not talking about the end result, right? There is no conclusion कि फायदा होगा या नहीं होगा. It is talking about the beginning. Like if I want to base my science question on philosophy, I can do that. That's the question, that's the answer. There is no need of extra thinking कि philosophy से अगर science के answer निकलते तो फिर experiment क्यों करना, right? Now this is overthinking and overanalyzing. Look at the question. The argument is in the question that science can be used for this IIT reliance, and option is also saying that पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी इसको try कर सकते हैं. There is no talk about the end result, right? End में हो सकता है philosophy does not serve the purpose, right? But the author is not ending the passage there. It's a simple suggestion कि दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, right? आगे clear? Start with the next question then. Is it too fast for you, or do you want some doubts to be cleared? Are there any doubts? I think your doubts are like options are not clear, right? Or not explained. I think this helps, right? Now take the weakening question. This is your favorite, again your favorite mistake to do. Weakening. Can we solve the question now? How many are in favor of A? In favor of A. Raise your hands properly. Okay. B. B option. How many of you think B is weakening the argument? C. Good. Very good. C. Now D. Okay, now we can have a discussion. Those of
said about D. Like option is scientific inquiry should be limited to phenomena that are publicly observable. One of you, can you give a reasoning? Why did you pick D? I'll tell the right answer later. First, we'll discuss the options. D. What is the argument that you have taken? Like you're mixing two things, right? Author is saying different things at different times. What is that one argument which is getting weakened by this option? You can have the mic and give your answer. Anybody else? You can keep your answers ready. On that scientific inquiry should be done for consciousness. You're reading the option. Reasoning. Because the author says that the conclusion of the author's argument is that scientific inquiry as well as philosophical inquiry should be done to observe consciousness, but consciousness is not a publicly observable. Where is the conclusion in the passage? And the argument of the author says that both of these things should be done. Okay. Anybody for a counter argument to this reasoning? It's not that difficult. Okay. Reasoning for option C. Just a second, Secretary. The main idea is that IIT and science and philosophy should work together, but these prove that IIT only can done work. Anybody else for any other reasoning? No? We'll take the options one by one, and answer is A. Answer is option A. That some scientists argue that consciousness is entirely a result of physical processes. This is the best weakening argument. We'll take options and then we'll see if you're agreeing with the reasoning or not. We know this, right? Weakening is minor disagreement or an alternative to author's claim, right? I'll give you a brief before we start this options. See, there are two ways of weakening a answer, right? One is negating it, right? There is something written in the passage and you put a not to it, right? Right. Favorite example that iris scanning is reliable method for face identification, right? You take some facts from the passage and you put reliable, change it with unreliable. That some studies claim that this method is unreliable for face identification. This is what I've done. I've simply reversed it. Reliable for unreliable kar diya, right? This is your correct answer only and when all the other three options don't match at all, right? You will pick this option only and only if all the other three are ridiculous options, right? CLAT also takes it as right, but only when all the other three don't make sense at all, right? So you don't take something from the passage and put a not to it, right? Okay. Second is, what we are solving questions with is, you pick a minor disagreement. If author is making a claim, you pick one slight disagreement with the author. That's it. This is how you make a weakening argument. You don't cancel the opinion, right? If author is saying that you need something to understand something, put a star to it, right? Star terms and conditions apply, right? Don't cancel the opinion of the author. That's always a wrong answer. Okay? Looking at the options, B. Option B. How many of you raised hands for B? अब तो मतलब कोई कोई हाथ उठाएगा. It's okay. Option B is discussing author's book provides a comprehensive solution to the consciousness problem. There is simply a mention of the word book in the last line of the passage. You can check that he write a book to discuss this relation, right? There is no claim where it says that the book is ready
and the book is providing a comprehensive solution to the problem. Do we all agree? If the information is not in the passage, you cannot use it until and unless all three options don't match. Right? You asked the question about outside information. Right? Outside information is used only and when all the other three options don't make sense at all. And also you put a not to author's claim when all the other three options don't make sense at all. Right? If the options are very good, they are suitable enough to solve the question, you will take only slight disagreement with the author's claim. Right? And B option is unrelated. It's not discussed in the passage at all. Next option. Recent experiments have proven conclusively that IIT is the correct theory. How? Like, why would you pick this option when author is in a dilemma? This is contrary to passage's intention. Author is saying nothing conclusively. And no, if you're trying to say that a experiment has proven this, author is not looking at that experiment in the passage. Right? Author is not clear that any experiment can conclusively give an answer. What's happening? Silence, please. What are you fighting for? What has happened? Look at the question. Put horse blinders, right? Your concentration should be like this, or nothing else, right? Focus on the question, focus on the reasoning, right? Solve the issue, right? Are we clear with option C? That you cannot take such an outside information, yes? मैम अगर ये कॉन्ट्रेरी है तो वीकन क्यों नहीं कर रहे? I just now told you कि author ने कुछ लिखा है, उसको उल्टा करके उसको weakening argument नहीं बनाना जब तक ये better option नहीं है. This is contrary to passage means what the author is saying उसको आपने उल्टा कर दिया, मतलब conclusion में नहीं आया. आपने कह दिया conclusively ये बात है, right? Reliable, unreliable, non-conclusive, conclusive. You are reversing what the author is saying. That is not a weakening argument. ये सिर्फ तब आंसर होता जब कोई और अच्छा आंसर नहीं होता, राइट? जब तक कि सारे ऑप्शन से हार नहीं जाते तब तक ये ऑप्शन नहीं लेगा, ठीक है? मतलब हारना, सही ऑप्शन पे ध्यान दो, राइट? लास्ट ऑप्शन इज सेइंग साइंटिफिक इंक्वायरी शुड बी लिमिटेड टू फिनोमेना दैट आर पब्लिकली ऑब्जर्वेबल. अगेन जो ऑथर कह रहा है कि हमें साइंस इंक्लूड करनी है कॉन्शियसनेस में, आप कह रहे हो कि साइंस को सिर्फ फिजिकली ऑब्जर्वेबल फिनोमेना पे जाना चाहिए. एक और चीज मेंशन है, साइंस डिस्कसेस फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट? एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल. फिर दिस इज अगेन अगेंस्ट द ऑथर्स क्लेम. यू डोंट पुट अ नॉट टू व्हाट द ऑथर इज सेइंग जब तक कि तीन ऑप्शंस पूरे गलत हैं, राइट? ऑथर का क्लेम उल्टा करना इज नॉट वीकनिंग, right? सिर्फ उस situation में you can put a not when other three options don't match, or they are strengthening, or they are simply facts, they are not arguments, right? So you don't put a not to it. Right option is some scientists argue that consciousness is entirely a result of physical processes. This is from the passage. But the key word here is some scientists and not the author, right? मैम इन ऑप्शन डी वो भी तो ऑथर के क्लेम का अपोजिट था, तो वीकनिंग में D is a fact. ऑथर ने नहीं कहा. सी, even without reading the passage, we know this information. You don't have to be from the science background, right? ये information हमें पता है कि scientific inquiry can be for anything.
anything that you can see and for things that you can't see, right? अब यूनिवर्स से स्टार्ट करोगे तो भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, और इस गेट के अंदर कोई एटम है वो भी आपको दिख नहीं रहा है. यू आर सीइंग अ वुडन डोर, राइट? यू कांट सी व्हाट इज इनसाइड ऑफ इट, right? But someone can have an analysis of this wooden door, right? So this is what authors claim. Author's claim is author's opinion, right? And author is trying to make an argument for studying science and philosophy together for understanding consciousness. That is the argument. And if some scientists agree that consciousness is only a physical process, then what they are doing is they are rejecting author's claim of adding philosophy to the question. What is author's argument? That you need science and philosophy both to understand consciousness. This argument is saying that some scientists are saying that only consciousness is only a result of physical process. That means you don't need philosophy. Only minor disagreement. ये ऑप्शन सिर्फ साइंस को कह रहा है कि साइंस से चीज कर लो, फिजिकली इसको कर लो, फिलोसफी ऐड मत करो, राइट? ये ऑथर के क्लेम के साथ में माइनर डिसएग्रीमेंट है बस. ना हमने उसके ऑप्शन को हटाया कि भाई साइंस भी नहीं है, फिलोसफी भी नहीं है, ना हमने कोई ऐसा क्लेम लिया जो ऑथर ने डिस्कस नहीं किया. दिस इज द वीकनिंग आर्गुमेंट कि दिस इज ओनली अ माइनर डिसएग्रीमेंट विद ऑथर्स ओपिनियन. देयर इज नो कंक्लूजन टू इट. इफ द ऑथर सेज वी वांट टू स्टडी बोथ, अभी अगर कोई कहता है, इफ समवन सेज वी नीड टू स्टडी सीआर एंड लीगल बोथ फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, and someone comes up and say कि नहीं पर सिर्फ लीगल अच्छी करने से भी तो मार्क्स आ जाएंगे, राइट? यू आर नॉट निगेटिंग कि सीआर जरूरी है या नहीं है, यू आर सिंपली स्टेटिंग योर ओपिनियन कि सिर्फ लीगल से भी तो मार्क्स आ सकते हैं, राइट? दिस इज अ गुड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, नॉट निगेटिंग एनीथिंग, नॉट सिंपली रिलायबल का अनरिलायबल कर दो, राइट? कीप दिस नॉट वाली सिचुएशन ओनली व्हेन अदर थ्री ऑप्शंस आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, राइट? आर वी क्लियर? Anybody else for the doubts? You can still ask, you can still revise the concepts. Yes? Which option? D. D is saying should be limited. It's contrary to the passage. अब ये मत पूछना कि अगर A नहीं होता तो D होता क्या आंसर? What? How partially we can? Author's claim is you need to study two things to understand something, and A is saying study only one. Physical process is what science if you line है ना. हाँ. Option C कह रहा है recent experiments have proven conclusively कि IIT is the correct theory. ये argument author का है भी नहीं. पहला तो author ने तो दो theories discuss करी और दो ऑथर ने कहा आईआईटी को स्लाइट एडवांटेज है. देखो सेकंड लाइन में लास्ट लाइन लिखी है, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, स्लाइट डिसएडवांटेज एडवांटेज टू आईआईटी. आईआईटी डज नॉट merely justify through scientific experimentation, it also involves philosophical reflection, right? तो ऑथर ने तो खाली ये क्लेम किया, आप कह रहे हो recent experiments have shown conclusively. कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा वो उसके. इस पैसेज में कंक्लूजन नहीं है ऑथर की बात का, उसका सजेशन है कि दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि दो थ्योरीज में से आईआईटी का स्लाइट एडवांटेज है. वो कुछ तो बात समझा रहा है फिलोसफी को लेके, कुछ समझा रहा है साइंस को लेके. ये लिखा है इसमें. और लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है ना, देयर वाज आर्ग्यूएबली अ स्लाइट एडवांटेज टू आईआईटी. तो मतलब ऑथर ने ना इसको क्लेम को गलत किया कि आईआईटी गलत है, तो अपन इसको रिवर्स करके कहते हैं कि नहीं आईआईटी सही है, राइट? पैसेज का कंक्लूजन ही तो नहीं है. ऑथर सजेशन दे रहा है कि कॉन्शियसनेस को समझने के लिए वो बुक लिखेगा कि साइंस और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन में कैसे रिलेशन हो सकता है. ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है. ऑथर इस पैसेज में कोई भी चीज के फेवर में कंक्लूसिवली नहीं कह रहा, राइट? कि सिर्फ साइंस से आंसर आएगा या सिर्फ फिलोसफी से आंसर आएगा. लास्ट में लिखा गया ना बुक लिखूंगा, बुक लिख के बताऊंगा कि इनमें क्या रिलेशन है, राइट? I explore how such a partnership could be achieved. वो लिख के बताएगा, मतलब पहले देखेगा, पढ़ेगा, फिर उसी कंक्लूजन पे आएगा, राइट? Inference. Now, can you infer something from the passage?
Can you infer? See, that is why इस पूरे passage में I am not asked a conclusion question. There is something that can be inferred. You know, from paragraphs you can infer something कि author क्या कहना चाहता है, and there is no conclusion to the passage. Can you solve the question? Yes. What's the answer? B. How many are for A? A. Can you infer A? No? No one can infer A? Thank God. B option. Straight hands, like confident hands. You can infer B? Positively? No doubt in that? Good. C. Can you infer C from the passage? Can you? Straight hands for option C. Okay. Option D. How many of you can infer option D from the passage? Option D. Anyone for option D? Okay. Okay. D. Okay. Those of you are saying about D. We'll take D first. How? How did you infer option D? Last में एक line लिखी है कि author will write the book. Option is saying author's book suggests that science and philosophy are incompatible. We'll take the options one by one. D वालों को वापस पूछेंगे. First option. We know inferences. What do we understand from the passage? That is inference. What is it that we are understanding, right? Assumption is जो author ने सोचते वक्त लिखा था. Inference is जो उसको पढ़ के सही समझ में आया. That is inference, right? We'll take options on them. IIT axioms are entirely based on scientific experimentation. No. It's in the line. Third paragraph. Properties which it claims. Can you read the word claims? Third paragraph, second line, third word. Claims are required for a physical system to embody consciousness. Can you anywhere read scientific experimentation? Inference है वो तो शब्द दिखना चाहिए ना passage में. It's the wrong, right? And of course अगर extreme word वाला concept लगाना है तो there is written entirely, right? Next, consciousness is publicly observable, but it requires special equipment to detect. How many of you said this option? See. How? Equipment is something known. Last line of the first line of the second last paragraph. Instead, consciousness is known about privately through the immediate awareness each of us has of our own feelings and experience. What special equipment can there be to check my feelings right now? You are feeling something. What special equipment can there be to know that you are frustrated, angry, disappointed right now with the marathon? There cannot be any special equipment to check your feelings, right? It's coming from the passage. It's not our understanding, it's coming from the understanding of the passage, right? Next option. D is like, there is no information, so you can't infer. If you have trouble solving this, eliminating this D option, you can take it like this. It's written, author's book suggests that science and philosophy are incompatible. If you are forgetting that author की book mentioned ही नहीं है, at least you can see incompatible. Author is inconclusive about this. उसने नहीं कहा है what is the compatibility. He's saying he'll check the partnership in his book, right?
तो इनकम्पैटिबल तो एक कंक्लूजन है, तो ये तो इनफर हम कर ही नहीं सकते, राइट? Are there any second thoughts about this question, option, anything? Or will I simply get these blank faces? इसके doubts नहीं होंगे, like this is for today only. If you are thinking of writing the doubts कि कल पूछ लेंगे, there is no कल for this. If you have a doubt, ask it right now so that everybody else can also benefit. वो चतुर रामलिंगम वाला मत करो कि मतलब हमारा ही फायदा होना चाहिए, अकेले में पूछेंगे, अभी पूछ लो. हाँ, B option में देखो, I'll tell you. Option this. Read the lines I mentioned. This much effort I've done. कि मतलब दिमाग ही ना लगाना पड़े, पढ़ो. First paragraph, second and third line. What has the author written? IIT does not merely justify itself through scientific, right? The first round. First para, last two lines. That is what I'm saying. Some backed up particular aspects of global workspace theory. And what is the option saying? दो theories हैं, दोनों के लिए experiment perform किया गया है. यहाँ लिखा है there was arguably a slight advantage to IIT, right? तो मतलब जो बची हुई अगर there are 100, वो arguably like 60 हुआ, उसको ज़्यादा advantage है. 40 are arguing for global workspace theory. This is what you can infer from this line, and it is not stated. It is talking about IIT, and option is talking about global workspace theory. Like, and some backed up particular aspects of global workspace theory. Or like, what is the extent of thinking in this? See, inference is paraphrased. What you have understood from the passage, you will use your own words, right? पर बात तो वही होगी ना. Inference and assumption में यही problem है कि assumption is in the mind of the author. आपको check करना है कि उसके दिमाग में उस समय क्या था. That is assumption. Inference is उसने जो लिख दिया, वो पढ़ के आपको क्या समझ में आया. If I give you this passage and I tell you to, give a summary of this in 50 words, you will use your own words, but you will use the author's claim, right? This is a paraphrased line. Inference is what? Coming from the passage, exactly what the author is saying. तभी तो समझ में आया है ना कुछ. Infer किया ना आपने इसको पढ़ के, right? That is inference, right? Okay. Next question. Anyone for that now? हाँ. मैम ऑप्शन बी करेक्ट कैसे वो समझ आया, बट सी कॉन्ट्रेरी कैसे क्या वो समझ नहीं आया. Just a second. This? हाँ. Are you sure this is your question? मतलब मैं डरा नहीं, I'm just asking. Is the half part not clear? Okay, what are you feeling right now? When I'm questioning you in front of all these, what is your feeling? Right? Can I have an equipment to check कि आपकी feeling इस समय anger की है और happy है? Can I check? There cannot be a special equipment to detect your feelings and experience. Whatever experience you will take from this marathon is your own. There cannot be any special equipment to check it. There cannot. मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई चीज physically present नहीं है और आप उसको equipment से detect करोगे. How? झूठ है. क्या पे स्पेशल इक्विपमेंट जो रॉन्ग हाँ वही रॉन्ग लिया है हमने. This is contrary to the passage ना last week था ना. उसका consciousness is about privately. You will have your own feelings, you will have your own experiences, and no one can check it to tell you कि वो सही है या गलत है. If you are happy about the marathon, nobody can tell you कि happy क्यों. और कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता कि वो happiness सही है या गलत है. यहाँ पे लिखा है कि crucially to accept that our knowledge of consciousness is not limited to what we can glean from experiment is to accept that we need both science and philosophy. So like we need something to
can you still infer from these lines that there is an equipment to detect? But there is something to detect now. I am not saying, okay, I'll read the lines again. It is saying we can glean from experiments. Do you know what are philosophical experiments? Like, this is outside discussion, but still, if you want to check someone's feelings, experiences, do you think there can be an instrument for that? Like, this is not from the passages, tell me. मतलब कुछ भी इस लाइन का मतलब निकालो. Can you like tell कि इसमें कोई instrument होगा? Like, you have your feelings, you can tell me, you can have therapy, right? You can have a doctor, psychiatrist हो सकता है जो आपकी feelings experience सुन रहा है, right? And then we can match it कि भाई किताबों में क्या लिखा है or what we can understand from the हाँ. मेरे फेवर में कह रहा हूँ. See, this is where you use extra logic. वो जो mistake बताई थी ना, write it down and put a big cross on that. जो लिखा है वो लिखा है, right? And I'll tell you, you agree or you don't agree is not author's problem. I told you अगर left में देखना है तो left में ही देखना है. आपका right, आपका left is not author's concern. Author says sun rises from the west, you say yes. You don't question कि east है या west है, इसको पता नहीं है, west ये no. Author says it rises from the west, you say yes, right? Author ने कह दिया, critical reasoning यही है कि जो author ने कह दिया, you understand it, you use the understanding in the options. You use your extra logic, and then we have this again discussion of mistakes. Put those mistakes in big bold letters. घर है, उसमें कमरा है, दीवार पे जाके ये मिस्टेक्स लिख लो और उस पे बड़ा क्रॉस लगा दो कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. एंड स्पेशली अगर कोई चीज मेंशन है, टेक इट एज इट इज, राइट? विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोर्स ऑफ एक्शन. Read the words properly. You have the passage in your hand. If you have forgotten कि उसमें क्या लिखा है, एक बार वापस पढ़ लो passage, right? Read the words carefully. नहीं तो फिर क्वेश्चन करोगे कि मणिपुर का सीएम क्यों स्टेप डाउन करो. Done with the reading of the question. Options. What's the right answer? C. All for C? Yes. All for C? Yes. Brilliant. Do we need to discuss the other three options? No. But we will discuss. We will. Right? कोई ऐसा है जिसको A, B और D में लगता है आंसर? You can raise your hands. Be confident. बाकी गलत भी हो सकते हैं. Even I can be wrong. Any three? Other than C, do you have any other course of action? And there is this important highlight. Just because you are able to answer the questions, it is not an easy passage, right? आपको आंसर मार्क करते वक्त लगता है कि अगर मुझे एक बार में आ गया तो आंसर पक्का गलत है, इतना इजी तो दे ही नहीं सकते. पहली बात तो ये इजी नहीं था पैसेज, राइट? दूसरा, इसमें बाकी में भी आपको आंसर अगर निकालनी है तो निकाल सकते हो, राइट? बट दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आ गया, क्वेश्चन इजी था, ये बात दिमाग से निकालिए. इट इज अ टफ क्वेश्चन, टफ पैसेज विद नो कंक्लूजन, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए कि इजी था तो हम सबको आ गया आंसर, और ये कंपटीशन में मत रखना किसका आंसर तो सबको ही आ गया, राइट? सबको थोड़े थोड़े मार्क्स मिल जाने चाहिए. नेक्स्ट, कोर्स ऑफ एक्शन इज व्हाट? Whatever suggestion you are giving, वो जो passage में question उठा था, वो बैठ जाना चाहिए. Dousing the flames that are rising in the passage, right? Whatever question author ने छोड़ दिया, that is the course of action. उसका next step, right?
वो बात यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए. First, focus exclusively on scientific experiments to understand consciousness. Now can we understand कि इसका course of action क्यों नहीं हो सकता? Everyone? Yes, sir. Loud yes. Yes, sir. Can you tell, is there anyone who can convince that this is the course of action? No. कि ये करने से problem solve हो जाएगी या passage एक conclusion पे आ जाएगा? Can anyone? Any argument for this option? No. This is contrary to the passage. Passage is saying both. Right? Next. This is okay now. Funds and support theories. Why not B? Why useless? Scientific के लिए कोई पैसा देगा उसमें philosophy ऐड करेगा. Someone answers science का experiment उसमें philosophy use करके और answer निकाल दो. Okay, entirely based on food. Next. Funding is mentioned. करवा दो पेपर में. कोर्स ऑफ एक्शन बताना है. सीएम को स्टेप डाउन क्यों करवा रहे थे? नहीं करवाया ना. पेपर में ले लो, फंड करवा दो. हाँ. Okay. That's a valid argument. सही और गलत नहीं होता सीआर में. वैलिडिटी होनी चाहिए मैचिंग टू द ऑथर्स ओपिनियन. ऑथर क्या कह रहा है कि दोनों चीजें चाहिए. तो फंड अगर साइंस को करवा लोगे तो देयर इज ऐसे देना पड़ता है कि पैसे कहाँ गए. राइट. सो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन. लाइक यू हैव पेड विद योर फंडिंग मनी तो बताना पड़ेगा ना कि फिलोसोफर को भी दिए थे. राइट. So this is not even possible. And also it is not in alignment with author's situation. Author को अगर ये solution दोगे तो फिर तो passage आपको समझ में नहीं आएगा. Right? D. Prioritize publicly observable phenomena in scientific research. इसका consciousness से लेना देना नहीं है. Right? Purpose will not be served. ये तो होता ही है. अगर कोई publicly observable phenomena है उसकी तो scientific research होती है. Right? So your soup to nuts is what? You give the answer this and problem is solved. The need for both science and philosophy is needed for answering the consciousness का question. This is author's suggestion as well. And now you can say कि ये तो passage में लिखा था, फिर ये क्यों लिखा? It is mentioned in the last paragraph that author is saying we need both and he'll write a book. तो ये क्यों लिया? Okay, all the three are eliminated. But still अगर कोई better option होता तो what can be a better course of action for this? Science. Can there be a better course of action for this? अगर option होता. Like author's book is published. Right? Giving a proper partnership between science and philosophy in understanding consciousness. Right? I'm giving this example because this course of action is mentioned in the passage. Right? You had one question from your mock week. Again, Manipur violence. There was a question that opponents will meet the president. Do you remember? Yes. And they'll give that something findings. Right? We did not mark that. Why? That was mentioned and next course of action was given that CM should step down. Right? If a course of action is already suggested by the author and there is an option to suggest next to it, like उसी की बात जहाँ खत्म हो रही है वहीं से course of action अगर आ रहा है, that can be an answer. अगर एक option होता the author's book is published confirming the relationship between the two subjects to understand consciousness, तो वो इसका आंसर हो सकता है इसकी absence में, right? और इसकी presence में. If a course of action is suggested by the author himself or herself, then the next step to it, proper,
जो अगर उससे मैच करता है then that can be a course of action. Okay? Are we clear? अगर इसमें एक ऑप्शन होता बुक पब्लिश हो गई है विद अ कंफर्मिंग रिजल्ट तो वो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, राइट? नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया. नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन. This is an easy answer now. We've discussed everything. Now you can tell what is the central idea. What's the answer? B. B? Yes. All for B? Yes. कोई A भी है? No. Someone for A? A? No one for A? Good. For C? No one for C? Right? Give a reasoning for this. See, lack of publicly observable phenomena hinders the study of consciousness. You can study now for publicly observable phenomena. सेंट्रल आइडिया जो होता है ना, हम लोग सुबह ही पढ़े हैं, सौमित्र सर ने बताया कि सेंट्रल आइडिया जो होता है वो पैसेज के अलाइनमेंट ऑथर के पूरे क्लेम का एक बंच होता है या फिर मेजर चंक होता है. तो सी ऑप्शन जो है Then why not D? D. Anyone for D? C or D? No, we are done with C. I'm asking D. Sure. Totally no one is for option D. कोई तो एक someone for D. किसी को तो लग रहा होगा ये सेंट्रल आइडिया. Sure. Right? D आंसर हुआ तो भी चेंज नहीं करना है किसी को. Very sure. नहीं, ऑथर परेशान भी तो हो सकता है ना लास्ट में कि अब इसके कॉन्शियसनेस प्रूव करोगे, इससे अच्छा तो सेपरेट ही कर दो दोनों को. Nobody wants to change the answer? पक्का? Good. But we'll discuss the options. Central idea is author's intention of writing that passage. Right? जो वो बताना चाहता है वही आपको समझना है. Option A. Contrary to the passage, someone is in favor of IIT, someone is in favor of global workspace theory. Next. Lack of publicly observable phenomena hinders the study of consciousness. This is misrepresentation. Why this reasoning यहाँ पर इसकी ये क्यों है? क्योंकि author ने जो कहा है ना, उसके words tweak कर दिए यहाँ पे to make it into a central idea. Right? This is not what the author is trying to tell you. Okay? Contrary is opposite बात कह देना. Misrepresentation is opposite तो होती है लेकिन उसी के words उसी के खिलाफ use करना. Right? Next. Science and philosophy should be entirely separated. तो author फिर ये passage नहीं लिखता ना. बेचारा क्लेम यही कर रहा है कि दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं, कॉन्शियसनेस का आंसर मिल जाएगा. राइट? Are we clear at the back? This is not an easy passage. अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर आ गया तो ये easy है, no. डिफिकल्ट भी बना सकते हैं अगर लग रहा हो तो. No? All agreeing with the reasoning? किसी के पास में कोई alternative argument है, you can give and listen. मतलब इसको negate हम कर देंगे, but still you can give your reasonings. No one? Absolutely no one. सबको समझ में आ गया? ऐसे करके बताओ. Yes तो बोल नहीं रहे. Clear? Okay, thanks for the thumbs up. Good, thank you. Answer is, this is the gist of the passage. The consciousness is a subject that necessitates both scientific and philosophical approaches according to the author. Right? ये language is asserting something, but from the point of view of author. Author ने लास्ट में अगर बुक लिखने की बात करी है तो वो ये बात मान रहा है कि मुझे तो ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे साथ में to answer the question of
consciousness. Hence this language, right? You can take necessities as extreme word, पर यहाँ पर extreme word का concept नहीं आएगा, right? क्योंकि last line में author has decided to write a book to solve this partnership. इसका मतलब उसके हिसाब से ये दोनों चीजें necessary हैं. Hence you cannot use the concept of extreme words यहाँ पर कि necessary क्या होता है. Author तो अभी तक दोनों की बात कर रहा था. Necessary का मतलब है कि वो अपनी book में इसको use करेगा. So this is the central idea of the passage which the author is trying to explain it to you. Right? Now we take the last question. Okay? Your favorite question. Title of the passage. What do you think is the appropriate title for this passage? ऐसे कैसे मतलब? All for it? Yes, ma'am. Surely? Yes, ma'am. Why not see? There is a battle between two theories. Are you sure? मतलब ए के अलावा मतलब और फॉर इट कितना जल्दी समझ में आ गया. Why not D then? Consciousness cannot be observed. Your feelings are not observable. यही तो बता रहा है वो. Why not D? Why not D? मेन आइडिया थोड़ी निकालना, टाइटल निकालना. Title is based on the main idea. I don't know how much you remember when you're done with the mocks. I'll like to give an example from the blast from the past. एक mock किया था जिसके अंदर one line was that we need climate change, and the rest of the 2 paragraphs of 300 words were discussing how WHO is making efforts for climate change. कुछ याद आया? वो क्वेश्चन टाइटल का तब भी एक हादसा था कि इसका ये ऑप्शन कैसे हो. डू यू रिमेम्बर दैट? नहीं. उसका ऑप्शन WHO था भी नहीं. उसका आंसर था वी नीड क्लाइमेट चेंज दैट इज सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर. वो मॉक दे के भूल मत जाए. You can remember what you have marked, na? What you have studied. How many of you remember this question? You tell me that. Rest have gone blank. फिर कैसे कहते हो कि ये पैसेज तो हमने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक हमें आता है, याद ही नहीं आपको? What? एक क्वेश्चन की पैसेज पूछा मैंने, वो पैसेज याद है? It was on the left side of the paper. 300 words. One line about climate change and everything about WHO. And the question was title of the passage. अब जो फोन चला रहे हो ये निकाल ही लो, फिर ये कहाँ पर गिरा था? थोड़ा याद रखो what you have done. That passage can be repeated anywhere. You can be lucky जो पढ़ा था वही आ जाए वापस CLAT में. Okay, I'll summarize it. The passage was about efforts of WHO for climate change, right? And you had to answer the title. We picked an option where option was telling that climate change for sustainable future is needed, right? And not WHO's efforts for climate change. Why? Because author was trying to convey to you that sustainable climate change developments are needed by giving an example of WHO's efforts, right? Here, what is the author trying to tell you? Extrapolate the information from that कि अगर वहां पे WHO आंसर नहीं था and climate change and sustainable development was the answer, तो इसका आंसर क्या होगा? I'm very good at confusing. अब बताओ इसका आंसर क्या था? Why not D? Why what? But consciousness is unobservable, na? What you are feeling is cannot be observed by us publicly.
passage is saying about science and philosophy because consciousness cannot be observed physically. अनऑब्जर्वेबल नेचर लिखा है, साइंस कैसे करेगी उसको? अनऑब्जर्वेबल कोई चीज साइंस कैसे करेगी? फिलॉसफी करेगी ना. बट ऑथर इज आल्सो ट्राइंग टू डिस्कस कॉन्शियसनेस का डी. कभी तो उसने कहा अनऑब्जर्वेबल नेचर है कॉन्शियसनेस का, तो डी कर लो कि भाई लाइक वही तो कह रहा है ना, तभी तो उसको पढ़ने के लिए साइंस एंड फिलॉसफी चाहिए. व्हाट डी इज कवरिंग ऑथर्स डिलेमा कि भाई कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व तो नहीं हो सकती फिजिकली, तो उसको साइंस और फिलॉसफी दोनों चाहिए, तो व्हाई नॉट डी. लाइन बट ही इज थ्रू आउट कंफ्यूज्ड इन द पैसेज ना, तो टाइटल ही क्यों देखा? Okay, anyone else for any other reason? Why not B and why A? For A, the author is repeatedly. What where? The author is repeatedly Huh? all about the author say about science and philosophy. This is the main idea of the passage and title based on the main idea of the passage. I have another example. Do you remember again from the mock? We had sports reforms and WFI controversy. Now you remember that passage? It was rather interesting, huh? That you remember that. Again we had a title question there. You picked WFI controversy. I said the answer is indicating towards sports reforms. Now tell me, A or D? A. Sure. Anyone for D? Anyone for D? The problem is consciousness, then why not tell you in the first, like, title itself? Title is the mirror of the passage. Why not tell you in the title itself that I'll be discussing my dilemma? Why not D? D? How many of you are for D? Now for D. Like, raise your hands. For D. Come on, tell me for D. Straight hands. Come on, tell me. For D? Sure for D? Are you convinced that D is the answer? Now don't change the options. A is the answer. Are you getting my point now? This is how you convince yourself for D. What I was doing right now was what? Convincing you to mark option D. I gave the right logics. This is author's dilemma, this can be the title, right? I gave you right logic, so option D can be correct. Why did you change them? Because I convinced you. This is how you convince yourself. वो A करके D करते हुए फिर क्या करती? A मैंने लिखा था, I'm out. Wrong. Are you getting how your mind plays with you? And I have plenty of time to play with you. You don't have that much time. Trust your intuition, your gut feeling. You've read the passage, you've solved 6 questions. Yet I could convince some of you for option D. Like, we can discuss the options, we will. But are you getting my point that this is how you play yourself? 120 minutes में से अपने आप को आधे टाइम तो confused ही कर लेते हैं. Like, you don't have that much time. Time is precious and you use that time to change your options. Right? And this is how you convince yourself कि A नहीं D होगा. And I'll tell you why D is not the answer and A is the right answer. Author is presenting his intention, central idea, everything, strengthening, weakening, सब पढ़ के क्या पता चला? Unobservable nature of consciousness is a part of the passage. It's his problem. Main problem यही है. लेकिन लास्ट में अगर बुक लिखने का आइडिया बना लिया तो he is convinced that the audience should know कि consciousness के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं. There is no word such as necessary, important, integral, nothing.
Simply use of important words. The science and philosophy of consciousness. Look at first option, this one. The limitations of experiments in studying consciousness. If you're writing a popular article, no one uses this title. You never present anything negative in the title. This is how the title is decided. You don't put any shortcoming in the title itself, right? क्योंकि आखिर फिर जो जनता है वो पढ़ेगी नहीं कि इसमें कमी निकालने वाला, because you know it कि this article will be towards what, not side of the argument, right? तो उसको पढ़ने का क्या मतलब? Next, the battle between IIT and global workspace theory. There is no battle. Battle is a very extreme word. या तो पूरे पैसेज में इन दोनों थ्योरीज को ही एक्सप्लेन किया गया होता, right? From the start to the end, right? Then this could have been your title. This is not. Are you getting it? Yes, ma'am. Right? There is no battle. Someone did experiments on both and they had their result. There is no battle between both. Unobservable nature of consciousness. If you're marking B, you missed the train. Right? Author किसकी बात कर रहा था and you mark what? Author का basis यही था कि was in the question consciousness observe कैसे होगी, but last में लिखा है कि I'll write a book to figure out the partnership. And now if he wants you to read this article, तो वो इसका title क्या देगा? Main words के साथ में देगा, right? The science and philosophy of consciousness. Science, philosophy, consciousness. यही इसका central idea था. यही words थे जिसके around पूरे 425 words revolve कर रहे थे, right? If you read this as the title, you'll know कि passage के अंदर क्या है. You'll have a slight inkling to what the author will be discussing in the next few paragraphs. Do we all agree with this option? Sure. Anyone for any other argument? Counter argument? Anything for strengthening or weakening my argument? Anything? Sure. Any other doubts? Any other? Anything else you want to ask? Anything else? I simply don't have answer for one of your doubts. I tried finding an answer for the question. Someone pointed out to me this. I don't know how you made that mistake, but that mistake is very major one. Can you guess what is that one mistake that I have not discussed, but it is like costing you your marks and finally your goal? What is that one mistake? Time management I've discussed. You will have to go with the time, right? 120 questions, 120 minutes. You have to go with 1 minute thing. What is that one thing that you face continuously and it costs your marks? Who said OMR? Brilliant. You fill your OMR wrong. ऊपर नीचे कर दिया, fill नहीं किया. Like, how can that be a problem, a mistake? उसे गुनाह कहते हैं. That's a criminal offense. I don't know, criminal, it's an offense. You're filling your OMR like so carelessly that you're not, I don't know how you make that thing wrong. मतलब overthinking तो समझ में आता है कि हाथ में नहीं है, पेन तो हाथ में होता है. मतलब OMR वाली गलती तो मत करो, right? I don't know, किसी ने कहा ही था कि मतलब they filled the OMR wrong. I'm using the pronouns they, right? There's no him, her, she, anyone. You can see कि मतलब किसने ये कहा था, but someone said कि OMR गलत होती है. It does not make sense, but write it somewhere कि OMR सही से पढ़नी. Like your roll numbers and your answers can't go wrong. इतनी मेहनत for that complete year is not for making mistakes in the OMR, right? Like अच्छा नहीं लगता ये mistake करते हो. Like do classy mistakes. Do give an argument wrong. Choose the title wrong. ठीक है, वो समझ में आता है कि मतलब कोई दिमाग लगा के गलती की. OMR का मतलब दिमाग ही नहीं, right? OMR that you fill on 3rd of December in those 2 hours will make or break your career. I hope everybody is serious about that, right?
मुझे नहीं लगता इतनी देर से कोई टाइम पास के लिए बैठा है सिर्फ, राइट? यू वांट द कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर सो दैट यू फेच द मार्क्स, सो दैट यू कैन हैव योर कॉलेज, राइट? राइट? OMR करना है, राइट? OMR, right? Are we clear on this? You can have all the arguments right in the world. You can like किसी को भी हरा सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट में, पर अगर OMR नहीं बनी ना, फिर गलत है, हर तो ऐसे OMR, right? Fill your OMR sheet with the right options. Don't change the options. वहाँ अगर A टिक कर दिया पेपर में, fill that only in your OMR. Don't change the options and OMR, right? Because I don't know, बाकी में सब्र का मुझे पता नहीं है, but मेहनत का फल is your dream endeavor, right? Your hard work will fetch you your dream endeavor. That of which I am very sure, right? I don't know about patience, you are droppers as well. I don't know about your patience, but I know your hard work will take you to any one of these, right? Right? Like, do you trust your dreams? अच्छा देख रहे हो, अच्छा देख पिक्चर देखो, it's on Google, मतलब देख लो, right? Anything else you want to ask? Anything else for your doubt which is not related to I don't have an empty slide इसके पीछे focus? Anything else or are we done? What? आज के what? नहीं. उसको पढ़ते हुए ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे. You know, घोड़े को दौड़ते हुए देखा है कभी ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं. They never see who is racing against them, right? You read every passage of the CR as it is. Familiar, non-familiar is कुछ नहीं होता. आप साइंस बैकग्राउंड के हो, I give you a chemistry का article, you won't be able to read it. I can give you a passage from a journal, नहीं पढ़ पाऊंगा. There is no such thing as you're familiar, you're not familiar. There is no such thing as that. और अभी मैंने पूछा था WFA controversy और WHO याद है? उसमें लिखा हुआ content, do you remember? It's only simply a word that you recognize. GDP, deflator, पढ़ लिया और लगता है कि हमें economics आती है. It's not about that. Passages are opinions with some facts sprinkled in it. So it's not about what you know. It's about you go 350 words, 400 words पढ़ो, understand what the passage is saying, mark the answer. That's it. There is no such thing as familiarity or not. Right? Any other doubt? I'll tell you where this is coming from, that hands wala passage. In the last mock week, we had a passage where it was discussing evolution and then it came to hands. Sabka favorite White House passage. It was discussing about evolution of hands. I've told you, extreme option का concept is used where it works. उस passage के अंदर author directly discussed evolution and straight came to hands. He did not even mention other sense organs, right? So if author is writing something about a particular organ, इसका मतलब उसका assumption उस समय क्या है कि उसके understanding में evolution में everything was related to hands. That is why we picked most wala option. And then there were two. Last option was theism and Darwinism are mutually exclusive, right? उसने passage लिखने से पहले ये assume नहीं किया. वो passage लिख रहा था hands के बारे में. He made मतलब build up किया अपना argument using evolution. So he used two theories, right? His assumption was not while writing the passage कि इन दोनों को मैं अलग-अलग prove करके रहूँगा, right? His assumption was to take something such as hands and build the argument around it. That is why वहाँ पर most वाला option सही था. इसीलिए मैंने आज इसमें लिखा है कि यहाँ पर extreme का concept use कर सकते हो because author के claim के against जा रहे हो. That is why you can use extreme वाला concept. If the option is saying most and author is saying कि most यही important है, you mark the option as most, right? Concepts have to be used very carefully. They're flammable substances. मतलब आप उसको use करके अपने आंसर में डाल रहे हैं,
ब्लास्ट आउट, वो वाली बात है। अगर एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगाना है तो यू विल हैव टू सी इफ द ऑथर इज टेकिंग एनी साइड्स और नॉट। साइड्स नहीं ले रहा तो मोस्ट तो कोई बात वो कहीं करेंगे। एवोल्यूशन वाले पैसेज के अंदर हैंड्स को लिया हुआ था, पूरा डिटेल में हैंड्स एक्सप्लेन करके, इनफैक्ट द नेक्स्ट पैसेज वाज आल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, राइट। तो उस पैसेज में उसके लिए हैंड्स ही इंपॉर्टेंट थे इन दैट होल एवोल्यूशन का प्रोसेस। दैट इज व्हाई द ऑप्शन वाज हैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, राइट। Anything else? No? Yes, no, no, yes. Anything? All clear? A loud yes would be better. Yes, sir. मैंने देख लिया। हाँ, ऊपर anyone? Clear? Yes. What? आकाश माइक है भाई। Stem in the question. अच्छा, stem of the argument. अच्छा, I thought. Sorry, my mistake. हाँ, I assumed something wrong. हाँ, what? Ma'am, sometimes new stems used to come, so how to tackle them? How come new stem arises in a question? मतलब रूट्स अगर पैसेज में तो वहीं से स्टेम आएगी ना, अलग से स्टेम कैसे आएगी किसी क्वेश्चन में? हाँ सर, माइक। मतलब ऐसा कोई होता है कि सीआर में जब स्टैंडर्डिंग और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब एक ऑप्शन ऐसा होता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और एक होता है कि इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाए मतलब इन दोनों ऑप्शंस में? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट पैसेज इज सेइंग। अगर पैसेज ने हिस्टोरिकल किसी चीज को टच किया है या फिर एक्सपेरिमेंट्स को टच किया है, रीजनिंग विल कम फ्रॉम दैट, ठीक है। अगर दोनों ही नहीं दे रखा then you will have to read the wordings of the option, right? वो हिस्ट्री में सिर्फ बुक्स की बात कर रहा है या हिस्ट्री में कोई जर्नल है, कोई एक्सपर्ट है, उसका स्टेटमेंट है, क्योंकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर व्हाट दे आर प्रूवन, राइट। तो इफ यू बैटलिंग इट अगेंस्ट अ हिस्टोरिकल फैक्ट, तो उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर इन द ऑप्शन, राइट। इट कैन नॉट बी सिंपली कि हिस्ट्री में ऐसे लिखा है। लाइक इफ अगर कोई पैसेज हिस्ट्री का आता है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल्स and there is a conclusion to it, you will have to look into the options which is discussing history कि किसी एक historian ने इसको negate किया हुआ है कभी, right? तो scientific पहले तो ये option साथ आते नहीं, scientific experimentation history आज जैसे था ना historically hindered, right? It was talking about experiments only कि मतलब पहले जो experiments हुए हैं they were never backed on philosophy, एक option था, and one option was कि experiments आज जो हुए हैं they are reflective of philosophical theories as well, right? Options के wordings पढ़ने पड़ेंगे to give this answer कि इसको choose करना है या इसको, and it depends on the passage. अगर scientific passage है, reasoning will have to come from scientific option, right? Philosophical option है, it can come from some philosophers as well. ये wordings भी सही हो सकती है, right? तो ये if you have something as proper कोई question है, you bring that in, right? कल फिर ले लेंगे doubts, right? Anything else you want to address? Yes. Parallel reasoning. Parallel reasoning is analogy. Whatever the author is trying to say, like किसी में अगर parallel reasoning लेते हैं, author is confused about something. I'll give you parallel reasoning. You want to solve CR questions. Now you are confused between whose strategy is right. I want मतलब teachers के नाम you know. There are three teachers. They give you three reasoning to solve a question, right? चलो दो ले लेते हैं, तो यहाँ पे साइंस और फिलोसफी है, दो टीचर्स के नाम ले लो, and you want to solve a CR का question. अगर ऐसा ऑप्शन है, that is parallel reasoning, right? That is an analogy that is coming from the passage. एक टॉपिक है, दो ऑप्शन है उसके पैसेज में, उसी जैसा ही अगर कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में, that is your answer. Like you had one फिर याद नहीं रहने देते blast from the past, नहीं, that is a typical one. But if you if you want to answer this parallel reasoning, whatever option says exactly what the passage is saying, वो answer होता है, like words change कर दिए, same चीज है एकदम।
It depends on the option. Like अगर इसके अंदर साइंस एंड फिलोसफी आर नीडेड फॉर कॉन्शियसनेस, राइट? तो अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो एग्जैक्टली इससे मैच करता है, दैट विल बी योर आंसर. एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज टू बी सेम एज द पैसेज. बात वही होनी चाहिए, शब्द बदल जाने चाहिए, राइट? एनीथिंग एल्स? What? Title should cover everything that the author tries to tell you. अगर उसने पूरे पैसेज में सिर्फ कोई प्रॉब्लम ही डिस्कस करी है, कोई सोल्यूशन बात नहीं, कोई अच्छी बात की ही नहीं, यू टेक द टाइटल एज ए प्रॉब्लम, राइट? अगर इसमें कॉन्शियसनेस को नेगेटिव कुछ करके कहा हुआ होता है, यू टेक दैट एज ए टाइटल, राइट? यू विल हैव टू पिक द टॉपिक, द टाइटल which exactly mirrors what the author is trying to convey, right? Anything else? Which question? Flaw is what the author has missed. इसमें कोई flaw था? See, I have not picked a question इसमें flaw का and paradox. Why not? Not everything has a flaw and not everything has a paradox, right? इसमें कोई पैराडॉक्स नहीं, वो खुद ही कंफ्यूज है, तो क्या पैराडॉक्स निकाल दोगे आप? और फ्लॉ में वो कोई कंक्लूजन पे पहुंचा ही नहीं है, तो इसमें कोई फ्लॉ भी नहीं है. उसकी रीजनिंग, व्हेन इट्स एन ओपिनियन देयर इज नो फ्लॉ इन इट, राइट? और अगर क्वेश्चन बनाना ही है तो फ्लॉज में ये क्या ले सकते हैं? कैन एनीवन गिव एन आंसर कि इसमें फ्लॉ क्या था? व्हाई मेक साइंस एंड फिलॉसफी? इफ देयर टू स्ट्रीम्स डिफरेंट, तो कॉन्शियसनेस से सिर्फ फिलॉसफी से एक्सप्लेन करना, इट इज नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल, राइट? This passage as such is an opinion, and so you don't need to find the flaw in it, right? Anything else? Culp it out, classmate, right? So I leave you with your dream, and whichever you dream of, right? And hard work will take you to this dream and everything, right? Thank you. Let us welcome our most loving teacher who is solving your multiple doubts multiple times without any like कि मैं नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रही, with a big smile, our most lovable teacher, and that is कोई प्रॉब्लम आती है लास्ट रिजॉर्ट तो मैम ही होता है ना, तो मैम के लिए तो एक लास्ट और इतना जोर कि मतलब 2-3 आके फैक्ट्री वाले बाहर आ जाएंगे, क्या हो लड़ाई हो गई है. अनुपमा मैम क्लास लेते तो कैसे बोलते हैं? ठीक है, 3, 2, 1 गो. मैम आई जाओ. I hope you are sure that what is conclusion, what is premise, what is strengthening, what is weakening, right? And now you have some questions to solve as well. Okay, so you can start solving, but before that, and anyways, on kar dijiye. Okay, everyone. When I started with CR in our batch also, what I did was we started with small questions, and you are kind of aware of most of the basic understanding of concept. So we'll start with small questions whereby we'll first work on you being able to identify whether the given questions are part of ये sheet वैसे आपको दी नहीं गई है. This is not the sheet.
उसमें स्टैंडर्ड होता है वो आप सभी जानते हैं. कंपैरेटिव ऑल द वीक मैराथन वीक के सीआर कंपैरेटिवली इजी था. ठीक है, और वैसे सीआर की चिंता करने की जरूरत है. ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, पीआई में भी समझा चुकी हूँ. सीआर बेटा आपके बहुत बहुत आसान, बहुत कंपैरेटिव, जो आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, जो आप चीज सॉल्व करोगे उसके कंपेयर में बहुत अप्रोचेबल आएगा. सो यू आर नॉट सपोज्ड टू वरी अबाउट इट. राइट, सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कांसेप्ट. कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? इज इट विजिबल? इज इट रीडेबल? नो. ठीक है, नाउ I believe you can see, right? Yes, ma'am. हाँ, लाइट बंद करेंगे तो दिख जाएगा. फिर देखो सब अपने अपनी कीमती सवालों का ध्यान रखें. जिस मैंने सोचा नहीं था मुझे सेंटेंस बोलना पड़ेगा. अब इसमें assumption क्या हुआ? एक संदिग्ध जो है, संदिग्ध व्यक्ति होपफुली यहीं पे है. ठीक है. Now you all can see, right? What we are going to do with respect to this question is simply, or this exercise is simply to understand whether this is an argument or not. Because when we talk about what is an argument, we are supposed to have a certain premise which supports a certain premise supports what? Argument. Argument के अंदर premise होता है और उसके साथ साथ there is a conclusion. Basically in this exercise आपको ये identify करना है कि would it qualify as an argument or not? Is the author trying to give an opinion or not? In each of the questions, this is what we are going to do. Right? So yes, first question. Raise your hand. Okay, let me talk to ma'am and I'll get it shared in the groups. phone है ना? phone तो साथ ही रखते हैं मैम. phone की बिना जीवन ही नहीं है. Before they start school, all children need to acquire many skills. For example, speaking, dressing, washing, identifying colors. Parents should be perfectly capable of teaching these skills instead of spending money on nursery education. We should spend it on educating people to become good parents. Do you think that in this whole pool of sentences, there is a possibility of adding therefore, so, since, because, anything, anywhere? ये तो आपको पता ही है कि इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं फॉर द कंक्लूजन. ठीक है. Yes. Is it an argument or not? Does this sentence, does this example has any kind of conclusion, any kind of opinion on the part of author? If yes, what is it? Raise your hand. Yes. Yeah. Yes, okay, it has been uploaded. Please check your Telegram group for this particular sheet. Yes, Saumitra, can you repeat loud? Instead of spending money on nursery education, we should spend it on educating people to become. Right? The author is giving an opinion that parents को बजाय के वो नर्सरी में या प्री नर्सरी या ये चीजें पेरेंट्स बच्चों को करा रहे हैं, what they should be doing? They should rather be skilled enough to make sure that the children already possess these basic skills. देखो कोई भी जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं ना, आपको बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि टाइप ऑफ पैसेज क्या है. राइट, दिस इज अ गुड इंडिकेटर टू नो कि ऑथर का. बहुत बार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड इट इज डिस्कस्ड और इट इज सेड दैट मैम इसमें ऑथर ने कुछ बोला है कि नहीं बोला. ऑथर का ओपिनियन है क्या? इसमें तो सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है. You have to identify, is the author trying to give us a message or not? If yes, then that probably is the author's opinion, and if that is author's opinion, then that is going to be something which is part of conclusion. और conclusion है तभी तो हम अगर हम कुछ कह रहे हैं, हम कोई conclusion नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात करने नहीं चाह रहे. तो why would? आवाज आ रही है? ऐसे जबरदस्ती की नहीं बोलना है अपने को. जब हम कोई बात करना ही नहीं चाह रहे होंगे, तो in that case, how are we arguing? हमारी तरफ से, whenever CR question is there, whenever a passage is there, the argument must have a conclusion. Author must be trying to make a conclusion. समझ में आई बात? And in this sentence,
शीट देना तो बच्चों को सीट लगे मतलब एक सीट हो तो दो तुम मुझे दे Not? अरे ये तो फोन में मिल गई अरे बच्चे इसके उससे फोन में How many of you think yes, it's an argument? nothing How? Is it a conclusion? Is it an opinion by the author? Yes, anyone else? It is here. यहाँ पे author ने अपने part पे क्या conclusion दिया है? अपने part पे कोई opinion दिया है author ने? Author कह रहा है human beings learn more between birth and age of 5 than at any other time in their lives. This is not opinion. This is something which can be proven. Right? Plus, अगर ये opinion है, तो next sentence should be there to support it. So, what is the next sentence? 90% of 3 and 4-year-old receive some form of preschool education. So, they receive preschool education. But that is not necessarily the one statement which brings us to the first statement. And more than 50% of children aged under 5 attend. This is more like reporting. Factual understanding. एक data देना. है ना? यहाँ पे author data दे रहा है. Author therefore कहीं नहीं लगेगा यहाँ पे. Therefore, because. इसलिए because 90% 3 and 4-year-old receive some form of preschool education इसलिए. That doesn't make sense. भी आप तो birth से ही कह रहे हो ना, human beings learn between birth and the age of 5. School तो वो 3 and 4-year-old होने जा रहा है. So birth को कैसे justify करेगा? Birth से लेकर 5 years old तक. देखो conclusion अगर आप किसी को author का opinion मानते हो, तो बाकी जो statements हैं, they should relate to it. आपका examiner इन्हीं 3 sentences को increase it into a whole paragraph of 450 words. It's very much possible. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि until and unless हर line का किसी ना किसी there should be a common ground to which the whole passage relates. वो जो common ground है उसे हम conclusion कहते हैं. समझ में आई बात? क्योंकि ये छोटे sentences हैं, therefore because से काम चल जाएगा. लेकिन if you remember अभी हमारे last एक mock में there was question based on multiple theories on mental health. Right? Utilitarianism, stoic theory. Her theory was a sentence in itself. याद है question? Right? Anyways, coming back to the concept. देखिए conclusion जो हुआ. So let's go back to that example. Multiple theories है. Her theory could come down. वो एक ideal passage है. अगर मन से CLAT decide करता है कि हम question बनाएं, तो that kind of passage they should be given. Because it had reason 1, reason 2, reason 3, particularly precise list of reasons, and then the final conclusion. Therefore, हर तरह की psychological theory जो है, it has dealt with mental health. And it is important. यहाँ पे जो data है, जो second and third statement किसी भी form में first statement को justify करने के लिए नहीं है. birth से लेके 5 years तक वहाँ की knowledge के बारे में कुछ है ही नहीं. But no, second is itself a separate question. Okay, second itself is a separate question. It is not in line of first. Okay, each sentence in itself is to be identified as an argument or not. So third sentence, do you think that's an argument? Anyone who thinks yes? Why not? Yes.
पे तो कराओ, जोधपुर में तो करा लो। एक दो कमेंट जरूर ऐसे आ रहे थे, तो अब करो, करो मैराथन। समझ में आई बात? जैसे कभी मैं 1 hour शॉर्ट चल रही, तो why we are conducting the marathon? The conclusion is marathon is being conducted for the student, and the reasons are students asked for it. It was demanded by the student. It was commented on public platform. चलो आप अलग से आके बात करते तो मैं आपको कन्विंस भी करती थी बेटा थक जाओ, पर आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मांगा तो अब क्या कर सकते? I have to, right? आपने मांगा इसलिए आपको मैराथन मिली. So here what I am trying to do is, ये जो हम बात करते हैं बेटा, इसमें there are 2 arguments, one by your side, one by my side. आप जब CR के क्वेश्चन स्टेम पढ़ेंगे जो आज तक CLAT ने दिए हैं, स्पेशली पैटर्न चेंज के बाद, इस बार आप दिवाली की सफाई करा रहे हो कि नहीं करा रहे? I remember you told me in the last PI. Yes. So anyway, तो आप जिनको भी जानना है ऐसी बातें आपको नहीं बताई जाएगी, पर कोई बात नहीं, पॉइंट ये की बातें ना करें, स्पेशली अगर आपसे मैंने PI ले रखा है और मुझे आपके बारे में जी पता है. Okay. So what we are doing is, आप अगर जितनी भी स्टेम्स है बेटा वो पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा that examiner CLAT जो है, there are at least 100+ question stems which you are going to get, and in that you will see at least 50% are related to strengthening weakening. Strengthening weakening. Strengthen this, weaken this. So when you are arguing for something, when you are arguing against something, जो आप चाह रहे हैं, जो ऑथर चाह रहा है, जो फाइनली ऑथर कह रहा है, that is the conclusion, और उसके साथ में जो उसने प्रीमाइस दिए हैं, जो एविडेंसेस दिए हैं, they are the premises or evidences or supporting arguments. Clear everyone? Right? Now question number 4. Fourth question बताइए. Raise your hand. Yes. Jagrati. It's an argument how? Right. In the fourth question, when you read the sentence, you can see that millions of pounds of public money are spent defending riverside farmlands from flooding, and some of this money should be given to farmers to compensate them for taking such land out of production. This would save money, it would benefit the environment since if rivers were allowed. Which sentence is giving you conclusion? First, second, third, last, which one? Second sentence. तो बहुत बार कंक्लूजन के रिगार्डिंग क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, या तो लास्ट में दिया हुआ होगा या स्टार्टिंग में. ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें भी ऑथर चाहे तो बीच में कहीं डाल सकता है, तो आपके तो 101% ऐसा हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है. ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम्स में ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में या एंड में मिलेगा, वो एक अच्छा आइडियल पैराग्राफ है, पर हर पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता. Even the first and the third and the fourth sentences are supporting the second sentence. समझ में आई बात? तो it is not necessary that the conclusion or the main point would be given at the end of the passage or the starting of the passage. It can be in the middle also. Sure everyone clear? फटाफट 5th 6th question solve कर लीजिए. कर लिया जिन्होंने hand raise करके explain करिए 5th and 6th. स्मृति. Correct. In 5th question is not actually an argument because it is simply giving you facts. Sure everyone. देखिए किसी को नहीं समझ में आ रहा तो डरे नहीं, सवाल पूछ लो. राइट? आपसे वापस सवाल नहीं पूछा जाएगा. स्कूल वाली आदत नहीं, ये सवाल कैसे पूछ रहे मिलो तो ऑडिटोरियम के बाहर समझाते हैं, ऐसा नहीं. आप कैन आस्क क्वेश्चंस. नींद आ रही है तो अलग बात. 6th question. Yes. Or let's ask someone else. Yes. Is the last sentence giving you conclusion?
Mansi. Is it an opinion on the part of the author? Okay, let's take more opinions from someone else. हाँ जय, नींद आ रही है आपको? बताओ. फैक्ट होगा, ओपिनियन में नहीं आएगा. कंक्लूजन नहीं है इसमें ऑथर की तरफ से कुछ भी. Is there any author? Yes. Sorry, sixth question. This indicates considerable growth in the world eagle population. बेटा, is the author, is it reporting or author's opinion? That's where you have to draw an difference. ये आपको देखो बेटा, ये आइडेंटिफिकेशन पैसेज का पैटर्न या टाइप क्या है, ये आपको सिर्फ सीआर में नहीं आरसी में भी सपोर्ट करेगा. वैसे भी आरसी और सीआर है ना ओवरऑल ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ. बेटा आईपैड मिल गया तो अभी के अभी पार्टी करने की जरूरत थोड़ी है ना. पढ़ाई करो थोड़ी देर, कोशिश करो हो जाएगी. उधर जो लोग हैं ग्रुप बना के क्या बात करना चाह रहे हैं, इधर ध्यान दो, पढ़ाई करो. ठीक है, इतने पढ़े थोड़ी देर और पढ़ लो. राइट. सो ये जो सीआर और आरसी एनीवेज दे आर पार्ट और दे ओवरलैप. इसीलिए यू सी इन्फ्रेंस क्वेश्चन इन सीआर आल्सो, यू विल सी इन्फ्रेंस क्वेश्चन इन आरसी आल्सो एंड सीआर. So overall, if you are able to get the tone of the passage, you will be able to understand कि what is the conclusion if at all. समझ में आई बात? देखो दो तरह के क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के 50% क्वेश्चन है. एट द सेम टाइम एक बहुत ही कॉमन स्टेम है जो हर पैसेज में एग्जामिनर देता है. That is which of the following is like author, which of the following author is likely to agree with. And which of the following is true with respect to the passage? दोनों stems में difference क्या है? This is a good passage to understand the difference between these two steps. Which of the following is true with respect to passage? इसका मतलब they are asking कि जो evidences दिए हैं, जो data दिए हैं, जो evidences दिए हैं, उनके basis पे या passage में जो बात लिखी है वो है कि नहीं है. पर जब आपको author जब question कहता है for which of the following author is likely to agree with, वहां पे the question is of conclusion. फर्क समझ में आया? author likely to agree with, जहां पे author is likely to agree with, that's not necessarily there. ये डेटा है. समझ में आई बात? Yes, if no option is there, of course author is likely to agree with the given data also. तभी तो author ने रिपोर्ट लिखी है. But once you know कि ये conclusion इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में या पैसेज में कंक्लूजन है कि नहीं है, अगर आपको ये आइडेंटिफाई होता है तो आपको टोन्स के क्वेश्चंस में सपोर्ट मिलेगा. दैट विल हेल्प. दैट्स व्हाई जो शीट शेयर हुई उसमें टोन्स के भी क्वेश्चंस हैं. ओवरऑल व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई टोन, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू मार्क द क्वेश्चन ऑफ टोन्स, बट यू आर आल्सो गोइंग टू बी एबल टू मार्क द क्वेश्चन ऑफ कंक्लूजन, इन्फरेंस आल्सो, प्रोबेबली ट्रू, लाइकली ट्रू. Clear everyone? यहाँ पे बेटा this would come under ideally a mere data and a statement drawn from the data, not necessarily conclusion, because conclusion has to be on the basis of author's opinion. Whether this increase is good or bad, whether this is appreciable increase or not, whether this is worrisome increase or not, that is where the opinion would come. समझ में आई बात? Clear everyone? Yes. Kashish. This is bringing us down to a fact, still a fact. समझ में आई बात? जैसे for example, which of the following is the main point? Then yes, this is one of the point which we can draw. But जब हम conclusion की बात करते हैं ना, जो ideal definition है conclusion की, although आपको examiner ने directly conclusion के hardly आज तक में 4-5 क्वेश्चन पूछे assumption की तरह direct conclusion, they would rather ask you कि premise identify करो, they'll rather ask you कि इस argument passage के हिसाब से ये argument सही है या नहीं. That is going to be the focus with respect to the question. Clear? ठीक है? Conclusion ideally opinion होता है बेटा, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे. Clear? So next step.
Some companies find that these graduates require further training before embarking on a career in computing. In recent years, the demand for computer literate personnel has increased because more students are graduating in computing science than before. Can that be correct? Did you hear the sentence? In recent years, the demand for computer literate personnel has increased because more students are graduating in computing science than before. Would that be correct formation? कैसे यार? क्योंकि ज्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं इसलिए अपना डिमांड बढ़ गई. That cannot be true. ये चीज याद रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल आज किसका बर्थडे है? किसका? अमन का. अमन का आज बर्थडे है. अमन. Right? Aman is going to celebrate, give a party to everyone because it's his birthday today. Right? तो आप हॉस्टल में हो आप भी? हाँ. तो वही हॉस्टल. Right? तो पार्टीज मिलने वाली. लेकिन वाइस वर्सा. इसको वाइस वर्सा करिए. वाइस वर्सा would be सुबह का बैठा एंजॉय कर रहा है, पार्टी हो गई इसकी. कितनी बढ़िया पार्टी हुई है सिलसिले बच्चों वाली. अमन देखो आप पढ़ना चाह रहे हो पर ये बाकी सब जो नालायक आपको इरिटेट करके ना डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं इनसे आपको डीमोटिवेट होना नहीं है. ठीक है? So let's do it vice versa. Right? That Aman has his birthday today because he's going to give a party. Does that make sense? है ना? क्योंकि आपके पास जब दो ऑप्शन आते हैं ये because और therefore की ट्रिक क्यों यूज करनी है? जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं you are confused कि मैम would this be conclusion or would this other would be conclusion. आप जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए गए हैं, एविडेंसेस दिए गए हैं, उनमें से use that statement and उसके आगे therefore लगा के ऑप्शन पढ़िए. If it makes sense, then probably that is conclusion or that is something author is likely to agree with. If it does not, तो उल्टा फॉर्मेशन है. Clear everyone? Right? So as far as 7th is concerned, anyone else? Whether it is an argument or not, Sumit. आप खुद भी बातें नहीं करें, आसपास वाले कोई बात नहीं करने थे क्योंकि करेंगे तो फिर या तो आप फंसोगे या जिसका नाम मुझे पता है वो तो पक्का बचेगा. Yes, Sumit, 7th, 8th, 9th, 10th का फटाफट आंसर दे दो. Would you say 7th is an argument? Yes. So, someone said it is an argument. No? Anyone? आंसर देख के नहीं बताना. आंसर गलत भी हो सकता है. एक आध बार गलत लिखे हैं ताकि आप सिर्फ आंसर की देख के नहीं जवाब. Yes. Why not? Is there an opinion on the basis of which author is writing the whole passage? Yes. Because there is ideally no conclusion being drawn. Author अपने पार्ट पे कोई conclusion draw कर रहा है क्या? No. Clear? Right? Next 8. Yes. Swiksha. We would reduce road accidents by lowering speed limits and making greater efforts to ensure that such limits are enforced. But because this would cause inconvenience, the majority would drive safely. This would be an unacceptable solution to the problem of careless drivers who are unsafe at current speed limit. Can you identify the sentence or term which can be said that कि ये conclusion है और ये supporting facts है? क्या conclusion है author का? Yes. Yes, Mansi. Unacceptable.
So, in the very first sentence, you are getting the conclusion, right? Because उसके आगे सब कुछ will make sense, right? 9. Yes, Vartika. Why it is an argument? Which line there is in? Which one? What is the author's opinion? Which part of the paragraph the opinion is mentioned? But this is not clear, everyone. ठीक है, आप लोगों के पास register है? Okay, so write down. We are done with the exercise, but suddenly let's note down 3-4 points. कुछ नहीं तो लिखना पड़ेगा ऐसा. लिख रहे हैं? नोट्स बनाए सुबह से? Very good. In a passage with arguments, in a passage, write down quickly. In a passage with arguments and conclusion, following points are to be kept in mind. Conclusion would be an opinion of the author. Yes, for 6 it would be an argument. This indicates considerable goal. Look, Kashish. It is an argument. Correct. What did we write? Conclusion? Would be an opinion of the author. Would be an opinion of the author. For which evidences are provided. For which evidences are provided in the form of research, data, expert's opinion, etc. Second, do not judge the veracity or authenticity of the evidences given by the author. Next point, conclusion can be in the nature of fact. If conclusion can be in the nature of fact, if it is data driven. ठीक है, that is example point 6. ठीक है, भी अगर डेटा है तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी डेटा की या फैक्ट के फॉर्मेट में होगा. हमेशा वो जरूरी नहीं है पर होगा. राइट? इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास
क्लास में जब आई गेव यू एन एग्जांपल, देखो व्हाट आई मीन कि ऑथेंटिसिटी या वेरासिटी से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आर्गुमेंट सेंसिबल है कि नहीं है। When you are doing the passages, तब इसकी चिंता नहीं करनी है कि आर्गुमेंट सेंसिबल है कि नहीं है, राइट? ये हम कब चिंता करेंगे? When the question is of flaw. Flaw के जब questions होते हैं, find a fallacy और what can be even weakening question में flaw can be helpful. लेकिन फिर भी आप चाहे भक्त हैं चाहे चमचे हैं, ठीक है, आपको पैसेज के पैराग्राफ से इमोशनली अटैच नहीं होना। ऐसे कोई होता है क्या, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे लिख दिया, बेटा वो सोचोगे तो पैसेज अटेम्प्ट नहीं होगा। Clear everyone? You have to make sure, चाहे फैक्ट है चाहे ओपिनियन है, whether it is possible, let us say factually भी ऐसा एग्जांपल है जो पॉसिबल नहीं है, जो सेंसिबल नहीं है, और क्लैट ने ऐसे पैसेज दिए हैं जिसमें इवन लॉ, लीगल में भी लॉ ऐसा है जिसमें you may not agree with the law। जैसे पोक्सो से रिलेटेड लास्ट ईयर बहुत अच्छा पैसेज था। It talked about how minor below 18 people are targeted for consensual relationship because of पोक्सो law। अब हो सकता है अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो, you might not agree with that particular passage, but that should not affect your reasoning। आप उस वक्त ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे, आपके लिए वही कंक्लूजन होगा जो ऑथर का व्यू पॉइंट है, whether you personally agree with it or not। और उसके लिए हर वो प्रीमाइस, हर वो एविडेंस, हर वो रीजन और प्रीमाइस एविडेंस रीजनिंग को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है। यश, क्या तरीका है बताओ? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर क्लास में बात कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? बात कर रहे हैं तो मुंह तो हिलना होगा, या एक और भी आसान तरीका है, जरूरी आपका मुंह नहीं हिल रहा, लेकिन टीचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस फैक्ट को? हंस रहे हैं, खुश हैं, इतने खुश, अभी तक तो 8 घंटे से क्लास कर रहे हो, बड़ी खुशी नजर आ रही है, तो 5-6 घंटे की क्लास के बाद भी आप बहुत खुश हो और आपस में 4-5 लोग एक साथ खुश हो, पूरी रूम बहुत ही खुश चल रही है, तो बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके अलग आर्गुमेंट चल रहे हैं, अलग कंक्लूजन चल रहे हैं, ठीक है? जो भी लोग को या आसपास वाले डिस्टर्ब करते हैं ना, ठीक है, कि आप याद रखना ये आपके दुश्मन हैं, ये चाहते ही नहीं है कि आप सक्सीड हो, ये आपसे जलते हैं। Anyways, coming back to what we discussing, तो कोई भी कंक्लूजन है बेटा, उसमें हो सकता है कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करते हो, पर ऑलवेज जैसे whenever I'm reading the passage, what I am looking at or what you should be looking at is what is the purpose behind the passage। ऑथर ऐसा लिख क्यों रहा है? Once you identify that, you will be able to identify conclusion or main idea or main point, whichever is the question। Clear everyone, right? Okay, next write down parts of premises। Parts of premise, what all things are there in premise? एक तो हम पढ़ चुके हैं, conclusion is there, sorry, argument में evidences are there, other than the evidences what other thing is mentioned by the author in the passage? Opinion is there, but that becomes part of conclusion। देखो दो पार्ट्स होते हैं बेटा, although CLAT ऐसा सवाल नहीं पूछता है, but for CR because we are doing this, let us understand, ये एक तो होता है ऑथर जो बात बोलता है और जिससे कोई चीज डिराइव होती है, जैसे फॉर एग्जांपल you should not talk in the class, right? That is the opinion I have, that if you are attending the class, better not to talk in the class, ठीक है? अब why you should not talk in the class, इसका रीजन क्या है? What could be the possible reason? क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, सौरभ, ठीक है, ये हो सकता है ना, क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, और क्या रीजन हो सकता है? जैसे क्लास वाले सब कहें मैम हम अंडरस्टैंडिंग है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सौरभ बात करता रहे, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, then what other reason could be there? हो सकता है कि भाई आसपास वाले अंडरस्टैंडिंग हो,
मनस्वी, नहीं मनस्वी के आगे, सौरभ के आगे पायल। पायल जो है, बाई चांस आज पायल का पढ़ने का मन है, वैसे तो वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखती है, लेकिन लेटेस्ट है, आज पायल पढ़ना चाह रही है और उसी दिन सौरभ ने बातें की। So it can result into, the reason could be that those who want to study can get this specifically, even if everyone is understanding. Another more important reason could be decorum of the class. क्लास का डेकोरम गड़बड़ होता है, फिर एक जना बात करता है तो दूसरे को लगता है फिर मैं क्यों नहीं, जब वो भी बात करेगा इवेंचुअली एवरीवन फील कि क्लास में बात की जा सकती है। All these are the reasons. अब हो सकता है इन रीजन से आप अग्री करते हो या नहीं, किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि मेरे से ही मैम को प्रॉब्लम है ना, मैं तो रोज पढ़ाई करती हूँ, पता नहीं क्यों मैम मेरा एग्जांपल दे रही है पायल के, अगर मन में सोचेंगे तो किसी को लग सकता है कि यार मेरे से कोई प्रॉब्लम, जैसे कुछ मामलों में बच्चों को लगता है कि मैंने उस दिन मैम से सवाल पूछा इसलिए मैम मुझे ही पिन पॉइंट कर रही है, ऐसे कोई पिन पॉइंट नहीं करता, पर आपको मन में लग सकता है। तो आई मे नॉट अग्री विथ योर रीजन, बट इट इज स्टिल अ रीजन, इट मे नॉट बी अ लॉजिकल रीजन। जब हम फ्लॉ पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि फ्लॉड रीजन, लेकिन फिर भी ऑथर के लिए ये रीजन है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यू गाइस डू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सीआर क्वेश्चन है, when you look at the passage and the options, what you think is कि ये जो ऑप्शन है इसमें फ्लॉ फर्दर पॉसिबल है, there is a further flaw possible in the option. ऑप्शन फ्लॉड है, इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है ऐसा जरूरी नहीं है। Just because you can weaken the question option, that does not mean it's a wrong option. ऑथर के हिसाब से या पैसेज के हिसाब से वो रीजन हो सकता है। Of course every argument is flaw, हर आर्गुमेंट का फ्लॉ हो सकता है, राइट, तभी तो लॉयर्स बनते हैं ना। एवरी आर्गुमेंट का फ्लॉ नहीं होगा तो फिर लॉयर्स दोनों साइड के कैसे होंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज़ एन ऑप्शन कैन बी फर्दर वीकन्ड, दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन, नॉट अ वीकनिंग ऑप्शन, इट कैन नॉट बी अ रीजन, ऐसा नहीं मानना है, राइट। सो राइट डाउन इन अ प्रीमाइस there can be evidences, comma, background information, or basis of author's conclusion. Basis of author's conclusion. You had a question recently, beta, जिसमें कि there was an option which said it is part of, it is premise to the argument or it is evidence to the premise, which is a premise to the argument. Evidence for a sentence which is premise to the argument. Evidence वो होगा जो argument को बात क्यों नहीं करनी है, क्योंकि disturb होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ना चाहता है उसको आपने डिस्टर्ब किया उसका। अब फिर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल पायल आज पढ़ना चाह रही थी लेकिन आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसका पूरा मूड खराब हो गया, पढ़ने का मन ही नहीं उसका। तो जो पायल का एग्जांपल दिया वो क्या हुआ, एविडेंस। और जो पढ़ना चाहता है उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे, दैट इज द बेसिस, दैट इज द प्रीमाइस, जिसकी वजह से देयरफॉर यू शुड नॉट टॉक एंड डिस्टर्ब। 3 सेंटेंसेस हुए, एविडेंस की पायल डिस्टर्ब हुई, दिस इज द बेसिस फॉर द प्रीमाइस कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो उस दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड देयरफॉर यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास। ये स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज होता है। आप जब भी पैसेज में सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, यू शुड आइडेंटिफाई बेटा एवरी सेंटेंस। इनफैक्ट जनरली भी आपसे कोई बात करता है तो आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दिस कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, इतना क्यों बोल रहे हैं, राइट। इफ यू आर नॉट टॉकेटिव देन प्रोबेबली यू विल ऑलवेज वंडर अबाउट दिस। या आपके ग्रुप में कोई भी अगर टॉकेटिव पर्सन है, वो बोलना शुरू करता है और आप पहले सोचते हो पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट। What you are trying to understand is you are trying to come down to the conclusion. But अगले को ज्यादा विस्तार से बताने की आदत है, तो अगला पहले प्रस्तावना देगा, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, हुआ ये, लेकिन फिर ऐसे गए हम, फिर वहां से आए, है ना, एक तो है ना जो कुछ लोग बोलते हैं they use too much है ना, और फोन पे और बता,
All are part of the premise, but they do not necessarily help the conclusion better, है ना? Clear everyone? They are somewhere there. समझ में आई बात? Clear everyone? So in these questions, you have to identify the correct possible reason. Right? ऐसे तो sheet आपके पास है. I hope you have done questions already. नहीं करिए तो फटाफट question करिए first, second, first to 10. इनके पास नहीं है ना, आप पास वाले टॉप वाले बच्चे शेयर भी करते हैं. अगर चोरी ना हुआ वो सामान तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं क्वेश्चन. पैसेज वाली भेजी, ये वाली शीट भेजी नहीं तो आप कैसे देख लेते जाकर कि आपको फोन से देख के सॉल्व कर रहे हो ना. भेजिए भेजिए भाई, ढंग से देखो. अरे ये शीट नहीं है भाई, फोन में मैसेज वो ग्रुप में आ गया है, वो तो अलग शीट है. वो तो आपको एक्स्ट्रा शीट मिली है सॉल्व करके आनी है. उसकी आंसर की भी अपलोड हो जाएगी पोर्टल पे. फोन नहीं है, I'll forward it. Or otherwise you can see and start solving. But our first question. Let's set a timer. 10 question में कितना टाइम लेना चाहिए आपको? Hardly 3 minutes. Let's solve these questions in 3 minutes. I'll keep starting while the students को benchmark. Once you're done, just raise your hand. I'll move up. ऊपर सेकंड लास्ट बेंच. आपको मुझे फील हो रहा है कि आपको समाजवाद फील हो रहा है, पर वो नहीं बेटा. आपके पार्ट ऑफ द सेशन. सॉल्व द क्वेश्चंस. सेकंड लास्ट बेंच. बेंच तो क्या है? सीट्स. Can we move up?
Starting first. The first answer is C. And there's no because if it is expensive to administer, it's not a very. Yeah. Second, what is the answer? Second question's answer is B. Skills can easily be taught, but personalities are difficult to change. Everyone agrees? Yes. First is C. Second, B. Third, A. Fourth, A. Fifth, C. Sixth, B. Seventh, B. Eighth, B. Seventh is B for Bangalore. Eighth is B for Bangalore. Ninth, B. And 10th, C. Anyone agrees or thinks otherwise? Yes, Viksha. Fourth, why not B? Who will explain? Yes. Because you have to see the sentence. It says that installing insulation in your house may be economical. So we have to talk about something which results into saving. And that purpose is served when we talk about fuel is saved, right? Less fuel. That means less payment for the same. Right? Clear everyone? Easy questions? Very good. Let's move on to one more exercise and then we'll move on to the sheet which has been shared. Now, another important aspect before we discuss further questions. जो दो questions होते हैं या दो stems होती हैं जिनमें students को सबसे ज़्यादा confusion होता है, that is what is an assumption and inference. Although in other multiple classes I have talked about it, but I want to add one more point to multiple things I have taught you earlier. So write down, an assumption would be Smriti, that thing we discussed yesterday, that must necessarily be to inference में आएगा, okay? We were discussing that yesterday's round. I have to see the better. What did we write? Assumption? An assumption would be unstated argument or link between the conclusion and premise, or something which is taken for granted by the author. It is not something author is trying to convince you. ठीक है? Plus one more point जो पहले हमने क्लास में नहीं लिखा है, that is, it is something, thanks to Devang, for this particular point. It is not something. Sorry, what did we write? It is not something for which author is providing evidences. It is not something for which author is providing evidences. Whereas, ना बीच में सेंटर में whereas लिख के नीचे फिर inference लिखी. Whereas inference is something. Which author is trying to convince us, which is being convinced to us by the author, or
or it is to be read between the lines. Or to be understood. Even if unstated. जैसे for example everyone. जैसे for example स्पर्श सर यहाँ आगे बैठे हैं, right? और उनको मैंने कहा कि आप तो सीधा बैठो. So what can you infer out of it? The आप तो मतलब तो word has some meaning in it, right? It is something I want him to be convinced of. कि आप तो बच्चे तो स्टूडेंट को समझ में आता है ना? तो इन्फ्लुएंस क्या हुआ जहां पे आप अगले को कोई चीज कन्विंस करना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हो, आप स्पेसिफिकली कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो, बट यू वांट द अदर पर्सन टू गेट अ मैसेज. आई बिलीव स्टूडेंट कम्युनिटी एज सच इज वेरी गुड इन ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस. हाउ? आपने कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया, किसने लाइक किया, किसने सीन किया पर लाइक नहीं किया, कमेंट किया नहीं किया, कमेंट में कौन सी इमोजी यूज की, राइट? इफ यू टॉक इन इमोजीज यू नो इन्फ्लुएंस, राइट? व्हाट इज सपोज, लेकिन आपको अगर इमोजी में किसी ने जवाब दिया, व्हाट इज द assumption that person has? That you are capable of understanding that particular language, right? LOL अगर आपने पिताजी को भेजा, what is the assumption you are trying to draw? उनको LOL का मतलब पता होगा, और he is supposed to know that you are laughing out loud. That is the inference. Assumption क्या है? आप LOL लिख के उनको ये कन्विंस करना चाहते हो क्या कि देखो आपको ये भाषा आती है? No. Assumption ऐसी चीज है बेटा जो obviously for granted है. अगर आप किसी को इमोजी में लिख के मैसेज भेज रहे हो या आप इस तरह के शॉर्ट टर्म्स यूज कर रहे हो, the assumption is that the other person understands it. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, I gave in other class also, that when a teacher asks you a question, what is the assumption teacher has? बच्चों को क्या लगता है, मेरे को पूछ लिया, अब मुझे क्लास में खड़ा करेंगे, पूरी देर में क्लास के सामने सबके सामने इंसल्ट होगी. That's not the purpose. Rather the assumption. When a teacher asks you a question, what is the assumption? The teacher expects that you would know the answer. तो आपकी अपनी नजरों में थोड़ी इज्जत बढ़ जानी चाहिए. Right? The assumption is teacher thinks that you know the answer. So that is the assumption. Is the teacher trying to convince you that you know the answer? No. Assumption वो होता है बेटा जो टीचर आपको कन्विंस नहीं, ऑथर आपको कन्विंस नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वो सच है, उसका सच होना जरूरी है, otherwise the passage would fall. It is the basis for the whole passage. Whereas inference is something which the author wants you to be convinced of. जब author आपको कोई चीज से कन्विंस करना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर और inference जरूरी स्टेटमेंट के थ्रू होता है, एक्शंस में भी आप inference ड्रॉ करते हो. जैसे कभी वाला ये एग्जांपल हो गया कि आप क्लास में बैठे हो, राइट? और आप इधर से उधर मूव कर रहे हो या स्पर्श सर की तरह आप निडाल होके बैठे हो, तो व्हाट इज द इन्फरेंस व्हिच कैन बी ड्रॉन? एक ना फोटो खींच के यहाँ पे लगाओ ताकि बच्चे जानना चाह रहे हैं कि कैसे बैठे हैं सर ऐसा. तो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन कि भाई अगला पर्सन जो है बहुत थक गया है या उसने बहुत मेहनत करी है आज, राइट? Inference is based on what you want the other person. जरूरी नहीं कि he is trying to convince us that. Obviously he is not. But हो सकता है आपके एक्शन से read between the lines जो पार्ट होता है that is considered as inference. ठीक है? Whereas assumption क्या होगा इसमें? हाँ, फोटो खींच लिया अब आप इसको तो दिखा सकते. अब assumption क्या होगा? If I tell this to Spurge that
particular field. So lot of time what is stated or the argument which is made is that the boys have better opportunities as far as these particular fields are concerned, whereas girls don't. यहाँ पे argument लिया गया है that girls are trained, boys are get opportunity to train in these fields rather than girls. But the author says still even 3-year-old boys would be better than girls as far as target or motor skill based sports are concerned. So what is the assumption? देखो ऑथर ये मान के चल रहा है कि जो ट्रेनिंग करते हैं ये आर्गुमेंट लिया जाता है कि जो लोग ट्रेन करते हैं इसलिए लड़के बेटर होते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग ज्यादा मिलती है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। और ऑथर ने इसके लिए एग्जांपल दिया कि इवन 3 साल का बच्चा बेटर होगा। इसका मतलब अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि 3 साल के वक्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब हो सकता है दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि आपको जरूरत नहीं आप इस बात से कन्विंस हो के नहीं, बट इफ दिस सेंटेंस इज एडेड to the whole statement, will the whole statement or the whole paragraph become more authentic as far as the author is concerned? Yes. है ना कि 3 साल के बच्चे को तो कोई ट्रेन नहीं करवाता है टारगेट स्किल्स के लिए, मोटर स्किल्स के लिए, या जिन बच्चों को कंपेयर किया जा रहा है लेट अस से यहाँ पे रिसर्च होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इन द रिसर्च इट वाज shown that even a 3-year or below kids are better, boys are better in motor skill sports than girls. तो assumption क्या है? They were not trained already. क्योंकि author का argument है, premise है training के regarding. That has to be true. Clear everyone? समझ में आई बात? Yes बेटा. Yes, very good. जरूरी नहीं है देखो. This is one of the important part of your CLAT based. जब आप छोटे क्वेश्चन करते हो बेटा तो बहुत बार assumption limited होते हैं, बहुत बार inference limited होते हैं, बहुत बार arguments limited होते हैं, conclusion भी limited होता है। लेकिन जब हमारे पास CLAT based question आते हैं तो multiple premises होते हैं, multiple arguments होते हैं, multiple secondary conclusion होते हैं, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि assumption एक ही होगा या premise एक ही होगा या evidence या inference एक ही होगा। There can be more than one assumption. Right? I'll share 3-4 paragraphs along the other sheet. One more sheet I'll share. I already have it prepared. I thought that is too much of material to share today. In that, you have a big paragraph and then multiple. जो आप लोगों को बोला जाता है ना एक एक्सरसाइज जो आप लोगों को अभी करनी है या अगर करते हो तो अच्छी बात है कि जब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, लेंथी पैराग्राफ, उसके साथ-साथ सोचिए ऑथर कहना क्या चाह रहा है, उसके बेसिस क्या-क्या है, assumption क्या-क्या हो सकता है, inference क्या-क्या हो सकता है, साथ-साथ आपके थॉट आने चाहिए। जैसे आप लीगल का पैसेज पढ़ते हैं तो आई बिलीव आप आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं ये पहला लॉ हो गया, ये दूसरा लॉ हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया। आप जब पैसेज पढ़ते हो सीआर के लिए तब भी यू शुड हैव दिस हैबिट। व्हाट हैबिट? दैट व्हाइल यू आर रीडिंग यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ये एविडेंस है, ये इंफरेंस, इसमें से इंफरेंस डिराइव हो सकता है, ये कंक्लूजन और इसके बीच में लिंक करेगा। ये तो बात लिखी नहीं है पर होनी चाहिए, जो बात लिखी नहीं है पर होनी चाहिए या होती तो अच्छा रहता। That is your assumption. Is the author here trying to convince us that 3 years से below वालों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती? No. But if it is true, then it supports the whole argument author has prepared. This is assumption. इसी में inference बताइए। यहाँ पे one more point जो आप बाद में लिख भी सकते हैं, अभी लिख लो तो ठीक है। Paraphrased statements are good inferences. ना बहुत बार बच्चे कहते हैं मैम ये तो बात लिखी हुई है ना, बेटा पैराफ्रेज लिखा हुआ में नहीं आता, रीस्टेटमेंट अच्छा ऑप्शन नहीं है। पैराफ्रेज ऑप्शन आर स्टिल गुड ऑप्शंस फॉर assumption और inference। पैराफ्रेजिंग अलग चीज होगी, जैसे इसमें से inference क्या होगा? Some skills are inherently better or are there inherently in boys compared to girls. Isn't that author is trying to convince us? That's inference. Something which we can understand. Something which we know कि author हमें समझाना चाह रहा है. That is your inference. इसका inference क्या हो जाएगा? Yes, Kavish. Yes, very good. These are skills which can be objectively compared through data. ये ऐसी स्किल है जो टेस्ट की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल
कॉलेज मजाक करता है ना? युवा कॉन्टेक्स्ट, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर would match with right these kind of jokes related to which Kapil Sharma makes or others. I am not sure. ठीक है, unfortunately I guess. Clear? Yes, Sumit. What? You want to give an example? Or sense of humor matches with someone like Sumit's sense of humor? Maybe, right? So that is what you have to understand. जो inference होता है बेटा, जो author, so this is a good assumption कि ये comparable skills है. Sense of humor actually testable और comparable नहीं है. Right? Everyone has their idea of sense of humor. Right? When you are 7th, 8th class, sense of humor depends upon few words. Right? When you come to 11th, 12th, it's a different sense of humor. Probably then afterwards, आप सबका sense of humor भी अच्छा हो जाएगा. Like once you go to NLU, 101% it improves. Right? Anyway, second question बताइए assumption. Very good. Yes. Soumya. Yes. Very good. हाँ, बिलाल. भाई आप लोग भी बोल सकते हो. आवाज आनी चाहिए. Yes. एक मिनट. I'll come to you. Last third bench. The bench तो क्या bench की आदत पड़ी हुई है. Seats. बोलो. बेटा नाराज नहीं होना, iPad मिल गया तो. Yes. ये किसी और का नहीं ले जाएगा, चेक कर लेना. अगम आवाज नहीं आ रही. Yes. यहाँ पे assumption क्या है कि जिनको ऑप्शन दिया जाएगा they would indeed prefer box. समझ में आई बात? Clear? That seems like the obvious assumption. Any other assumption? हाँ, that could be there. That is inferred out of the first assumption. That could be there. Right? Clear? Third question. Third question का assumption बताइए. Yes. Again, prices. Look, the passage premises when people live in a house for a long period of time, they develop a strong commitment to the local neighborhood. So the continued fall in house prices may have a beneficial effect. The middle classes will become enthusiastic campaigners for better schools against vandalism. जो आपका assumption है कि अगर low prices रहती है तो लोगों का एक जगह पे टिकने के चांसेस ज्यादा है. Right? Any other assumption? Yes. But isn't that an inference? Yes, इसका inference बताइए तो फिर. So the continued fall in prices may have a beneficial effect. Therefore, the surroundings where there are better schools, that means the prices might not have risen. So wouldn't you say it's inference? That's my question. Isn't that author trying to convince us कि price जो है कम हुई तो surrounding में अच्छी society develop हो गई, क्या हो जाएगी? As a result, जहाँ पे successfully prices long term में कम रही, वहाँ पे surrounding अच्छी होगी. ये तो इसका result होगा ना? That won't be the basis, right? Yes. You can disagree and counter. That's the assumption when I'm talking back to you for that reason. Yes. That could be there. Or more, you will not buy new property that is not.
आपके इलेक्ट्रिक क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना, आप हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल अटैच करके रखिए. When you do that, you will remember those concepts in future also. If I say that all the chairs in this auditorium are either black or white, check नहीं करनी है. सबसे पहले तो authenticity of the claim is not to be checked. सब तरफ चारों तरफ की मैम ब्लैक ही दे रही है, व्हाइट कहाँ से हुई? If I make a statement that all the chairs in the auditorium are either black or white, which of the statement can follows from it, or can be the inference? All the chairs are black. Can that be an inference? Yes, it is. ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखिएगा. Some are black, some are white. Possible. But all are black or all are white. These are also valid, correct inferences out of this sentence. Why? Because I said in the auditorium, the chairs are either black or white. जैसे for example आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है. For a particular question, students are free to mark either A, B, C or D option. If we say that, then reasonably, is it possible that all the students marked A? Yes, ma'am. Yes, options are available, beta. अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या ये reasonably possible है कि सारे स्टूडेंट्स ने एक ही ऑप्शन मार्क किया हो? ऑप्शन अवेलेबल है ना, मार्क तो एक किया, either black or white. Students are free to choose from 4 options. Is it possible they all opted for one option? Yes. So all the students marked A, is that a possibility? Yes. Okay, this is a standard question with respect to inference. Right? जैसे for example, statement conclusion के लिए बर्थडे वाला एग्जांपल है, inference के लिए standard एग्जांपल है. Clear everyone? Right? Assumption के लिए standard example है. When someone asks you, the assumption is they think that you are capable of answering. Clear? So let's go back to the question related to this question. What can be the assumption? Question number 6. 4. Yes, still at 4. Yes. Imagine. Inherent defect नहीं, correct. That can be an assumption. Yes, answer. Reject. Yes, answer. Correct. That can be correct assumption. Yes. They can only access the same. Correct. Yes. जागृति. बाकी लोग का भी नाम मुझे याद आएगा तो मैं पूछूंगी, पर नाम नहीं भी आएगा तो भी जागृति, just a minute. Yes. Inherently there is no defect in it, right? That's what you mean, huh? That can be correct assumption. Yes. Allow? हाँ. Allow की वजह से तो अगला उठा ही नहीं. ये तो सबके साथ रोज ही होता है. Alarm can be a criteria. Yes. Who else? आप पीछे. The alarm system was accessible
पर जो बैठे बच्चे लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं क्या? नहीं मैम आप नीचे ध्यान दो, कोई बात नहीं, ठीक है। यस वापस बोलो। Was able to completely wipe out. Correct. Who else? Yes. Someone new. हाँ बेटा। तो रे पर जागृति बोलो। प्रगति, I am so sorry. जागृति। Would not get it again. Would not go to the doctor. ये कैसे निकाला? अच्छा, that honey doctor. Correct. Then who else? हाँ बेटा. So prevention. Yes, आगे continue. Yes. So there is only way to prevent it rather than cure. Everyone agrees to doubt इस question में? शीट पे easy questions ही हैं. Let's solve some strengthening weakening. इससे पहले short note पे लिख दीजिए for strengthening and weakening. Key thing to remember. When attempting strengthening weakening questions, do not eliminate an option. Do not eliminate an option. Just because it can be further weakened. In strengthening options, prefer options in the following series. Which is the best strengthening option? Can anyone tell me? Assumption, है ना? Assumption is the best strengthening option. अगर आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑप्शंस आते हैं, बहुत बार आप कहोगे कि मैम ये तो assumption है ना. बेटा assumption is the base for the passage. It is taken for granted. उसके सच होने से, especially necessary assumption जिसे कहते हैं, अगर वो सच है तो पूरा ऑथर का आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग हो जाएगा. So preference में if you have assumption and normal argument, preference should be given to the assumption. So first assumption, second any new fact in the form of research, supporting the argument
And next, lastly, any option paraphrasing the whole argument. ये least preferred option होता है. ठीक है, अभी I'll explain all of these four options as well. Next, write down in weakening option this should be the preference. In weakening option. Negating assumptions. Second, finding flaw in the argument. Third, negating evidence or premise. Negating evidence or premise with another research. And lastly, simply opposing the given statement in the passage. Okay everyone, so let's understand the options and how to choose them. देखो उसके लिए सबसे पहले आपको CR में जब भी क्वेश्चन आता है तो there are two types of questions you have to remember. एक क्वेश्चन होता है बेटा जिसमें कि you have to see the stem जहाँ पे कि passage की line based question. जैसे passage में से एक sentence उठाया और उसमें से एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें आप passage के बारे में भूल जाओ, फिर तो आपको वही ऑप्शन प्रेफर करना है जो सेंटेंस से रिलेटेड है. ठीक है, ये दो तरह के स्टेम होते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है. एक ऐसी स्टेम होती है जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ पूरा पैसेज साइड, जैसे आप कई बार देखोगे व्हेन यू गो टू सीआर फैकल्टी फॉर डाउट्स एंड देन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैम आपने पैसेज तो पढ़ा ही नहीं, आंसर कैसे निकाला. तो यू हैव टू सी दैट वो जो क्वेश्चन है वो एक स्टेम बेस्ड ही है, वो पूरे पैसेज से रिलेटेड ही नहीं है. उसमें सिर्फ उस सेंटेंस के बारे में ही क्वेश्चन है, चाहे इंफरेंस का है, चाहे असम्पशन का है, चाहे स्ट्रेंथनिंग का, चाहे वीकनिंग है. You have to keep in mind कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, स्टेप का टाइप कौन सा है. Is the step related to a sentence और सेकंड टाइप क्या होगा, पैसेज. पैसेज की इंफरेंस, पैसेज का assumption, पैसेज से रिलेटेड जनरल स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग पूछा है. Will strengthen the argument in the passage. अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास तो सीआर में मल्टीपल आर्गुमेंट्स देता है ऑथर, तो फिर तो कोई भी आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, जरूरी मेन आर्गुमेंट हो, कुछ को भी स्ट्रेंथन करेगा वो वैलिड ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन हो जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर बेटा व्हेन यू आर मार्किंग सीआर ऑप्शंस द एग्जामिनर स्टार्ट्स विद द इंस्ट्रक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीआर का जब पेपर शुरू होता है वहीं पे आ जाता है, दैट इज मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. सीआर में, आरसी में, लीगल में देयर आर नो करेक्ट आंसर. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क द एप्रोप्रिएट आंसर. So do not go on to look for the best option or rather correct option. You will not have correct answers. You have to choose the best given option. और best given option choose करने के लिए go back to stem. Stem देखिए, stem passage से related है या sentence से related. Once you identify that, तो sentence से related है तो जितना name, जितना छोटा, जितना precise option होगा वो better होगा. अगर वो नहीं है तो passage वाला option mark कर सकते. पर प्रेफरेंस जो सेंटेंस है उसके उस कॉन्टेक्स्ट को देना है, राइट. लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है तो यू शुड प्रेफर द ऑप्शन व्हिच इज मोर ब्रॉडर और रिलेट्स टू एनी पार्ट ऑफ द पैसेज. क्लियर. उसी के साथ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन, देखो सबसे जो पूरा, अगर आप, आई डोंट हैव अ बोर्ड हियर बट यूजुअली जो आप सीआर के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हो बेटा तो सबसे नीचे होता है assumption. Assumption is the basis.
पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्टली आपके assumption को स्ट्रेंथन करता है या assumption को वीकन करता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन, या खुद assumption है तो वो बेस्ट ऑप्शन। It has to be true. If it is true, then it makes sense कि author ने पूरी चीज क्यों लिखी। Right? If I remember, there was this passage related to, or let's go back to this whole thing that where I asked questions कि आप तो वहां से हम assumption निकालते हैं कि he is supposed to be holding a position whereby he is not supposed to do this. That has to be true. Otherwise, मेरे तो word का क्या मतलब? You are trying to emphasize something. It has to be true. तो जो best strengthening option होगा, that would strengthen the assumption. Second preference किस तरह के assumption के question, किस तरह के strengthening option को देते हैं? Which is part of your conclusion as well as premise. जो overall passage को सब overall, individual part नहीं, individual part हमने इसीलिए third और fourth में डाला है। Overall passage को अगर कोई support करता है या overall passage को कुछ weaken करता है, तो वो second best option, assumption के बाद। इसीलिए बहुत बार assumption के कुछ strengthening के ऐसे question होते हैं जिसमें assumption दिया है जो totally आपको लगता है ये तो argument से कैसे related है, argument की language तो ये है, जो लोग match the following से question solve करते हैं। Still it is good because assumption is preferred, second argument के support का। And third preference हम किस option को देंगे? One which is supporting the evidence। अब यहाँ पे problem क्या आती है कि मैम examiner ने तो लिखा है कि प्रियल आज पढ़ाई कर रही है और आप कह रहे हो कि नहीं प्रियल पढ़ाई नहीं कर रही है, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा सेंटेंस नहीं देता एग्जामिनर कि प्रियल आज नहीं कर रही। सौरभ जो कि प्रियल के पीछे बैठा है वो कह रहा है कि मैम वो फोन देख रही है इसलिए इसका मतलब वो नहीं पढ़ाई कर रही। तो उसको नहीं पढ़ाई कर रही है वो एग्जामिनर ने एक रिसर्च के साथ, एक डेटा के साथ, एक एग्जांपल के साथ प्रूव किया है। तो एग्जामिनर क्या करेगा? ऑप्शन में आपको एक और दूसरा रिसर्च देगा। There is research which shows that she is not studying. There is research which shows otherwise. There is research which shows that not necessarily people from the office are supposed to sit in a certain way. समझ में आई बात? तो strengthening weakening में आप negate कर रहे हो। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये तो आपने premise को negate कर दिया ना। ये आपने एक नई रिसर्च दी है जिससे कि आप दूसरा आर्गुमेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो नेगेटिंग वो नेगेशन में नहीं आता है, वो रिसर्च की वजह से वैलिड ऑप्शन है। राइट? उसमें पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? जो एविडेंस को नेगेट करता है थ्रू डिफरेंट रिसर्च और डेटा और सम काइंड ऑफ एविडेंस। यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए कि एक ऐसा ऑप्शन पहले आया हुआ है, एनेक्डोट्स जो होते हैं कोई अच्छे, वो रिसर्च नहीं। एनेक्डोट इज कहा सुना, दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ, दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट टू सपोर्ट रिसर्च। एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकता है, कोई अथॉरिटी ने कुछ कहा वो हो सकता है। क्लियर एवरीवन? और वीकनिंग में भी सेम क्रोनोलॉजी फॉलो होगी। असम्पशन को वीकन करता है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर और कंप्लीट पैसेज को वीकन करता है, अच्छा ऑप्शन है। एंड देन उसके बाद एविडेंस को वीकन करता है, अच्छा ऑप्शन है। लास्टली द कंक्लूजन का। समझ में आई बात को? लीस्ट सबसे कम प्रेफर्ड ऑप्शन, लेकिन वो नेगेट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर ऑप्शन दिया जाए तो पेरेंट्स वुड प्रेफर बॉयज, राइट, इन द लास्ट पैसेज, राइट। अब वहां पे अगर कुछ और नहीं बचा और फाइनली आपके पास ऑप्शन आता है कि देयर इज स्टडी और रिसर्च व्हिच शोज दैट पीपल माइट चूज गर्ल्स आल्सो, ठीक है ना, बाकी सबके कंपेयर में तो ये ठीक ही है। इसलिए उसको आउटराइटली नेगेट नहीं करना है। आउटराइटली नेगेट उसी ऑप्शन को करना है जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली, when we were talking about sense of humor, समझ में आई बात? वो कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल नहीं, कॉन्टेक्स्ट पे रहते हुए अगर ऑप्शन है तो वो स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग का आंसर हो सकता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रही है बात? ठीक है, राइट। एक और पॉइंट है, वैसे तो फ्लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चन क्लैट नहीं पूछता है, पर वीकनिंग के ऑप्शंस में अगर फ्लॉ का क्वेश्चन आता है तो दैट इज आल्सो गुड, राइट। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, राइट। 2-3 क्वेश्चन तो कर लो, हिम्मत है। देखो एग्जाम में नहीं हिम्मत कोई बात नहीं, देखो सुनो, एग्जाम में भी आपके साथ होगा। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो अगर आपने आरसी सॉल्व किया, फिर लीगल सॉल्व किया, फिर सीआर सॉल्व करने बैठोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कई बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मैडम रीड करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हो। बेटा फोन रीड करते करते तो एग्जॉस्ट नहीं होते, तो
श्योर? क्या बोलने की हिम्मत नहीं है? मैं इतना थक गई कि मुझसे आवाज नहीं निकल रही है. Yes. Why not see? How is he strengthening? आप बोलते बोलते फंस गए. Anyone else who can tell me why not see? Yes. देखो वीकनिंग से रिलेटेड बेटा वन मोर पॉइंट. अगर आपको किसी भी केस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि X is able to answer a question because the person knows the concept, या मैंने कहा कि Kashish came first because she is studious. If you want to weaken this, one of the argument could be no ma'am, she actually cheated. If this is true, अब ये अलग बात है. अब आप कहोगे मैम जरूरी थोड़ी उसने चीटिंग की हो, ये कैसे पता चलेगा उसने चीटिंग करी? तो बेटा ये मैंने पहले भी आपको बताया, सिंपली बिकॉज उस ऑप्शन की फर्दर वीकनिंग हो सकती है, इसलिए उस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना है. आप ये देखो कि अगर वो ऑप्शन सच है, इसीलिए स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के ज्यादा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आता है? इफ ट्रू. आप मान के चलिए कि वो सच है ऑप्शन. If it is true that we give an alternate, this is a standard weakening option जहाँ पे कि if you give an alternate remedy or rather alternate reason for the final conclusion, it is a valid weakening option. समझ में आई बात? Clear everyone? ठीक है? Right? देखिए ये शीट वैसे शेयर हो जाएगी, इसमें तो ऑलरेडी आंसर की है, जो आपको शीट मिली है उसकी आंसर की would be uploaded separately. Right? So we'll not discuss any more questions. I'll just summarily tell you certain things to keep in mind when you are working for your CLAT paper. ठीक है? वो तो सुनने की हिम्मत है? पक्का? एग्जाम में भी जब एग्जॉस्ट हो जाए तो क्या करना है? नोटबुक बंद करनी है और लंबी सांस लेनी है. 2-3 बार, एक बार बंद नहीं कर देना. राइट? 2-3 बार लंबी सांस लेनी है और उसके बाद पानी पीना है. राइट? आसपास देखना है सब कुछ. राइट? किसी का बर्थडे है तो उसको हैप्पी बर्थडे विश करना है. किसी का आईपैड मिल गया है तो वो कांग्रेचुलेट करना है. खुद का सामान देख लेना है. इसमें बेटा आई एम नॉट जोकिंग, ओके, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर पेपर आल्सो, at times when you, especially in CR, when you feel that you are exhausted, when you feel that अब आगे नहीं पढ़ा जा रहा या पढ़ते पढ़ते हमको कोई दिक्कत हो गई, what you should do is take a break of a minute. Why you should take a break of a minute? Because then you are rebooting your brain. क्योंकि आप पढ़ते रहे तो आपके 20-25-30 मिनट ऐसे टाइम वेस्ट होगा, आप पैसेज बार-बार पढ़ोगे, ऑप्शन बार-बार पढ़ोगे. इससे अच्छा क्या होगा? या आप 1 मिनट का ब्रेक लो, रिबूट करो, 2 मिनट ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम ने 1 मिनट का है तो एग्जैक्ट 1 मिनट, लेकिन then start paper again, especially in CR. CR करते वक्त CLAT में क्योंकि लेंथी पैसेजेस होते हैं और अभी तक तो आपके जो मॉक आ रहे हैं उसमें फिर भी थोड़ा छोटे ही पैसेज बेटा 300-350 वर्ड्स के ही हैं. 450 के आप आएंगे. ठीक है? कभी-कभी बीच में देते रहेंगे. तो ऐसा होगा कि आप पैसेज रीड करोगे तो एग्जॉस्ट फील करोगे. उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है. What you should do is acknowledge the fact कि आप पढ़ते-पढ़ते थक गए. जैसे आप यहाँ पे बैठे-बैठे acknowledge करते ना कि आप थक गए. तो एग्जाम में भी acknowledge करो अपनी प्रॉब्लम और ब्रेक लो. That is one way. Another way to deal with the issue is, especially जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने CR शुरू किया है तो एंड तक CR ही करना है, फिर दूसरा कोई सेक्शन करना है. अगर आप पैसेज पढ़ते-पढ़ते सेक्शन करते-करते डिसअपॉइंट हो गए हो, थक गए हो, तो आप बीच में वो सेक्शन छोड़ के दूसरा सेक्शन शुरू कर सकते हो और करना चाहिए. स्विच टू अनदर सेक्शन. बस आपको ये चीज याद
लिया है तो 2-3 पन्ने भरे, चाहे ज्यादा लिख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. It's okay to accept कि नहीं समझ में आ रहा है, बाद में लिखिए. Genuinely भी, if you go back and see all the sections, you will realize out of 120 there are 80 questions which you can easily attempt. 82 तो CRRC legal मिला के ही हो गए. Only thing required, one of the key essentials which is required to do good in CLAT, especially in CRRC and legal, is having a calm sense of mind. जैसे ये अभी मजे कर रहे हैं अलग, इतना calm sense of mind होना चाहिए कि पता है कि मैम पिन पॉइंट कर देगी, फिर सब लोग देखेंगे तो भी हमको किसी का डर नहीं है. स्वर सर अभी भी ऐसे ही बैठे हैं. इस तरह का काम माइंड होना चाहिए. भी हमने जो तय कर लिया कि हमको बेस्ट पॉसिबल 80 क्वेश्चन ढूंढने हैं तो वो ढूंढने. इट्स अ गेम, स्पेशली दोज हु प्ले गेम, है ना, ऑनलाइन गेम. इसका मतलब इन्फ्रेंस ये नहीं है कि जाके ठीक है मैम आई वांट बट आई स्टार्ट नाउ. गेम नहीं खेलना बेटा. मुद्दा ये है कि आउट ऑफ दोज 120 क्वेश्चंस यू हैव टू सेलेक्ट टॉप 80 क्वेश्चंस. जो सबसे आसान है, जो सबसे मीडियम है. टफ क्वेश्चन करने के स्पेशल मार्क्स नहीं है. क्लियर एवरीवन? टफ क्वेश्चन करने के स्पेशल मार्क्स नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लिकेट. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं. आप जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि सीआर टिपिकली आसान आएगा, बट बाय चांस, इसलिए आपके इनफैक्ट 101% क्लैट के सीआर में won't be a surprise if many of you score 24 out of 24. Every year student do it. That is the level of CR you get. यही basic topic जो हमने करे, basic assumption, inference, strengthening, weakening, likely to be true, ऐसे ही सवाल आते हैं और बहुत basic सी STEM आती है. But you have to believe that. लेकिन फिर भी एक आधा tricky passage आ गया, एक आधा tough passage आ गया, क्योंकि आपने शुरुआत ही CR से करी. नाम आपने कहा था बहुत आसान आएगा, छोटे से वापस आ जाएंगे, बस मैंने इससे शुरुआत करी. और पहला मैसेज आ गया फिलॉसफी. फिलॉसफी में भी डेफिनेशन ऑफ मी. व्हाट इज मी एंड व्हाट इज आई. आई इज नॉट मी. अब यहां से शुरुआत हो गई, तो बेटा उसको एक्सेप्ट करो, उसको आगे मत पढ़ो. आपको सेंटेंस देख के समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है. लीव द क्वेश्चन देन एंड देयर, मूव ऑन टू अनदर सेक्शन. कम बैक टू दैट सेक्शन लेटर व्हेन यू आर इन बेटर माइंड फ्रेम. सीआर को अटेम्प्ट करते वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंड जो है बहुत ही कूल काम स्टेट में होना चाहिए. यस लक्ष्य. तो उसको छोड़ो ना भाई. ऐसे मैंने क्या कहा, लास्ट में ट्राई कर सकते हैं. जब आप सब देखो प्रॉब्लम क्या है, टफ क्वेश्चन को करने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गलत होगा. टफ क्वेश्चन को करने की प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उसमें फंस गए तो आगे वाले आसान सवाल, आसान पैसेज भी गड़बड़ करोगे. राइट? तो नहीं आता है तो एक बार भी छोड़ दो, एंड में जाके देखो. छोड़ना है ऐसे कुछ नहीं. 80 सवाल जो काम के मिल गए ना, 80-85 मिला है तो मैंगोर चले जाए. समझ में आई बात? नहीं समझ गया. और 100 लिया है तो फिर आपके इंटरव्यू देखेंगे सब लोग. और जो मॉक में 116 और 20 ला रहे हैं, बेटा सुधर जाओ, थोड़ी कम सीखो, थोड़ी सी. जो ऑनलाइन में 100 दूसरों को कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, बच्चों की मर्जी नहीं चलती, बाकी वो 125 लेके आते हैं. तो समझे आप? देखो ये चीज है ना कि मैम क्या पता ऐसे 3-4 मैसेज आ जाए, पूरा सेक्शन टफ आ जाए. ना देखो क्लैट वालों ने कसम नहीं खाई है कि तुमको रुलाना है. बच्चे वहां से जाके लटके नहीं तो हमारा नाम क्लैट कंसोर्शियम नहीं. ऐसा अपना इंटेंशन है. अच्छी बात क्या है बेटा, खुद बैठ के पेपर बनाते हैं, तो जो खुद बैठ के दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ी देर लगा पड़ता है. तो होता क्या है, इफेक्ट आप खुद कोई पैसेज उठा के उसका कंक्लूजन, इन्फरेंस, असम्पशन लिखना शुरू करो. राइट? 4 पैसेज के बाद आपको लगेगा नहीं मैम समझ में आ गया, आता है समझ. रोज कौन लिखे, वो तो कई और कर रहे हैं. तो इसलिए यूजुअली, plus on a serious note, if you see past year paper, if you see sample paper, as far as CR is concerned, they give you very, the passage could be tricky. इसीलिए मैंने आप लोगों को PI में भी बोला है,
And as a reminder, I can tell you, read 1 hour separately. 1 घंटा रीडिंग को दो. क्या रीड करना है? एक दिन 1 घंटा फिलोसफी के डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, 1 घंटा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 1 घंटा साइंस से रिलेटेड. कोई भी टॉपिक, क्लाइमेट चेंज पे वो पैसेज देते ही देते हैं. इफ यू सी लास्ट ईयर्स पेपर, मास्टर्स पेपर, इकोनॉमिक्स में एक पैसेज सीआर में जरूर आएगा. लॉ से रिलेटेड 1 या 2 पैसेज जरूर आएंगे. हो गए 4-5 पैसेज.